starting with the repeat revision of advanced accounts. This is in your group 2, paper 5, remember. In all, 9 practical chapters over here, plus you have your AS in this part. So advanced accounts over here for 100 marks over here. 20 marks is your AS, 80 marks will be the practical questions. 9 chapters in all which we are going to revise rapidly today. First chapter that we are going to revise is internal reconstruction. Internal reconstruction. Now, what is internal reconstruction? Internal reconstruction is basically you are changing the financial statements of a company without closing down the company. Company will not close down. It will continue as a going concern, but its financial figures will change when consultation with all the stakeholders, remember. सबके साथ मीटिंग किया जाता है फिगर्स चेंज करने के लिए. परमिशन लिया जाएगा ऑफ ऑल द वेरियस स्टेक होल्डर्स. Internal reconstruction always takes place only of a loss making organization. Profit making organizations will never go in for an internal reconstruction, remember. It's always a loss making organization. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? वेरियस स्टेक होल्डर्स रिड्यूस देयर स्टेक, वो सैक्रिफाइस करते हैं, कुर्बानी देते हैं. दिस इज अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी विच विल बी यूटिलाइज्ड to write off your accumulated losses, remember. So internal reconstruction always of loss making company, never of a profit making company. Let's try and understand this with a simple example. I'll prepare a balance sheet, but horizontal balance sheet I'm preparing just for explanation purpose, remember. So they give you a balance sheet of a particular company. 31st March 22. सबसे पहले equity share capital, shares are of rupees 10 each. Let's say the share capital was 10 CR. You also have over here 12% preference share capital of 100 each. Let's say it is 5 CR. You also have over here securities premium. Let's say it was 1 CR. Then you will be having over here 15% debentures. Let's say the 15% debentures was 8 CR. You have a bank loan over here. Let's say the bank loan was 6 CR. And you will be having your creditors. Let's say it was 5 CR. Add कीजिए 15, 16, 24, 30, 35 CR है ना. बैलेंस शीट है तो टैली होना चाहिए. 35 CR. On the other side, let's say आपको यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है 1 CR. प्लांट एंड मशीनरी 5 CR. Investments 3 CR. Stock
5 CR. Debtors, let's say it was 8 CR. Cash or bank, 1 CR. And you have P&L over here. 6, 9, 14, 22, 23, 35. असेट साइड पे P&L है 12 करोड़ रुपए का. It represents a debit balance. It represents accumulated losses. This company is on the verge of collapsing because it has a huge accumulated loss. Now, the board of directors, the management, everyone, all the stakeholders, shareholders, debenture holders, creditors, सब मिलके decide करते let us revive this company. इस company में जान डाल देते हैं. ये जो ह्यूज लॉस है इसको राइट ऑफ कर देते, इसको बैलेंस शीट से निकाल देते हैं. सो ओवर हियर मीटिंग इज कंडक्टेड विद ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर. रिमेंबर, लॉस को अगर राइट ऑफ करना है तो सामने प्रॉफिट होगा, तभी तो लॉस को राइट ऑफ करोगे ना. So if you see on the liability side, you have securities premium of 1 CR. So what the management, the shareholders, everybody decide कि जो 1 करोड़ का CR है ना, securities premium, let us utilize this to write off your profit and loss debit balance. Which means in future, this will become 0. तो ये जो 12 करोड़ का था, that will become 11 crores ना now. 1 करोड़ का लॉस कम हो गया. इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग किया. इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते चलो ठीक है, हमारे 10 करोड़ में से हम 6 करोड़ सैक्रिफाइस करते हैं, हमको 6 करोड़ नहीं चाहिए. गिव अस 6 करोड़ रुपीस लेस, चलेगा, हमको नहीं पैसा मिला तो. विच मीन्स दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस 6 करोड़. मतलब उनको कितना पैसा चाहिए फ्यूचर में? सिर्फ 4 करोड़ रुपया चाहिए. अगर उनको 6 करोड़ कम पे करना है तो थिंक फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. कंपनी हैज टू पे लेस मनी टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. कंपनी को 6 करोड़ का प्रॉफिट हो गया. रिमेंबर, दैट प्रॉफिट इज यूज्ड टू राइट ऑफ द लॉस. तो अब आपका लॉस कितना बचेगा? 5 करोड़ का लॉस बचेगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग किया. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस बट ओनली 1 करोड़. हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह 6 करोड़ का सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, हम सैक्रिफाइस करेंगे सिर्फ 1 करोड़ का. कंपनी कहते चलेगा. उन्होंने 1 करोड़ का सैक्रिफाइस किया. व्हाट आर दे सेइंग? हमको 1 करोड़ रुपया कम देना. Which means the company has to pay them only 4 crore rupees ना. तो ये लॉस हो गया अब 4 करोड़ रुपए का. डिबेंचर होल्डर्स के साथ मीटिंग किया. उन्होंने भी बोला हम सिर्फ 1 करोड़ का सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, हम ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, चलेगा, नो इश्यूज. तो उन्होंने 1 करोड़ का सैक्रिफाइस किया, मतलब उनको सिर्फ 7 करोड़ फ्यूचर में देना है. अगर उनको 1 करोड़ रुपया कम देना है तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया, और ये प्रॉफिट कंपनी यूज करेगी टू राइट ऑफ द लॉसेस. अब लॉस कितना बचेगा? सिर्फ 3 करोड़ का बचेगा ना. बैंकर्स के साथ मीटिंग किया. बैंकर्स बोलते हैं हम कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे. जरूरी नहीं everyone is going to sacrifice. Banker says we will not sacrifice anything. That means this will remain at 6 CR. Creditors कहते हैं yes we are ready to sacrifice 2 crore rupees. Remember, creditors are the most vulnerable part. Unsecured होते हैं. अगर कंपनी डूबती है तो उनके पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं. बैंक लोन इज नॉर्मली सिक्योर्ड. कोई एसेट उनको सिक्योरिटी में दिया था तो बैंक को डर कम है, कंपनी बंद हो रही है, होने दो, हमको हमारे पास सिक्योरिटी है, हम वो सिक्योरिटी बेचेंगे और हमको पैसा मिल जाएगा. बट क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड, पैसे डूबने के चांसेस पूरे हैं. सो व्हाट द क्रेडिटर्स सेज, एक काम कीजिए, हम 2 करोड़ का सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है. जस्ट गिव अस 3 करोड़. लॉस हो गया अभी सिर्फ 1 करोड़ का. देखो 12 करोड़ का लॉस था, 1 करोड़ पे आ गया. 11 करोड़ सैक्रिफाइस किया वेरियस स्टेक होल्डर्स ने. नाउ व्हाट हैपेंस इज इन्वेस्टमेंट्स. किसमें इन्वेस्टमेंट्स किया था? शेयर्स में. शेयर्स डूब गए, इन्वेस्टमेंट्स डूब रहे. इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू फाइंड आउट किया तो सिर्फ 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स है. अभी
बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा? सिर्फ 1 करोड़, मतलब 2 करोड़ का लॉस होने वाला है ना, विच मीन्स आपका पीएनएल बैलेंस अब बढ़ जाएगा, 3 करोड़ हो गया। होने दो, पूरा बैलेंस शीट रिवैम्प करने का। स्टॉक कितने का था? 5 करोड़ का स्टॉक था। उसमें से पता चलेगा कि कुछ डैमेज आइटम्स है, कुछ ऑब्सोलेट आइटम है, बेचने जाओगे तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा। 5 करोड़ में से आपको मिलने वाला है सिर्फ 2 करोड़ रुपया, मतलब 3 करोड़ का लॉस हो गया ना, ये 6 करोड़ रुपया हो जाएगा। डेटर्स है 8 करोड़, उसमें से 2 करोड़ का डेटर तो बैंकरप्ट हो गया, बैड डेट्स, एक पैसा भी उससे नहीं मिलेगा, तो डेटर से कितना पैसा आने वाला है? सिर्फ 6 करोड़, मतलब ये लॉस हो गया अभी 8 करोड़ रुपए का। कैप्शा बैंक, ये तो सेम रहेगा ना, इसमें कभी लॉस नहीं हो सकता है। अब आपका लॉस कितना दिख रहा है? 8 करोड़ का। और कौन कौन से असेट्स है? प्लांट एंड मशीनरी, बेचने जाओगे तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 करोड़ रुपया मिलेगा, मतलब यहां पे कितना हो गया? 9 करोड़ का लॉस हो गया ना। नाउ देयर इज अ लॉस ऑफ हाउ मच? 9 CR। लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यूअर को बुलाया, उसको वैल्यूएशन करने को बोला, एंड ही सेज इसका वैल्यूएशन आज के डेट में 10 करोड़ का है, मतलब वैल्यू एप्रीशिएट हो गया ना। 9 करोड़ से प्रॉफिट हो गया कंपनी को, कितने का प्रॉफिट हुआ? 9 करोड़। कितना लॉस दिख रहा है? 9 करोड़। ये कितना हो गया? 0। सी द बैलेंस शीट विद द ब्लैक फिगर्स। इनर कॉलम में जो हमने लिखा है 4 + 4 8, 8 + 7 15, 21, 24 करोड़ हो गया ना ये। अब एसेट्स का टोटल देखिए, 10 + 4 14 + 1 15, 17, 23। बैलेंस शीट टैलीज, बट अब के नए बैलेंस शीट में पीएनएल डेबिट बैलेंस 12 करोड़ का नहीं दिख रहा है। पहले 12 करोड़ का लॉस था, इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, दिस लॉसेस हैव बीन वाइप्ड ऑफ। अब अगर कोई बैलेंस शीट देखेगा इस कंपनी को तो बोलेगा दिस कंपनी इज मच बेटर कंपनी। If you see the balance sheet of a company with a loss of 12 crores and you see a balance sheet of a company with zero loss, you will always say ना, जो कंपनी का zero loss है वो अच्छा कंपनी है as compared to a company which has a loss of 12 crores। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी बंद नहीं किया, कंपनी वैसे ही चल रहा है, बट what they have done is they have changed the values of certain assets and liabilities with the permission of all the stakeholders। कोर्ट से भी परमिशन लिया जाता है, कोर्ट ऑल्सो अग्रीज, ठीक है। रिमेंबर, सबको पूछा गया है, कंसल्ट हुआ है, उसके बाद ये सब चेंजेस हुआ है। And all those changes takes place through a special account called as capital reduction account। कौन से अकाउंट से थ्रू करना है आपको? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के थ्रू ये सब कुछ किया जाएगा। Now think what is the entries that you have to record. Capital reduction is an account which is used to write off those losses. It is an account which is being created to record all these transactions. सबसे पहला एग्जांपल ले लो, इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले कितना था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होने के पहले? 10 करोड़। अब कितना हो गया? 4 करोड़। मतलब कितना कम हो गया? 6 करोड़। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। All this accounting is in the books of the company, not in the books of the shareholder, remember. Company has to pay less money to the shareholder in future. पहले कंपनी का liability towards equity shareholders was 10 crores, but in future they have to pay only 4 crores. The liability is reduced by 6 crores. कंपनी को 6 करोड़ कम देना है shareholder को, profit to the company. और कैपिटल कम हो गया ना, कैपिटल ऑलवेज एज विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कम हो गया मतलब क्या करोगे? डेबिट। तो आपका एंट्री कैसे आएगा? फर्स्ट एंट्री ओवर हियर इट विल बी
equity share capital account debit to capital reduction account. कहां के थ्रू करोगे? कैपिटल रिडक्शन. सेम वे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी तो स्टेक कम हो गया. 5 करोड़ का 4 करोड़ हो गया. 1 करोड़ से उनका स्टेक कम हो गया, मतलब उनको भी कम पैसा देना है. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो प्रॉफिट है. Where will it go? To my capital reduction account. So second entry over here will become preference share capital account debit to capital reduction account. 1 करोड़ का सिक्योरिटीज प्रीमियम था, वो हमने यूटिलाइज कर दिया. यूटिलाइज किया टू राइट ऑफ द लॉसेस, बट इट हैज टू बी डन थ्रू अ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. तो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम कम हो जाएगा ना. सो थर्ड एंट्री विल बी securities premium account debit to capital reduction account. Debentures देखिए, they also ready to sacrifice 1 crore. 8 करोड़ का 7 करोड़ हो गया, उन्होंने भी 1 करोड़ का सैक्रिफाइस दिया, उनको भी 1 करोड़ कम पे करना है. प्रॉफिट फॉर द कंपनी, रिमेंबर. सो एंट्री क्या आएगा इसके लिए? 15% debentures account debit to capital reduction account. बैंक ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया तो देयर विल बी नो एंट्री फॉर द सेम ना. बट क्रेडिटर्स ने 2 करोड़ का सैक्रिफाइस किया तो उसका एक सेपरेट एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे. अगेन क्रेडिटर्स कम हो गया, सैक्रिफाइस किया, कम पैसा देना है, प्रॉफिट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अगर आप लायबिलिटीज कम पे करते हो तो आपका प्रॉफिट हो रहा है. आपका इन द सेंस कंपनीज का. Company has to pay less money. If the company has to pay less money, it's a profit to the company. Profit to the company will go to where? My capital reduction account, remember. Asset side पे देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट हो गया, इंक्रीज हो गया. That means it's a profit to the company. Where it will go? It will go to my capital reduction account. So I'll write it over here. Land and building account debit to capital reduction account. और सारे assets का अगर आप देखोगे बाकी का तो उसके वैल्यूज कम हो रहे हैं. प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कम हो गया, स्टॉक का वैल्यू कम हुआ, डेटर्स का वैल्यू कम हुआ. ये सारा लॉस है. कहां से सेट ऑफ करोगे? इट विल बी एडजस्टेड इन योर कैपिटल रिडक्शन. पीएनएल में नहीं डालने का. इट हैज टू बी डन थ्रू दैट स्पेशल अकाउंट कॉल्ड एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. सो इट विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. और ये सब पूरा एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं? वो 12 करोड़ का जो पीएनएल डेबिट बैलेंस था उसको कैंसिल करना था, वाइप ऑफ करना था. वो नए बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए हमने ये सब किया था. पीएनएल का डेबिट बैलेंस था, कैंसिल करना है, निकाल देना है, तो आप क्या करोगे? उसको क्रेडिट करोगे. सो इट विल बी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आएगा, उसका भी वैल्यू कम हो गया. इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कम हुआ तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा. स्टॉक का वैल्यू कम हुआ तो टू स्टॉक अकाउंट आएगा. डेटर्स का वैल्यू कम हो गया सो टू डेटर्स अकाउंट आएगा. चेक करोगे तो आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो गया था. नो बैलेंस, पूरा 12 करोड़ का आपका लॉस वाइप ऑफ हो गया. बट जरूरी नहीं है एवरी टाइम योर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल टैली. एवरी टाइम द अमाउंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन विल बी इक्वल टू द लॉसेस टू बी राइट ऑफ. कभी कभी ज्यादा बैलेंस होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. सो बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आफ्टर all adjustments will be transferred to
capital reserve account. Balance in capital reduction account after all adjustments are over will be transferred to your capital reserve account. Why capital reserve? It's a one-time event. रोज कंपनीज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं करती है, कभी कभार होता है. Therefore, it's a capital event. So whatever is the balance will go to capital reserve. अगर कुछ बैलेंस है तो जरूरी नहीं है every time आपके पास बैलेंस होगा. Remember. After this, they might ask you to prepare the balance sheet. Balance sheet after रिकंस्ट्रक्शन. तो ऊपर एग्जाम्पल में जो अपने ब्लैक के फिगर्स थे, दैट इज द फिगर्स दैट विल अपीयर इन योर बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन. बट व्हेन यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इज ओवर, जब आप नया बैलेंस शीट बनाओगे, हेडिंग दोगे बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन सो एंड सो डेट, तो वहां पे हेडिंग में क्या करना है, आपको ब्रैकेट में लिखना है इन कैपिटल लेटर्स एंड रिड्यूस्ड. कंपल्सरीली ये वर्ड्स लिखने का व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर. अगर सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछा फाइन, बट जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद अगर वो आपको कहते हैं prepare the balance sheet of the company after reconstruction is over, then in that case you have to give in the heading extra information in the name of and reduced. So that जो भी आदमी इस कंपनी का बैलेंस शीट फ्यूचर में एनालाइज करता है, he will see the words and reduced और उसको पता चलेगा कि कुछ साल पहले ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी था. वेरियस स्टेक होल्डर्स ने सैक्रिफाइस किया होगा, तभी अब यहां पे P&L का डेबिट बैलेंस नहीं दिख रहा है. So the moment and reduced word कोई एनालिस्ट देखता है, he will realize कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले मुझे थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए. And then he will try and find out कितना सैक्रिफाइस किसने किया था, कब किया था, क्या प्रॉमिस हुआ था उस वक्त. Has the company reinvented itself? फिर से प्रॉफिट कमाने लगी क्या, कंपनी कैसे चल रहा है, all this the analyst will look into. That was possible because of the words and reduced. अगर वो words नहीं लिखा होता, you will never come to know that this company had gone in for internal reconstruction. ये पहले loss making company था, आपको कभी पता नहीं चलेगा. But ये words lifelong नहीं maintain करना है. These words are to be recorded only for the next 5 years. बस उसके बाद आपको ये वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 5 years इज अ लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद का. दैट्स योर बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. नाउ सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग इक्विटी शेयर्स का कैसे करोगे आप. इन द क्वेश्चन दे माइट टेल यू equity share capital shares are of rupees 10 each na, and let's say the amount was 10 crores. एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का और वो फुल्ली पेड है. इट इज फुल्ली पेड. अमाउंट 10 CR. तो नंबर ऑफ शेयर्स सोचोगे तो 1 crore शेयर्स होगा ना. एंड दे टेल यू equity shares are reduced to shares of rupees 6 each, fully paid. They are reduced to shares of rupees 6 each, fully paid. मतलब पुराने इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का था, फुल्ली पेड अप था. शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग होता है, डिस्कशन होता है, शेयर होल्डर्स के साथ अग्रीमेंट हुआ. शेयर होल्डर्स कहते हैं ठीक है, हमारे शेयर्स जो 10 रुपए का उसका 6 रुपए का बना दो, which means we are ready to sacrifice 4 rupees per share. To which what the company will say, in that case आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है उस पे 10 रुपीज प्रिंटेड होगा, तो आपको आपका पुराना सर्टिफिकेट रिटर्न करना पड़ेगा
हम आपको नया सर्टिफिकेट देंगे, उस पे 6 रुपीज विल बी द प्रिंटेड वैल्यू, रिमेंबर। तो पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स वापस दे दो, हम आपको नए शेयर सर्टिफिकेट्स देंगे विद 6 रुपीज। आपके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं होंगे, पहले जितने शेयर्स थे उतने ही शेयर्स रहेंगे, बट पहले 10 रुपए का था, अब 6 रुपए का शेयर हो जाएगा। शेयर होल्डर्स कहते हैं ठीक है, वापस ले लो, गिव अस न्यू शेयर्स। आप किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो? कंपनी शेयर होल्डर के बुक्स में नहीं कर रहे हो। थिंक फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी के बुक्स में क्या एंट्री आएगा फॉर द सेम? इट विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पुराने शेयर्स कैंसल करने हैं। पुराने शेयर्स का फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू कितना था? 10 रुपीज। कितने शेयर्स थे? 1 करोड़ शेयर्स थे, तो वैल्यू क्या होगा? 10 करोड़ रुपीज होगा ना। एक्सचेंज में आप उनको नया शेयर्स देने वाले हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नया शेयर्स आप कितने रुपीस का दे रहे हो? 6 रुपीस का। कितने शेयर्स दोगे? सेम 1 करोड़ शेयर्स दोगे, तो अमाउंट कितना होगा? 6 करोड़ रुपीस हो जाएगा ना। तो 4 रुपया जो उन्होंने कम किया है, सैक्रिफाइस किया, कुर्बानी दी इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, दैट विल गो टू माय कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इट्स अ प्रॉफिट टू द कंपनी, रिमेंबर। पहले 10 करोड़ देना था इक्विटी शेयर होल्डर्स को, अब सिर्फ 6 करोड़ देना है, 4 करोड़ कम पे करना है। इट्स अ प्रॉफिट विच विल गो टू माय कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, रिमेंबर। फर्स्ट एग्जाम्पल, रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू हैज रिड्यूस्ड, और अगर फेस वैल्यू रिड्यूस होगा तो बाय डिफॉल्ट पेड अप वैल्यू भी रिड्यूस होगा, बिकॉज पेड अप वैल्यू कैन नेवर बी मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, रिमेंबर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। बैलेंस शीट। Equity share capital in bracket 10, and let's say they give you it is 20 CR. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? 2 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे ना। एक शेयर 10 रुपए का, फुल्ली पेड अप। नाउ व्हाट इज द अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स? कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में अग्रीमेंट क्या है? डोंट रिड्यूस द फेस वैल्यू, रिड्यूस ओनली द पेड अप वैल्यू। सिर्फ पेड अप वैल्यू कम कीजिए, फेस वैल्यू रिमेनिंग द सेम। 10 रुपए का फेस वैल्यू, उसको आप कम नहीं करोगे, आप कम करोगे सिर्फ पेड अप वैल्यू। जो 10 रुपया पेड अप है उसका कम कर दीजिए। So what will happen is, by default the shares will become partly paid in future, और अगर वो पार्टली पेड अप हो गया तो फ्यूचर में डायरेक्टर्स कैन मेक अ कॉल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द बैलेंस अमाउंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझाते हैं शेयर होल्डर्स को, देखिए अगर हम सिर्फ पेड अप वैल्यू कम करेंगे तो ये शेयर्स पार्टली पेड अप हो जाएगा, फ्यूचर में हम आपसे वापस पैसा मांग सकते हैं। शेयर होल्डर्स कहते हैं नो प्रॉब्लम, वी आर रेडी टू गिव यू द मनी। हमारा ही कंपनी है ना, हम एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए रेडी है। जब भी फ्यूचर में आपको कॉल करना है कीजिए, बट राइट नाउ जस्ट रिड्यूस ओनली द पेड अप वैल्यू, फेस वैल्यू आपको कम नहीं करना है। Paid up value of equity shares is reduced by 3 per share. सिर्फ पेड अप वैल्यू कम किया, फेस वैल्यू कम नहीं किया है, रिमेंबर दैट। मतलब नए शेयर्स का भी फेस वैल्यू तो सेम 10 रुपीज ही रहेगा, पुराने शेयर्स का फेस वैल्यू भी सेम 10 रुपीज था। सो नाउ कंपनी विल नॉट टेल शेयर होल्डर्स कि पुराने सर्टिफिकेट्स वापस दो, हम आपको नया सर्टिफिकेट देंगे। नो, दोनों का फेस वैल्यू तो सेम ही है ना। So no need to take back the old shared certificates. You are not supposed to issue new shares to the shareholders. Remember, सिर्फ paid up value जब कम करना होता है, सिर्फ paid up value जब कम करना होता है, entry is very simple. Entry for the same will be
equity share capital account debit to capital reduction account. कितने शेयर्स थे? 2 करोड़ शेयर्स थे. What is the reduction per share? 3 rupees. तो ये कितना हो जाएगा? 6 crore rupees हो जाएगा ना. So entry over here is equity share capital to capital reduction. प्रीवियस केस में देखिए फेस वैल्यू भी कम हुआ था तो हमने पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स पूरा कैंसिल किया, नया सर्टिफिकेट्स इश्यू किया. देयर इट वाज ओल्ड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन. जबकि अगर सिर्फ पेड अप वैल्यू कम हो रहा है देन यू नीड नॉट कैंसिल द फुल ओल्ड शेयर कैपिटल. रिमेंबर, सिर्फ कैपिटल थोड़ा कम करना है, पेड अप वैल्यू जितना. सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. नया शेयर्स इश्यू करने की जरूरत नहीं है ओवर हियर. सो यू हैव टू बी केयरफुल, रीड इट पॉइंट केयरफुली. फेस वैल्यू कम करने को बोला है या सिर्फ पेड अप वैल्यू कम करने को बोला है? दोनों के अकाउंटिंग एंट्रीज में थोड़ा डिफरेंस है. रिमेंबर, in maximum cases it is reduction in face value, first alternative, but second भी possible है. Remember that. In case of preference shares, let's take a balance sheet. %12 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का होता है? 100 रुपए का होता है ना. 5 crores. मतलब कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होंगे? इफ यू कैलकुलेट इट विल बी 5 लाख शेयर्स होंगे ना. नाउ व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी? कंपनी और प्रेफरेंस होल्डर्स के बीच में मीटिंग हुआ. मीटिंग में डिसाइड हुआ कि ये जो 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, it will be reduced to 12% preference shares of ₹100 each, reduced to 10% preference shares of ₹80 each, fully paid. लॉजिकली सोचोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने 2 कुर्बानी दी. एक तो वैल्यू पर शेयर कम कर दिया और दूसरा रेट ऑफ डिविडेंड भी कम किया. पहले उनको 12% डिविडेंड मिल रहा था, अब फ्यूचर में उनको मिलेगा सिर्फ 10%, वो भी रिड्यूस्ड वैल्यू पे. रिमेंबर, बट फेस वैल्यू रिड्यूस हो गया. पहले 100 रुपीज था, अब 80 रुपीज हो गया. सो हाउ डू यू डू द अकाउंटिंग फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द कंपनी? ओल्ड फुल कैपिटल हैज टू बी कैंसल्ड. पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स वापस ले लोगे, कैंसिल कर दोगे, नया शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करोगे. बिकॉज पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स का फेस वैल्यू 100 था, नए का 80 है. रिमेंबर, सो माय एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी विल बी 12% preference share capital account debit. Amount is 5 crore. एक शेयर कितने का था? 100. ऐसे कितने शेयर्स थे? 5 लाख शेयर्स थे. कंपनी उनको नया शेयर्स इश्यू करेगी विद अ न्यू रेट ऑफ डिविडेंड एंड अ न्यू फेस वैल्यू. सो इट विल बी टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. एक शेयर कितने का? 80 रुपीज. हाउ मेनी शेयर्स? 5 लाख शेयर्स. मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 4 करोड़ रुपीज आएगा ना. 5 लाख शेयर्स इंटू 80 रुपीज, 1 करोड़ का कैपिटल कम हो गया. दैट्स अ प्रॉफिट. वेयर विल इट गो? इट विल गो टू माय कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1 CR. रिमेंबर, so we have seen how to do the accounting in case of equity shares reduction, preference shares reduction also. Now let us take one example relating to debentures. Let's take one example relating to debentures. A simple balance sheet. Again, I am preparing horizontal.
12% debentures 10 crores. यहां पे आएगा लैंड एंड बिल्डिंग वाज लेट्स से 5 crores. अब डिबेंचर होल्डर्स के साथ मीटिंग होता है. इसमें से कुछ डिबेंचर होल्डर्स क्या बोलते हैं, हमको एक लैंड एंड बिल्डिंग दे दो, हमारा सेटलमेंट कर दो. Give us some land and building and settle our account, remember. Debenture holders of rupees 4 crores, 4 करोड़ जिनके पास डिबेंचर्स थे, उन्होंने सेटलमेंट मांगा, were settled by issue of land and building of book value 3 crores at an agreed value of 4 crores. 3 करोड़ का एक बुक वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग, वो हमने उनको दे दिया बट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 4 crores, रिमेंबर. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वो जो लैंड एंड बिल्डिंग जिसका बुक्स में बैलेंस शीट में 3 करोड़ का वैल्यू, उसको एप्रिशिएट करना है बाय 1 CR, रिमेंबर. And how do you appreciate it? What will be the entry? Where will it go? To a special account called as capital reduction. So entry क्या होगा? Land and building account debit to capital reduction account. Amount will be 1 CR होगा ना. तो अब आपका वो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो गया? 4 CR का. गिव इट टू द डिबेंचर होल्डर्स. तो डिबेंचर का लायबिलिटी कम हो जाएगा ना. फ्यूचर में आपको डिबेंचर होल्डर्स को 10 CR नहीं पे करना है, फ्यूचर में आपको पे करना है सिर्फ 6 CR. डिबेंचर्स कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गया. लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कम करने के लिए आप क्या करोगे? डेबिट करोगे ना. सो इट विल बी 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 4 CR. क्या दिया हमने उनको? लैंड एंड बिल्डिंग लेके गए, वो बिल्डिंग गया, सो इट विल बी 2 लैंड एंड बिल्डिंग 4 CR. तो पहले हमने क्या किया? असेट का वैल्यू एप्रिशिएट किया और फिर रिवाइज्ड वैल्यू पे डिबेंचर वालों को दे दिया. लायबिलिटी कम हो गया, असेट चला गया. This is how you do the accounting in case of internal reconstruction, remember. शेयर्स का देखा हमने कैसे करना है एडजस्टमेंट, हाउ टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. डिबेंचर्स का कैसे करना है. असेट्स का सिंपल होता है, वैल्यूज सिर्फ कम होता है, वो आपको राइट ऑफ करना है इन द लास्ट एंट्री. All this internal reconstruction transactions are done through a special account called as capital reduction account, and the balance in capital reduction account, if any, will go to your capital reserve account. जरूरी नहीं है every question में capital reduction account में balance होगा ही. अगर है तो capital reserve को transfer कीजिए, otherwise not. और ये सब कुछ करने के बाद they might ask you to prepare the balance sheet वर्टिकल कंपनी का शेड्यूल 3. बट जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो याद रखना ब्रैकेट में वर्ड्स लिखने का एंड रिड्यूस. इट्स एन इंडिकेशन दैट दिस कंपनी वाज अर्लियर अ लॉस मेकिंग कंपनी. इस कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब वेरियस स्टेक होल्डर्स ने सैक्रिफाइस किया होगा सो दैट द कंपनी मेक्स अ टर्न अराउंड. यू कैन सी this is your revision about internal reconstruction chapter. Next chapter that we are going to revise is buyback of shares. Now when you say buyback of shares, it means buyback of only equity shares. Preference shares का buyback नहीं होता है. प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होता है. So when you say buyback of shares, it means buyback of only equity shares. If a company buybacks the equity shares, which means the company is telling the existing equity shareholders, if you want to, voluntary, compulsory नहीं है,
अगर आप चाहते हो तो यू कैन गिव बैक योर शेयर्स टू द कंपनी, एक्सचेंज में कंपनी आपको पैसा देगी, and the price at which the company buybacks the shares is normally always more than the market price of the shares. अगर मार्केट प्राइस मान लो 100 रुपीज है, तो कंपनी विल अनाउंस इट एट 120, 130, 150, but never at 90, 80, 70. कंपनी सेंड्स लेटर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, आपके पास 100 शेयर्स है, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट यू कैन गिव बैक योर शेयर्स टू द कंपनी, कंपनी आपको कैश देगी एंड कंपनी विल गिव यू कैश मोर देन द मार्केट प्राइस, बट ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है मत कीजिए, करना है देन फिल अप द फॉर्म एंड गिव अस द शेयर्स, रिमेंबर। So how do we do the accounting in the books of the company is what you are going to learn over here, remember. इंडिविजुअल इन्वेस्टर शेयर होल्डर के बुक्स में क्या अकाउंटिंग है उसके बारे में नहीं सोचना है आपको, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन कंपनीज बुक्स, रिमेंबर। But whenever a company buybacks the equity shares, your equity share capital goes down. Because buyback is always with the intention of immediate cancellation. Company cannot invest in its own equity shares, not allowed. मतलब liabilities में equity share capital होगा, assets में under investments, our own equity shares में investments, that's illogical. तो अगर कंपनी बायबैक करती है शेयर्स, इट्स ऑलवेज विद द इंटेंशन ऑफ इमीडिएट कैंसिलेशन, तो बट नेचुरली कि इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगा तो टोटल शेयर कैपिटल कम हो जाता है। दिस इज वेयर कंपनीज एक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बैलेंस शीट। Existing equity shares of rupees 10 each. Let's say this was 10 CR. Total share capital is also 10 CR. No preference shares was issued. And let's say company had a general reserve of 50 CR. Now company wants to buy back. First alternative, buy back equity shares of 2 CR. तो कितने का इक्विटी शेयर्स हम बाय बैक कर रहे हैं? 2 CR का, which means under the first alternative आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 8 करोड़ हो जाएगा, तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 8 करोड़ हो जाएगा ना। You are violating the provisions of the Companies Act which says total share capital कम नहीं होना चाहिए। Your total share capital should not be reduced, remember. But 8 CR जब हो रहा है, total भी 8 CR, तो automatically आपने violate कर दिया। So there is a way out. अगर आप 2 करोड़ का इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हो तो यहां पे व्हाट इज द वे आउट? इश्यू न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 CR। जितने का आप इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हो उतने का नया प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कीजिए, नया इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते हो। यू मेक अ फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज अलाउड, रिमेंबर। What will happen because of this is यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, पहले नहीं था, अब कितना आ जाएगा? 2 CR आ गया, तो मेरा टोटल शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 CR हो गया ना। I am fulfilling both the conditions. मैं बायबैक भी कर सकता हूं एंड सेकेंड इज आई एम नॉट वायलेटिंग द प्रोविजन व्हिच सेज द टोटल शेयर कैपिटल कम नहीं होना चाहिए, वो भी बच गया। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, मेरा जनरल रिजर्व तो सेम रहेगा ना, 50 CR। सेकेंड ऑल्टरनेटिव, बायबैक सेम इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 CR,
but company cannot make a fresh issue of preference shares. कोई नया शेयर्स खरीदने के लिए रेडी नहीं है. So in such cases कंपनीज एक्ट में एक और प्रोविजन है. अगर आपको नया शेयर्स इश्यू नहीं करना है, मत कीजिए. क्रिएट अ स्पेशल रिजर्व कॉल्ड एज CRR. कितने का क्रिएट करोगे? जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आप बाय बैक कर रहे हो, उतने का आप CRR क्रिएट कीजिए. And CRR, remember, can be used only for one purpose, and that is for issuing fully paid bonus shares. It cannot be used for any other purpose. तो अब अगर आप सेकेंड ऑल्टरनेटिव यहां पे देखोगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 8 CR, but there is no new preference shares. So my total share capital comes to 8 CR. अब हम क्या करेंगे? एक नया रिजर्व क्रिएट करेंगे, और ये CRR कहां से क्रिएट होता है? फ्रॉम योर रेवेन्यू रिजर्व. तो अब जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा? 48 CR हो जाएगा, और एक यहां पे नया रिजर्व आएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ऑफ 2 CR. This CRR will be used for giving bonus shares to the shareholders. इमीडिएटली यूज कीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है. 6 महीने में यूज होना चाहिए, ऐसा भी रूल नहीं है. कंपनी कभी भी फ्यूचर में यूज कर सकती है. एंड व्हेनेवर बोनस शेयर्स आर इश्यूड, रिमेंबर दे 2 CR का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा. CRR कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज, माय टोटल शेयर कैपिटल विल कम बैक टू 10 CR, रिमेंबर. और थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 1+2. नया प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किया 50 लाख का, तो CRR क्रिएट करना पड़ेगा 1.5 करोड़ का. दोनों मिला के it should be equal to the nominal value of equity shares that you're going to buy back, remember. So buyback of shares means buyback of only equity shares, but whenever there is a buyback of equity shares, your equity share capital will reduce, therefore the total share capital reduces. Then therefore the way out is एक नया preference shares issue कीजिए of the same nominal value, और CRR create कीजिए. Now in this particular chapter, your revenue reserves will include general reserve, PNL, reserve fund, and very important, only for this one chapter, securities premium is treated as a revenue reserve. For all other chapters, securities premium is purely capital in nature. But only for this one chapter, securities premium is treated as a revenue reserve, remember. So you can use securities premium for creating CRR. It is allowed only in this chapter. In no other chapter will you treat securities premium as a free or revenue reserve or divisible profits, remember. Now, how do we do the accounting in the books of the company? Accounting, books of company. If the company is buying back the shares, it is possible that it may sell some investments. May, जरूरी नहीं है every question में हो गए. और अगर investments बेचा तो profit भी हो सकता है, loss भी हो सकता है. So the first entry will normally be for sale of investments if any. और क्या एंट्री आएगा उसके लिए? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, फॉर लॉस इफ एनी. 2, इन्वेस्टमेंट
account with the book value and to profit and loss account with the profit element. So if investments are sold, profit या loss. Second is buy back of equity shares. कंपनी ने इक्विटी शेयर्स खरीदा विद द इंटेंशन ऑफ इमीडिएट कैंसलेशन. खरीदते ही कैंसिल कर देंगे मतलब शेयर कैपिटल कम हो जाएगा. कैपिटल ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस. कम करने के लिए आप क्या करोगे? डेबिट. सो इट विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. बट दिस बायबैक इज ऑलवेज एट अ प्रीमियम, never at a discount, remember, and the price paid is normally more than the market price. तो face value से तो ज्यादा ही होगा ना. That means company is paying extra money to the shareholders. कंपनी के point of view से सोचोगे तो ये loss है, remember. So it will be premium on buyback account debit. और कंपनी क्या करेगी? इमीडिएटली पैसा दे देगी. रिमेंबर ये कंपल्सरी नहीं होता है, वॉलंटरी होता है. दैट मींस ओनली दो शेयर होल्डर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट वो कंपनी के पास आएंगे अलोंग विद द शेयर्स. ये हमारे शेयर्स ले लो, हमको कैश दे दो. कंपनी इमीडिएटली उनको पैसा दे देगी. सो टू कैश और बैंक अकाउंट, रिमेंबर. सो बायबैक का एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. If they have told us in the question new preference shares were issued, preference shares, buyback of equity shares में नया equity shares issue नहीं कर सकते हो. करना ही है तो preference shares issue करोगे. And when you issue preference shares, it is possible at par and premium. दो alternatives होते हैं. अगर पार पे इश्यू किया, इश्यू ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, एंट्री विल बी पैसा मिलेगा ना कंपनी को. सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट. और अगर प्रीमियम पे इश्यू किया तो यू विल आल्सो हैव टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. That's the entry for issue of preference shares, remember. Premium on buyback is a loss to the company. It should be always written off, remember. So my next entry will be write off premium on buyback. Now loss को write off कर रहे हो. राइट ऑफ करने के लिए पहले क्या यूज करने का? सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ अवेलेबल. अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो आप यूज करोगे आपके रेवेन्यू रिजर्व्स. लाइक जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो, पीएनएल यूज कर सकते हो, रिजर्व फंड यूज कर सकते हो. बट पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम. नहीं होगा तो रेवेन्यू रिजर्व्स को जाने का. सो व्हेन आई एम राइटिंग द एंट्री, आई विल राइट इट एज सिक्योरिटीज प्रीमियम और revenue reserves account debit to premium on buyback account. Securities premium or revenue reserves account debit to premium on buyback account. And if the company has not issued new preference shares, then it will have to create a special reserve, CRR. Or if it has issued new preference shares but not sufficient, equivalent to the face value of equity shares that we are buyback, then CRR has to be created. So the last entry is create capital redemption reserve. CRR का full form is capital redemption reserve. CRR क्रिएट करने के लिए इस चैप्टर में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो. अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो उसको प्रेफरेंस दीजिए, वो पहले यूज कीजिए. नहीं है तो आप आपके रेवेन्यू रिजर्व्स यूज कर सकते हो.
So can I say the entry is securities premium or revenue reserves account debit to capital redemption reserve account. Just maximum 5 entries whenever there is a buyback of equity shares. But whenever there is a buyback of equity shares, either they will ask you to pass journal entries or they will ask you to check the conditions and then pass the journal entry if the conditions are fulfilled. So if a company wants to go ahead with the buyback, if they want to come out with the buyback, उनको पहले conditions check करना पड़ता है. They will do some homework. Companies Act में कुछ conditions specify किया है. Only if these conditions are fulfilled, they will come with a buyback. Otherwise, they cannot buy back the shares, remember. So the next that you have to understand is conditions for buyback of shares. 3 कंडीशंस है, आपको तीनों कंडीशंस अप्लाई करना है वन बाय वन. फाइंड आउट करना है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आप कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से आप कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो, थर्ड कंडीशन के हिसाब से आप कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो. आपको 3 नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, तीनों को कंपेयर करना है. विच एवर इज लेस, that is the number of shares that you can buy back. उससे ज्यादा आप buy back नहीं कर सकते हो, वो मैक्सिमम है. उससे कम buy back करना है allowed, ज्यादा buy back allowed नहीं होगा. So what are the conditions over here? That is what you have to understand. First condition, company cannot buy back more than 25% of issued shares. कंपनी मैक्सिमम कितना बाय बैक कर सकती है? 25% ऑफ इश्यूड शेयर्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर. बैलेंस शीट आपको देंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर्स कितने का है? 10 रुपए का होता है ना. एंड लेट्स से द इक्विटी शेयर कैपिटल वाज 10 CR. मतलब कितने शेयर्स इश्यू किए हैं? 1 करोड़ शेयर्स इश्यू किए थे. How many shares the company can buy back? Maximum 25%, इससे ज्यादा नहीं. So maximum will be 1 crore shares. इसका 25%, which gives me 25 lakh shares. As per the first condition, the company can buy back maximum 25 lakh shares, not more than that. Second condition, amount paid on buyback should not be more than 25% of equity. Amount paid on buyback should not be more than 25% of equity. So what do you mean by the word equity over here? Equity calculations में क्या क्या included होगा? It will include my equity share capital plus it will include my preference share capital, in short my share capital, plus securities premium, plus all your revenue reserves, minus miscellaneous expenditure items. यहां पे इक्विटी में आप कैपिटल रिजर्व्स दूसरे कंसीडर नहीं करोगे. You will not consider your statutory reserves, remember. सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व लेना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, because in this chapter securities premium is treated as one of your revenue reserves, remember. So let us take an example. 25% of that से ज्यादा पेमेंट नहीं करना है आपको.
Let's take a case where preference share capital was 5 CR. Securities premium was also there. चलिए वो भी 5 CR ले लेते हैं. And revenue reserve was 40 CR. No ME item. So over here if I add 10 plus 5 plus 5 plus 40. 10 plus 5 plus 5 plus 40 minus 0. 60 CR होगा ना. Maximum amount to be paid 60 CR का 25% कैलकुलेट कीजिए. 60 CR का 25% आप कैलकुलेट करोगे तो 15 करोड़ रुपए आएगा ना. एंड इन द क्वेश्चन दे विल टेल यू बाय बैक प्राइस पर शेयर 50 रुपीस. फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया. बायबैक कितने पे कर रहे 50 रुपया. हो सकता है मार्केट प्राइस सिर्फ 40 रुपया था. Practically, logically, the buyback price announced by the company is always more than the market price. So I'm just giving you an example. मान लो market price 40 रुपया, लेकिन कंपनी कितने में buyback कर रहा है 50 रुपीस में buyback कर रहा है. So as per the second condition, maximum कंपनी कितना पे कर सकती है 15 करोड़. इससे ज्यादा पेमेंट नहीं करने का. Per share का buyback price कितना है 50 rupees. So how many shares can they buy back? That is what you are supposed to find out. Number of shares for buyback as per the second condition will be 15 crores divided by 50 rupees. You are getting it as 30 lakh shares ना. कितना बायबैक कर सकते हैं मैक्सिमम 30 लाख शेयर्स. रिमेंबर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से कितना बायबैक कर सकते थे 25 लाख शेयर्स, उससे ज्यादा नहीं. सेकेंड कंडीशन के हिसाब से कितना बायबैक कर सकते 30 लाख शेयर्स, इससे ज्यादा नहीं. सोचो 2 मिनट के लिए सिर्फ दो कंडीशंस है. एक में 25 लाख, दूसरे में 30 लाख. दोनों को कंपेयर कीजिए विच एवर इज लेस. So based on these two conditions, as of now, company can buy back maximum 25 lakh shares, not 30 lakh shares, remember. But एक और conditions है, 3 conditions. तीनों के हिसाब को number of shares find out करना है. Third condition says after buyback complete होने के बाद your debt equity ratio should not be more than 2:1. इससे ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए. कम होगा तो चलेगा आफ्टर बायबैक. So how do I get my debt equity ratio? It is debt upon equity 2:1 na. What do you mean by debt? Debt means long-term borrowings, whether they are secured or unsecured. Long-term borrowings, secured as well as unsecured. लेकिन long term is basically those borrowings which you have to pay after a period of more than 12 months. Remember, सिर्फ वो लेना है, short term borrowings नहीं लेना है. So let's take a case where here you have long term borrowings, and let's say आपका long term borrowings was 80 CR. So now
डेट इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? डेट 80 CR है वो पता है, बट यू वांट द इक्विटी आफ्टर बायबैक. After buyback, debt equity ratio should not be there more than 2:1. So equity after buyback कितना होगा? How do I get my equity after buyback? It is calculated as equity before buyback minus amount paid on buyback minus amount transferred to CRR, which stands for Capital Redemption Reserve. इक्विटी बिफोर बायबैक वो हमने ऑलरेडी सेकेंड कंडीशन में कैलकुलेट किया था. इट वाज 60 CR. रिमेंबर, दिस इज योर इक्विटी बिफोर बायबैक. इसमें से आप माइनस कीजिए अमाउंट पेड ऑन बायबैक. अमाउंट पेड ऑन बायबैक कैसे होगा? आपको बायबैक प्राइस पता है 50 रुपीज पर शेयर. Multiply with the number of shares that you're going to buy back. That will give you the amount to be paid to the on buyback and amount transferred to CRR. How do I get the amount transferred to CRR? CRR कब create होता है? जब fresh issue नहीं होता है. जितना आपका कैपिटल कम होगा उतना CRR बढ़ना चाहिए. कैपिटल कितना कम होगा? जितना भी आप शेयर्स बायबैक करोगे इनटू 10 रुपीज से कैपिटल कम होगा. बिकॉज एक शेयर का फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू कितना है? 10 रुपीज. सो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज द कैपिटल दैट इज गोइंग टू गो डाउन. उतना CRR क्रिएट करना है. बट थर्ड कंडीशन में अभी तो आपको पता ही नहीं है कि आपका बायबैक कितने शेयर्स का होने वाला है. दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. So very simple. Assume number of shares for buyback is X number of shares. थर्ड कंडीशन के हिसाब से आपका बायबैक के कितने शेयर्स है? X नंबर नहीं पता, वही हम ढूंढ रहे हैं. So how do I get my debt equity ratio? Debt is 80 CR divided by, what was your equity before buyback? 60 CR minus amount paid on buyback. It will be X multiplied by 50 rupees, that is your buyback price, minus X multiplied by 10 rupees, that is your face value, remember. So debt equity ratio after buyback. Debt is very simple, long term borrowings whether secured or unsecured. Equity after buyback चाहिए. So it's equity before buyback minus amount paid. Amount paid will be number of shares into buyback price minus amount transferred to CRR, that is number of shares into face value per share. ये ratio होना चाहिए 2/1. So if I use this, it will be 80 CR divided by 60 CR minus 50x minus 10x is 2/1 na? That will be 2/1. So can I say 80 CR is equal to, cross multiplication, maths you are good at, is equal to 120 CR minus 120x होगा ना? So if I shift it here and there, you can say it will be 120x is 120 CR minus 80 CR, which means 120x is equal to 40 CR. X is 40 CR divided by 120. Answer is 33,33,333 shares.
कितना शेयर्स आप बाय बैक कर सकते हो मैक्सिमम एज पर द थर्ड कंडीशन 33,33,333 शेयर्स. फर्स्ट कंडीशन में 25 लाख, सेकेंड कंडीशन में 30 लाख, थर्ड कंडीशन में 33 लाख 33,333. तीनों को कंपेयर करो. Whichever is less, company can buy back maximum 25 लाख शेयर्स. इससे ज्यादा नहीं, इससे कम शेयर्स अगर उनको बाय बैक करना है, that is allowed, but not more than that. Remember, कंपनी तीनों कंडीशंस अप्लाई करेंगे. तीनों कंडीशंस के हिसाब से एक डिफरेंट आंसर आने वाला है. वो तीनों आंसर्स को कंपेयर करना है एंड विच एवर इज लेस. Once you decide how many shares are to be bought back, then your journal entry starts. Sale of investments, buyback of shares, if there is any fresh issue of preference shares, तो वो जो normally नहीं होगा, remember, premium write off कीजिए and transfer to CRR. This is all about your buyback of shares chapter. This chapter comes to an end. Now the next chapter that we're going to revise is employee stock option plan. It is called as ESOP. What is the concept of ESOP, employee stock option plan? The company is willing to issue shares to its employees at a discounted price to the market price. कंपनी फ्री में शेयर्स नहीं देगी, कंपलसरी नहीं है. एम्प्लॉय के पास चॉइस है, उसको अगर खरीदना है तो वो खरीद सकता है, नहीं खरीदना है मत खरीदिए. कंपनी फोर्स नहीं कर रही है, कंपनी एक चॉइस दे रही है एम्प्लॉयज को. You can buy shares of our own company at a discounted price to the market price from the company directly. आज तक आप सिर्फ एम्प्लॉय थे, but once you buy the shares from the company, you will also become a shareholder. आज तक आपको सिर्फ सैलरीज मिल रहा था, बोनस मिल रहा था, इंक्रीमेंट मिल रहा था, प्रमोशन मिल रहा था. वो फ्यूचर में भी मिलेगा, प्लस फ्यूचर में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा. You will be getting dividend whenever the company pays dividend to the equity shareholders. You will be getting bonus shares whenever the company gives bonus shares to its equity shareholders. आप मालिक भी बनोगे, remember. सिर्फ एम्प्लॉई नहीं रहोगे. But चॉइस आपका है, खरीदना है तो खरीदिए, मत खरीदना है नहीं खरीदना तो मत खरीदे. चॉइस इज yours, which you are not forcing you, remember. This is called as employees stock option plan. In this particular chapter, you are supposed to know certain terms, remember. First term is grant date. The date on which the scheme is announced by the company. ये डेट पे स्कीम अनाउंस हो गया, आपको शेयर्स मिल सकता है, remember. Let's take an example. It is 1/4/21. They will also specify the number of employees who will be eligible to the shares. कौन कौन से एम्प्लॉयज को कितने शेयर्स मिलेंगे वो भी स्पेसिफाई किया जाता है. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, 100 एम्प्लॉयज है. नंबर ऑफ stock options. Stock options are nothing but shares. Each employee will be entitled to how many shares? Maximum वो कितना खरीद सकता है. That will also be informed to him, remember. And let's say each of them can maximum subscribe 200 shares. इससे ज्यादा वो नहीं खरीद सकता है. कम खरीदना है तो खरीद सकता है, नहीं खरीदना है मत खरीदो. Choice is yours, remember. Market price.
Market price means the price of the shares in the stock market as on the grant date. जिस दिन ये स्कीम अनाउंस हुआ उस दिन स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स का प्राइस क्या है उसको कहा जाता है मार्केट प्राइस. एंड लेट्स से द मार्केट प्राइस वाज 120 पर शेयर. Exercise price. Company exercise price means the price which the company will receive from the employee. फ्री में नहीं दिया, पैसा दोगे तो शेयर्स मिलेगा. एंड नॉर्मली द एक्सरसाइज प्राइस इज लेस देन द मार्केट प्राइस. अपने एग्जाम्पल में लेट्स कीप इट एट 90 रुपीज पर शेयर. So what the company is telling the employees, अपना शेयर का प्राइस मार्केट में 120 रुपया है, we are going to give it to you only for 90 rupees. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू. दिस इज अ लॉस टू द कंपनी. लॉजिकली सोचोगे तो मार्केट में 120 रुपए का प्राइस है, मतलब अगर कंपनी मार्केट में बेचती तो 120 रुपीस मिलता, बट द सेम शेयर दे आर गिविंग इट टू द एम्प्लॉय ओनली फॉर 90 रुपीस. रिमेंबर, 30 रुपया कम मिला ना कंपनी को, दैट्स अ लॉस टू द कंपनी विच वी कॉल इट एज इंट्रिंसिक वैल्यू. फेस वैल्यू. इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना होता है? 10 रुपीस. Securities premium. Securities premium is the difference between the market price and the face value. Market price कितना है? 120. Face value कितना है? 10. तो securities premium will be 110 per share. Exercise period. कब शेयर्स खरीदना है? डेट क्या था? 1 अप्रैल. इसका ये मतलब नहीं कि 2 अप्रैल को आप पैसा लेके आओगे तो ही शेयर्स मिलेगा, एक ही दिन का वक्त है, ऐसा नहीं होता है. कंपनी कहती है सोचिए, डिसाइड कीजिए, आपको वक्त दिया जाएगा, कल का कल आपको पैसे लेके नहीं आना है. एंड कंपनी सेज द एक्सरसाइज पीरियड इज लेट्स से फ्रॉम 1 नवंबर 21 to 31st January 22. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का वक्त है. इन दो डेट्स के बीच में कभी भी आप चेक लेके आओ, हम आपको शेयर्स दे देंगे. बट अगर आप 31 जनवरी के बाद आओगे, 1 फरवरी, 5 फरवरी, तो आपको शेयर्स नहीं मिलेगा. और ये डेट्स एम्प्लॉय को पता होता है ऑन द वेरी फर्स्ट डे, 1 अप्रैल. 1 अप्रैल 21 को उसको पता है कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट इज 31 जनवरी 22. उसके पास काफी वक्त है डिसाइड करने के लिए शेयर्स खरीदना है या नहीं खरीदना है. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सब्सक्राइबिंग द शेयर्स. कितने एम्प्लॉइज को दिया था? 100. सब लोगों ने नहीं खरीदा. रीजंस वेल नोन टू देम. जिन्होंने नहीं खरीदा पूछने नहीं जाने का क्यों नहीं खरीद रहे हो. जिन्होंने खरीदा उनको सिर्फ शेयर्स देने का. एंड लेट्स से आउट ऑफ 100 सिर्फ 95 एम्प्लॉइज ने शेयर्स खरीदा. सिर्फ 95 एम्प्लॉइज ने. सो हाउ डू वी डू द अकाउंटिंग ओवर हियर? जर्नल ऑफ कंपनी. अकाउंटिंग कैसे करोगे? 95 एम्प्लॉइज ने खरीदा, मतलब 95 एम्प्लॉइज पैसे लेके आए, हमको शेयर्स दो. अगर क्वेश्चन में वो स्पेसिफिक डेट देते, कौन से डेट पे वो 95 एम्प्लॉइज ने शेयर्स खरीदा, तो आप एंट्री उस डेट पे रिकॉर्ड करोगे. एंड इफ दे डोंट गिव यू द डेट व्हेन द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द एम्प्लॉइज, तो जो लास्ट डेट है ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड, उस दिन पे एम्प्लॉइज ने शेयर्स खरीदा.
अपने एग्जाम्पल में डेट नहीं दिया, तो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड? 31st जनवरी। तो मतलब एम्प्लॉइज ने शेयर्स कब खरीदा? 31st जनवरी को खरीदा। तो आपका एंट्री क्या होगा? 31st जनवरी 22। कंपनी को पैसा मिला फ्रॉम 95 एम्प्लॉइज, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। बट इसका अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 95 एम्प्लॉइज, ईच एम्प्लॉय कितना शेयर्स खरीद सकता है? 200 शेयर्स खरीद सकता है। एंड व्हाट इज द एक्सरसाइज प्राइस? 90 rupees per share. So 95 into 200 into 90. It gives me 17 lakhs 10,000 ना। कंपनी को कितना पैसा मिला? 17 lakhs 10,000। Employee compensation expense account debit. Remember 120 रुपए का मार्केट प्राइस था, हम एम्प्लॉइज को 90 रुपीस में दे रहे हैं, 30 रुपीस का लॉस हुआ, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। बट ये लॉस होगा सिर्फ वो 95 एम्प्लॉइज जिन्होंने शेयर्स खरीदा। 5 एम्प्लॉइज जिन्होंने शेयर्स नहीं खरीदा, उनके वजह से तो कुछ लॉस हुआ ही नहीं है, और अगर लॉस हुआ नहीं है तो उसको आप रिकॉर्ड भी नहीं करोगे ना। सो हाउ डू आई कैलकुलेट द लॉस ओवर हियर? इट विल बी 95 एम्प्लॉइज इनटू 200 shares into 30 rupees. Remember, are you getting it as 5,70,000? शेयर्स इश्यू कीजिए इनको, सो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ डू आई गेट द अमाउंट? इट्स 95 एम्प्लॉइज इनटू 200 shares into face value 10 rupees per share. So 95 into 200 into 10, that gives me 1,90,000. And 2 securities premium account. How do I get securities premium? 95 employees into 200 shares into 110. मार्केट प्राइस 120, फेस वैल्यू 10 रुपीज, दोनों का डिफरेंस 110, दैट्स योर सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 95 into 200 into 110, that gives you 20,90,000। चेक कीजिए, डेबिट क्रेडिट टैली होगा। 17, 10 plus 570 is 2280. 190 plus 2090 is also 2280. ईयर कब एंड होता है नॉर्मली? 31st मार्च को होगा ना। Employee compensation expense 5,70,000 loss. Where will you transfer it to your profit and loss account? So entry for the same will be profit and loss account debit 5,70,000 to employee compensation expense account 5,70,000. First part of the chapter, which is very simple, where shares were issued to the employees, amount was received, all transactions were completed in one accounting year, no carry forward. मैक्सिमम 2 एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करना है, एक एम्प्लॉइज ने शेयर्स खरीदा उसका, और दूसरा एट द एंड ऑफ द ईयर द एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Now comes the second part, wherein the company tells the employee आपको shares मिलेगा, but if you fulfill certain conditions, कुछ कंडीशंस अगर आप फुलफिल करोगे तो आपको शेयर्स मिलेगा, अदरवाइज शेयर्स नहीं मिलेगा. रिमेंबर, और ये कंडीशंस आपको फ्यूचर में फुलफिल करना है. ऐसे कंडीशंस को कहा जाता है वेस्टिंग कंडीशंस. व्हाट डू वी कॉल देम एज? वेस्टिंग कंडीशंस. Vesting means you will be entitled to.
but you will be entitled to only if you fulfill these conditions. अब ये वेस्टिंग कंडीशंस में बेसिकली दो कैटेगरीज होते हैं. एक होता है सर्विस कंडीशन. Service condition is very simple. Company tells the employee, don't leave the company for the next 3 years, next 4 years, next 2 years. कंपनी छोड़ के नहीं जाने का, तो उसके बाद आपको शेयर्स मिलेगा. रिमेंबर, so service condition very simple. Don't leave the company for the next few years. Remember, let's take a case where 3 years of सर्विस. दूसरा होता है परफॉर्मेंस कंडीशन. परफॉर्मेंस कंडीशन मींस एम्प्लॉयज को कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं. ओनली इफ यू अचीव दिस टारगेट्स आपको शेयर्स मिलेगा. अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते हो तो आपको शेयर्स नहीं मिलेगा. रिमेंबर, so this is called as performance condition. Now what can be these performance condition? Increase in sales हो सकता है. Sales increase होगा to a particular level तो आपको shares मिलेगा, otherwise not. Increase in net profit हो सकता है. Increase in EPS हो सकता है, that's earnings per share. Or you may have decrease in COP, cost of production. हर एम्प्लॉय को बताया जाता है कि आपको क्या टारगेट अचीव करना है. अगर आप अचीव करोगे तो शेयर्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. लेट्स टेक अ सिंपल केस ऑफ years of service. 3 years of service, that is your service condition के बेसिस पे कैसे आप अकाउंटिंग करोगे. लेट्स टेक अ सेम एग्जांपल. जो ऊपर दिए हुए फिगर्स थे वही लेते प्लस सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. नाउ vesting period is 3 years. और वो 3 years कब स्टार्ट होते हैं? ग्रांट डेट. व्हाट वाज द ग्रांट डेट? 1 अप्रैल 21. वहां से 3 साल कैलकुलेट कीजिए. तो 21 22, 22 23, 23 24 कब एंड होगा? 31 मार्च 24 को. 3 साल तक कंपनी छोड़ के नहीं जाओगे तो शेयर्स मिलेगा. बीच में छोड़ के चले जाओगे तो शेयर्स नहीं मिलेगा आपको. रिमेंबर, एक्सरसाइज पीरियड. कंपनी कहता है सिर्फ 1 ईयर. एक्सरसाइज पीरियड विल ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड एंड्स. एक्सरसाइज पीरियड कब स्टार्ट होगा? वेस्टिंग पीरियड एंड होने के बाद. नेक्स्ट 1 ईयर में आप कभी भी आइए पैसा लेके, आप शेयर्स लेके जाइए. अपने एग्जाम्पल में वेस्टिंग पीरियड कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 24. वहां से 1 साल, विच मींस इट विल बी फ्रॉम 1/4/24 टू 31 मार्च 25. years, number of employees left. ओरिजिनली कितने एम्प्लॉइज थे याद है? 100 एम्प्लॉइज थे. वेरी फर्स्ट ईयर 21 22 में 10 एम्प्लॉइज उसमें से छोड़ के चले गए. हमको शेयर्स नहीं चाहिए, हमको दूसरा जॉब मिला, अच्छा सैलरी मिल रहा है, हम वहां पे जा रहे हैं. नेक्स्ट ईयर इज 22 23. उसमें और 5 एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए. एंड थर्ड ईयर इज 23 24. उसमें और 3 एम्प्लॉइज कंपनी छोड़ के चले गए. ये लोग जो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं इनको कहा जाता है अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड. Unvested means they were not entitled. Lapsed means expired. जो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के गया 3 साल के अंदर, उसको शेयर्स देना जरूरी नहीं है. मतलब उसको फ्यूचर में हम शेयर्स नहीं देंगे ना, सो इट इज कॉल्ड एज अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड. और अगर उसको शेयर्स नहीं देंगे मतलब वो लॉस नहीं होगा, तो वो लॉस हम क्यों कैलकुलेट करेंगे? वी विल नॉट कैलकुलेट. So how many employees were there till the end of the 3 years?
100 minus 10 minus 5 minus 3. 82 employees are there till the end of the year now. So how many employees are eligible? Number of employees eligible is 82 employees now. कितने एम्प्लॉय शेयर्स खरीद सकते हैं? 82, जिन्होंने कंडीशंस फुलफिल किया. बट जरूरी थोड़ी है सब एम्प्लॉयज खरीदते हैं. लाइक प्रीवियस केस में भी 100 में से सिर्फ 95 ने खरीदा था. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज परचेसिंग द शेयर्स. लेट्स से सिर्फ 80 एम्प्लॉयज ने शेयर्स खरीदा. कितने खरीद सकते थे? 82. कितनों ने खरीदा? 80. मतलब 2 एम्प्लॉयज ने शेयर्स नहीं खरीदा. जिन्होंने शेयर्स नहीं खरीदा उसको कहा जाता है वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड. वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड. कितने एम्प्लॉयज का होगा? 2 एम्प्लॉयज. वेस्टेड मींस दे वर एंटाइटल्ड टू, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा. लैप्स्ड हो गया, एक्सपायर्ड हो गया. फ्यूचर में अगर वो पैसे लेके आएंगे 2 एम्प्लॉयज, हमको शेयर्स दो, कंपनी विल से सॉरी आपको नहीं मिलेगा. दिस इज इन द केस ऑफ वेस्टिंग कंडीशंस, जो फ्यूचर में एम्प्लॉय को फुलफिल करना है. Now over here जो भी कंपनी का लॉस होगा वो 1 साल का लॉस नहीं गिना जाएगा. ऊपर के केस में 21 साल का लॉस था बिकॉज एवरीथिंग हैपेंड इन 1 ईयर. यहाँ पे 1 साल नहीं चलने वाला है. 3 साल कंपनी में रहोगे तो शेयर्स मिलेगा. सो इन सच केसेस दैट लॉस हैज टू बी डिवाइडेड ओवर योर वेस्टिंग पीरियड. वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है तो लॉस 3 साल में आप राइट ऑफ करोगे. वेस्टिंग पीरियड अगर 2 साल का होगा तो लॉस आप 2 साल में एडजस्ट करोगे. So what is important over here is how do we recognize and calculate what is the expense to be recognized each year. वो important calculations होता है. Expense to be recognized each year. हर साल का आपका एक्सपेंस कितना है? फर्स्ट ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 22 को एंड होगा ना. फर्स्ट ईयर में कितने एम्प्लॉयज छोड़ के गए? 10 एम्प्लॉयज. आपके पास कितने एम्प्लॉयज थे ग्रांट डेट पे? 100. 100 में से फर्स्ट ईयर में कितने छोड़ के चले गए? 10. सो 100 माइनस 10 मतलब कितने एम्प्लॉयज आपके पास बचे? 90 एम्प्लॉयज. अब कंपनी पॉजिटिवली सोचती है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में कोई कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा. तो एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड थर्ड ईयर कंपनी के पास कितने एम्प्लॉयज होंगे? 90. कितने एम्प्लॉयज को शेयर्स देना पड़ेगा? 90. तो लॉस कितने एम्प्लॉयज की वजह से होगा? 90 एम्प्लॉयज की वजह से लॉस होगा. सो हाउ डू आई कैलकुलेट? इट विल बी 90 एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय ईच एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू 200 शेयर्स इनटू 30 रुपीस. कैलकुलेट कीजिए पहले. So it will be 90 multiplied by 200 into 30. That is your intrinsic value. Remember, answer आता है 5,40,000. बट ये लॉस 1 साल में का नहीं है. इसको डिवाइड करना है वेस्टिंग पीरियड में. और आपका वेस्टिंग पीरियड कितना है इस एग्जाम्पल में? 3 साल का है. 3 साल में डिवाइड करना है. करंट ईयर 1 साल हुआ. So into 1/3. So what is the proportionate expense for the current year? 1,80,000. करंट ईयर के पीएनएल में कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे? सिर्फ 180. पूरा 540 फर्स्ट ईयर के पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करने का, वो गलत होगा. आपको सर्विसेज 3 साल मिलेगा तो लॉस को 3 साल में डिवाइड करना है प्रोपोर्शनेटली. फर्स्ट ईयर्स एक्सपेंस. अब आएगा सेकेंड ईयर. फाइंड आउट सेकेंड ईयर में डिड एनी एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन. और आपको पता चला और 5 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए. विच मीन्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपके 100 माइनस 10 माइनस 5
अब आपके पास कितने एम्प्लॉयज बचे? सिर्फ 85 एम्प्लॉयज। पॉजिटिवली सोचने का, तीसरे साल में कोई छोड़ के नहीं जाएगा। तो एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपके पास कितने एम्प्लॉयज बचेंगे? 85। कितने एम्प्लॉयज को शेयर्स देना है? 85। सारे एम्प्लॉयज शेयर्स खरीदेंगे, पॉजिटिवली सोचने का। तो लॉस होगा ना 85 एम्प्लॉयज का। तो फाइंड आउट करो कितना लॉस होगा। सो इट विल बी 85 एम्प्लॉयज इनटू 200 शेयर्स इनटू 30 रुपीज। मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 85 इंटू 200 इंटू 30, दैट गिव्स मी 5,10,000। इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। ये लॉस को आपको राइट ऑफ करना है 3 साल में, जिसमें से कितने साल कंप्लीट हो गए? 2 साल कंप्लीट हो गए। मल्टीप्लाइड बाय 2/3 करेंगे ना। 2/3 समझा? 3 साल में राइट ऑफ करना है, उसमें से 2 साल कंप्लीट हो गए, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो टोटल कितना लॉस राइट ऑफ करना चाहिए? 3,40,000 2 साल में, जिसमें से आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड कर चुके थे? 180। तो अब सेकेंड ईयर में कितना रिकॉर्ड करोगे? सिर्फ 160। टोटल 2 साल में राइट ऑफ करना है 340, उसमें से फर्स्ट ईयर में आप 180 रिकॉर्ड कर चुके हो, तो आप कितना रिकॉर्ड करोगे? सिर्फ 160 रिकॉर्ड करोगे। नाउ कम्स द थर्ड ईयर। चेक करो, और कोई छोड़ के गए? यस, 3 लोग छोड़ के चले गए। तो अब आपके पास कितने एम्प्लॉयज बचे? 100 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 3, दैट इज 82 एम्प्लॉयज बचे हैं ना। एंड रिमेंबर, आपका वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ ईयर में कोई छोड़ के जाए या ना जाए इररेलेवेंट है। ये 82 एम्प्लॉयज आपके पास 3 साल थे, आपको इस 82 एम्प्लॉयज को शेयर्स देने हैं। तो लॉस हो सकता है सिर्फ 82 एम्प्लॉयज का ना। सो 82 एम्प्लॉयज इनटू 200 शेयर्स इनटू 30। तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा कंपनी को? मल्टीप्लाई द 3 फिगर्स। 4,92,000। इससे ज्यादा लॉस कंपनी को नहीं हो सकता है। अब ये लॉस 3 साल में राइट ऑफ करना था, उसमें से फर्स्ट प्लस सेकेंड ईयर मिला के हम ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं? 3,40,000 हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अब आप कितना रिकॉर्ड करोगे? सिर्फ बैलेंस 1,52,000। अब कितने एम्प्लॉयज खरीद सकते थे? 82, बट 82 एम्प्लॉयज ने खरीदा नहीं, सिर्फ 80 एम्प्लॉयज ने खरीदा। अगर आप ऊपर देखोगे, 2 एम्प्लॉयज ने शेयर्स नहीं खरीदा। वी कॉल इट एज वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। कितने एम्प्लॉयज? 2 एम्प्लॉयज। मतलब ये 2 एम्प्लॉयज की वजह से आपको लॉस नहीं हुआ। तो कितना लॉस नहीं हुआ आपको? वेरी सिंपल, 2 एम्प्लॉयज इंटू 200 शेयर्स इंटू 30 रुपीज कीजिए। 12,000 का आपको लॉस नहीं हुआ है। सोचा था वो एम्प्लॉयज खरीदेंगे, उन्होंने खरीदा नहीं, उनकी मर्जी कंपनी फोर्स नहीं करती है। Now, how do you recognize these expenses? What are the entries that you are supposed to record? फर्स्ट ईयर आपको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है 180, सेकेंड ईयर 160, थर्ड ईयर आपको रिकॉग्नाइज करना है 152। एंड ऑफ ईच ईयर जब आप एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हो तो एंट्री होता है एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। फर्स्ट ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। फर्स्ट ईयर का आपका एक्सपेंस कितना आया था? 1,80,000। सेकेंड ईयर का एक्सपेंस कितना आया? 160। थर्ड ईयर का एक्सपेंस कितना आया? 152 आया ना। यस। So recognize expense of each year. Employee compensation expense account debit 2. Outstanding ESOP account.
प्रोविजन किया है कि शायद अपने को लॉस होगा. दैट्स व्हाई वी क्रेडिटेड टू एन अकाउंट कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन अकाउंट. Second, transfer that expense to P&L. So profit and loss account debit to employee compensation expense account, same amounts 180, 160, 152. हर साल का एक्सपेंस आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. रिमेंबर, सो लॉजिकली देखोगे ना तो यहाँ पे 6 एंट्रीज है. ईच ईयर के 2 एंट्रीज, 3 साल के लिए 6 एंट्रीज हो गए. अब 80 एम्प्लॉइज ने शेयर्स खरीदा. एक्सरसाइज पीरियड वाज एंडिंग ऑन 31st मार्च 25. वो 80 एम्प्लॉइज पैसे लेके आए, हमको शेयर्स दीजिए. कंपनी को पैसा मिला, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. अमाउंट कैसे मिलेगा? It will be 80 employees multiplied by 200 shares into exercise price was 90 rupees per share. So 80 into 200 into 90. It gives me 14 lakhs 40,000. अब आपको लॉस हुआ लॉजिकली सिर्फ ये 80 एम्प्लॉइज के वजह से. 82 एम्प्लॉइज के वजह से लॉस नहीं हो रहा है. सो आउटस्टैंडिंग ESOP अकाउंट डेबिट. इसका अमाउंट आपको कैसे मिलेगा? इट विल बी 80 एम्प्लॉइज इंटू 200 शेयर्स इंटू 30 रुपीज. रिमेंबर, द आंसर इज 4,80,000. शेयर्स इश्यू किया तो शेयर कैपिटल विल इंक्रीज ना टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिफरेंस गोज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब कैपिटल का अमाउंट कैसे मिलेगा आपको? 80 एम्प्लॉइज इंटू 200 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू. 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू. एंड प्रीमियम कितना होगा? 80 इंटू 200 इंटू 110. Difference between the market price and the face value. So capital is 80 into 200 into 10. That gives me 1,60,000. And premium will be 17,60,000. 80 एम्प्लॉयज जिन्होंने शेयर्स खरीदा उनको शेयर्स इश्यू करो, और 2 एम्प्लॉयज जिन्होंने शेयर्स नहीं खरीदा, हमने सोचा था वो खरीदेंगे, हमने लॉस प्रोवाइड किया था, उन्होंने शेयर्स नहीं खरीदा, मतलब अपने को लॉस हुआ नहीं और फ्यूचर में होगा भी नहीं. तो जो प्रोविजन आपने वो 2 एम्प्लॉयज का किया था उसका क्या करोगे? यू विल ट्रांसफर इट टू जनरल रिजर्व. एंट्री फॉर द सेम विल बी आउटस्टैंडिंग ESOP अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट. और कैसे कैलकुलेट करोगे? वेरी सिंपल. 2 एम्प्लॉइज इनटू ईच एम्प्लॉय 200 शेयर्स इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू 30 rupees. So 2 into 200 into 30 gives you 12,000. Remember. ये आपने प्रोविजन किया लेकिन लॉस नहीं हुआ तो एक्सेस प्रोविजन हो गया, विच विल ट्रांसफर इट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, विच इज वन ऑफ योर रेवेन्यू रिजर्व विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस. सो ESOP में 2 पॉसिबिलिटी, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड इन 1 ईयर तो सिर्फ 2 एंट्रीज आएंगे. बट अगर फ्यूचर में कुछ कंडीशंस फुलफिल करना है जिसके बाद आपको शेयर्स मिलेगा, तो इन दैट केस जितने इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है उतने इयर्स आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है. एंड एक्सरसाइज पीरियड में जब एम्प्लॉय शेयर्स खरीदता है तो उसको शेयर्स इश्यू किया, उसका एंट्री रिकॉर्ड करना है आपको. सो दिस वाज योर रिवीजन अबाउट ESOP chapter. Now the next chapter that we are going to revise is amalgamation, absorption and external
reconstruction. These are three different chapters which are merged into one because the accounting treatment to be followed in case of amalgamation, absorption or external reconstruction remains the same, remember. This chapter is as per AS 14. For amalgamation, AS 14 is applicable, remember. Now let us look what do you mean by amalgamation, what do you mean by absorption, and what do you mean by external reconstruction. So first, amalgamation. In amalgamation, what happens is two existing companies which are doing a similar business in the same industry, we call it as, come together and they start a new company. It is called as amalgamation. Two existing companies. Let's take a very simple example. There is one company called as Pepsi. Competitor is Coke. Both are manufacturing similar products. Now let's take a case, अगर वो दोनों decide करते साथ में मिल जाते हैं, then they will come together and they will start a new company. Let us give a name to that new company as Pepco. पेप्सी आज की डेट में इंडिविजुअल कंपनी है, कोक कॉम्पिटिटर है, दोनों एग्जिस्टेंस में है एज ऑफ टुडे. बोथ आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. इफ दे डिसाइड टू कम टुगेदर and start a new company, पेप्को नाम का कंपनी आज की डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है, then in such cases this concept is called as amalgamation. पेप्सी एंड कोक ये दोनों कंपनीज को हम कहते हैं वेंडर कंपनीज और पेप्को को हम कहेंगे परचेसिंग कंपनी. Why do we call them as vendor company? Because they are selling their business to the new company. Who forms this new company? The shareholders of Pepsi and Coke will come together and they themselves will form this new company, remember. Whatever are the assets of Pepsi and Coke will be transferred to Pepco. Whatever products Pepsi and Coke were manufacturing till date, future में कौन manufacture करेगा? Pepco. Whoever are the employees of Pepsi and Coke as of today, in future will become the employees of Pepco. And whoever are the shareholders of Pepsi and Coke today, in future will become the shareholders of Pepco. Future में Pepsi बंद हो जाएगा, फ्यूचर में कोक बंद हो गया, फ्यूचर में दोनों कंपनीज एग्जिस्टेंस में नहीं होगा, फ्यूचर में एक ही कंपनी में एग्जिस्टेंस में होगा, एंड दैट इज पेप्को, रिमेंबर. This concept is called as amalgamation. Two or more existing companies. Interlevel पे दो काफी है. So two or more existing companies merge together, come together and form a new company. It's called as amalgamation, remember. Second concept is absorption. Absorption में क्या होता है? One existing company is taken over by another existing company, remember. दोनों कंपनीज एग्जिस्टेंस में डूइंग अ सिमिलर बिजनेस, यू कैन से एक दूसरे को टेक ओवर कर लेता है. Just an example, it happened a few years back. There was a company called as Idea and there was a company called as Vodafone. Now what happened is Idea got merged into Vodafone. Idea is now Vodafone Idea. उसको एक नाम दे दिया गया, remember. But now this has been gone into this. So this is what you call it as a vendor company and this is what you can call it as a purchasing company. All the assets and liabilities of Idea will now become the assets and liabilities of Vodafone. All the customers of Idea had become the customers of Vodafone. All the shareholders of Idea will become the shareholders of Vodafone. It's a simple case of absorption. One existing company, Idea,
taken over by another existing company called as Vodafone, remember. And third is external reconstruction. This normally happens in case of loss making units. अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है, then it converts into self at a new company with a new name. इसको कहा जाता है external reconstruction, remember. Let's take a case where there is an existing company called as X Limited. Already existing है, but it's a loss making company. So what the shareholders of this X Limited decide is, let us form a new company. Let us form a new company. वो खुद एक नया कंपनी फॉर्म करेंगे जिसको नाम दे देंगे Y Limited. And then what they will do is, all the assets and liabilities of X Limited will be transferred to Y Limited, but yes, at a revised value. All the employees of X Limited will become the employees of Y Limited. All the shareholders of X Limited will become the shareholders of Y Limited with a different stake. Number of shares वो कम कर देंगे. So that whatever are the losses, it automatically gets wiped off, remember. So X Limited was your existing company. It's called as a vendor company. Y Limited is a newly formed company. Y Limited existence में नहीं था. इसको किसने form किया? Shareholders of X Limited ने form किया. So this is your purchasing company. X Limited is now Y Limited. There is a chapter called as internal reconstruction. That also takes place of loss-making company. But there what happens is the name is not changed. New company is not formed. यहाँ पे नया company form कर रहे हैं. दोनों के concept same होते हैं. जो भी accumulated losses है write off कर दो. But there the company remains in existence without closing down that company. Here it by closing the existing company and forming a new company. So तीनों cases में अगर आप देखोगे तो there is at least one vendor company. तीनों cases में देखोगे तो there is at least one purchasing company. Vendor company is going to close down. Purchasing company is going to continue with the business in future. So as a chartered, your job is very simple. Close the books of the vendor company and record transactions in the books of the purchasing company, remember. And if asked for, you'll have to prepare the balance sheet of the purchasing company, vertical format, schedule 3 के हिसाब से, remember. Over here, this chapter, amalgamation, absorption, external reconstruction, तीनों का accounting treatment is the same, hence it is being merged together. एक vendor company, एक purchasing company. Now this chapter is basically divided into 3 parts. And that comprises of first, calculation of purchase consideration. और purchase consideration को short में कहा जाता है PC. Second is, how do we close the books of vendor company? And third is, how do we record transactions in the books of purchasing company, remember. You have to calculate PC, you have to close the books of vendor company, and you have to record transactions in the books of the purchasing company. One at a time, remember. So first, calculation of PC. Calculation of PC, purchase consideration. What is purchase consideration? Remember, the vendor company is selling its business to the purchasing company. Other way around, purchasing company vendor company का business खरीद रहा है.
When we say business is sold or business is purchased, business comprises of net assets. And how do we get net assets? It is assets minus liabilities. So whenever such amalgamation takes place, absorption takes place, remember बहुत सारे meetings होते हैं between the management of both the companies. They sit down, छोटे छोटे points पे discussions होता है, and the major discussion is what will be the value of assets and liabilities which the purchasing company is taking over from the vendor company. ये वैल्यूज म्यूचुअली अग्री किए जाते हैं, दोनों पार्टीज बैठेंगे, एक एक असेट का वैल्यूएशन, प्रोफेशनल वैल्यूअर्स को अपॉइंट किया जाएगा, उनसे प्राइस मांगा जाएगा, प्रॉपर वैल्यूएशन किया जाता है, एंड दे अराइव एट द नेट प्राइस which the purchasing company will pay to the vendor company's owners. Remember, इसको कहा जाता है purchase consideration. Please remember, it's a mutually agreed price. दोनों parties have mutually decided this price. We are not here to question, sir, इतने में क्यों बेचा, ज्यादा में क्यों नहीं बेचा, कम में क्यों नहीं बेचा? None of our business, remember. So how do we calculate the PC over here? There are two main methods of calculating PC. First method is net asset method, NA method. How do we calculate under net asset method? Very simple. The purchasing company and vendor company, when they are sitting, बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी लेके बैठेंगे, कौन कौन से असेट्स है आपके पास, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, सबके बुक वैल्यूज बैलेंस शीट में होंगे. बट व्हाइल टेकिंग ओवर, द परचेसिंग कंपनी विल डिसाइड, डू वी हैव टू टेक ओवर ऑल असेट्स और विल वी टेक ओवर ओनली सम ऑफ द असेट्स. रिमेंबर, इट्स अ म्यूचुअल अग्रीमेंट. अगर परचेसिंग कंपनी को लगता है कि ये फर्नीचर अपने काम का नहीं है, दिल से हमको ये फर्नीचर नहीं चाहिए. So it is not compulsory that if the purchasing company is taking over the vendor company's business, they should take over all assets and all liabilities. It's a mutually decided thing, remember. सो नेट एसेट मेथड में कौन कौन से एसेट्स टेक ओवर किए, कौन कौन से लायबिलिटीज टेक ओवर किया, कौन से वैल्यूज पे टेक ओवर किया है, इज इट टेकन ओवर एट रिवाइज्ड वैल्यू और बुक वैल्यू, उसके बेसिस पे पीसी कैलकुलेट होता है. सो ओवर हियर पीसी विल बी कैलकुलेटेड एज रिवाइज्ड वैल्यू और बुक वैल्यू of assets taken over. ATO का फुल फॉर्म इज assets taken over. इसमें से माइनस कीजिए रिवाइज्ड वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ liabilities taken over, और फिर जो बैलेंस आएगा, this is your PC. They will be giving us the revised value of the assets taken over. अगर रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिया है, then you have to take it over at book value, and the same applies for liabilities also. और कौन से assets take over किए, कौन से नहीं take over किए, clear instructions दिए जाते हैं. Suppose if they tell you in the question, business was taken over. If business is taken over, it means all assets and all liabilities of the vendor company are taken over by the purchasing company, remember. This is the most simplest way of calculating the PC, net asset method. If in the question they give you the goodwill of the vendor company, agreed value of goodwill of the vendor company, वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर नहीं हो रहा है, बट दे मस्ट हैव अपॉइंटेड सम वैल्यूअर, उसने वैल्यूएशन किया, एंड दे टेल यू गुडविल ऑफ द वेंडर कंपनी वाज अग्रीड एट ₹1 lakh. एग्जांपल, इट मींस यू हैव टू फॉलो नेट एसेट मेथड, क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है ना. इन सर्टेन क्वेश्चंस व्हाट विल हैपन इज दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल. गुडविल ऑफ वेंडर कंपनी इज टू बी वैल्यूड एट 3 years purchase of the average of last 5 years profits.
तो 5 साल का प्रॉफिट्स देंगे, उसका एवरेज करो, मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब पीसी कौन सा मेथड फॉलो करना है आपको? नेट एसेट मेथड, क्योंकि आपने गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट किया है, रिमेंबर। सो व्हेनेवर दे गिव यू द पीसी calculations, if goodwill value is given or you have to find out the value of goodwill, then PC has to be as per net asset method, remember. Now once this PC is decided, this is the price which the purchasing company has to pay to the owners, shareholders of vendor company. Once you have calculated PC under net asset method, second part over here is what we call it as discharge of PC. ये जो पीसी अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है, ये परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को कैसे पे करेंगे? एंड दिस कैन बी पेड इन 4 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। वन, इट कैन बी पेड इन कैश और बैंक, पैसा लो जाओ। सेकेंड, इट कैन बी पेड इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स, रिमेंबर। थर्ड, it may be in the form of preference shares, and fourth, it may be in the form of debentures. But when these shares or debentures are issued, they will be issued either at par or at premium. किसको डिस्चार्ज किया जाता है, किसको पे किया जाता है? This piece is discharged only to the shareholders of vendor company. वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये पैसा देना है, एंड दिस यू कैन गिव इन द फॉर्म ऑफ कैश, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, एंड शेयर्स और डिबेंचर्स विल बी इशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम, रिमेंबर. So that's the first method of calculating PC, net asset method. Very, very simple method, remember. The second method that we have over here is net payment method. Net payment method. Under net payment method, PC will be calculated on the basis of exchange ratio of shares. It will be calculated on the basis of exchange ratio of shares. Exchange ratio of shares. Simple concept. They will be giving you the balance sheet of vendor company. Equity share capital, shares of rupees 10 each, 10 CR. मतलब कितने shares होंगे? 1 crore shares होंगे ना? And they tell you 12% preference share capital, but preference shares तो 100 रुपए के होते हैं. Let's say it was 5 crores. तो कितने number of shares हो जाएंगे? Can I say it will be 5 lakh shares होंगे ना? 5 lakhs multiplied by 100 is 5 crores. Now what they tell you? Purchasing company takes over vendor company. First point. Equity shareholders of vendor company will receive 3 equity shares of purchasing company of rupees 10 each at rupees 25 for every 2 equity shares of vendor company. Equity shareholders of vendor company will receive 3 equity shares of purchasing company of rupees 10 each at rupees 25. So shares are issued at a premium for every 2 equity shares of vendor company. And second point, preference shareholders of vendor company will be paid at a
premium of 20% by issue of 10% preference shares of purchasing company. Preference shareholders of vendor company will be paid की जगह पे discharged word भी वो use कर सकते हैं at a premium of 20% by issue of 10% preference shares of purchasing company. Vendor company में preference shares was carrying a dividend of 12%, but purchasing company जो preference shares issue कर रही है उस पे rate of dividend है सिर्फ 10%. सर कम हो गया, none of our business. Mutual understanding, remember. Based on this, we are supposed to find out कि आपका PC कितना होगा. PC calculation is always only and only for shareholders. अगर परचेसिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को नए डिबेंचर्स दिए, पीसी कैलकुलेशंस में नहीं आएगा वो. अगर परचेसिंग कंपनी ने क्रेडिटर्स ऑफ वेंडर कंपनी को इक्विटी शेयर्स दिया सेटलमेंट में, पीसी कैलकुलेशंस में नहीं आएगा वो. रिमेंबर, PC calculation comprises payment made only to two parties of the vendor company, that is equity shareholders and preference shareholders. तीसरा calculations वहां पे नहीं होगा. Remember. So in this case, let's see the PC calculation. First, for equity shareholders. Equity shareholders will receive 3 equity shares for every 2 shares held, which means if they are holding in the old company 2 shares, न्यू कंपनी से उनको कितने शेयर्स मिल रहे हैं? 3 शेयर्स मिल रहे हैं. ओल्ड कंपनी में ऊपर बैलेंस शीट देखिए कितने शेयर्स है? 1 करोड़ शेयर्स है. तो न्यू कंपनी से कितने शेयर्स मिलेंगे? Simple cross multiply. Can I say it will be 1.5 crore shares? So how do we get the PC amount for this? Purchasing company will issue 1.5 crore equity shares of rupees 10 each, but at rupees 25. प्रीमियम पे इश्यू किया, 15 रुपया प्रीमियम है. So let's do the calculation. 1 crore 50 lakhs multiplied by 25. So that gives me 37.5 crores आएगा ना. It will be 37.5 crores, remember. Next, for preference shareholders. Preference shareholders will be paid at a premium of 20%. Preference share capital कितना था? 5 करोड़ का था. उनको सिर्फ 5 करोड़ नहीं पे करना है. They have to be paid at a premium of 20%. मतलब उनको 20% एक्स्ट्रा पैसा देना है. 5 crores plus 20%. 20% of 5 crores is 1 crore. So total कितना पैसा देना है preference shareholders को? 6 crore rupees पे करना है. और कैसे पे करोगे वो 6 crores? By issue of 10% preference shares of purchasing company. Have they said that the preference shares will be issued at a premium? The answer is no. Paid at a premium है, issued at a premium नहीं है. इसका मतलब है कि shares will be issued at par, remember. So now the question is, how many shares will they issue? एक share in the absence of any information, it's a preference shares will always be of 100 rupees, remember. कितना पे करना है आपको? 6 crores पे करना है. एक शेयर 100 rupees का. तो how many shares will you issue? 6 lakhs. 10% preference shares of rupees 100 each, fully paid. FP stands for fully paid. इन दोनों को आप ऐड कीजिए. 43.5 crores. This is how you calculate PC under net payment method.
एक्सचेंज रेशियो दिया जाएगा, पुरानी कंपनी में कितने शेयर्स है, नया कंपनी कितने शेयर्स देंगे, उस रेशियो के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी शेयर्स द परचेसिंग कंपनी विल इश्यू टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी. पार पे इश्यू किया, प्रीमियम पे इश्यू किया, you have to consider that, remember, and then on the basis of that you will get the PC amount. But remember, when you are paying to the vendor company shareholders, जरूरी नहीं कि उनको सिर्फ shares दिया जाएगा. You can give them cash, you can give them equity shares, you can give them preference shares, you can also give them debentures. Debentures issued to equity shareholders, debentures issued by the purchasing company to the preference shareholders of vendor company PC calculation में आएगा. But debentures issued to the debenture holders of vendor company PC statement में नहीं आएगा. PC is only the amount paid to shareholders of the company, remember. और कुछ भी PC calculation में नहीं आता है. So two methods of PC is there, net asset method, net payment method, and we have seen both of them. Next part is how do we close the books of vendor company. How do we close the books of vendor company? Now, to close the books of the vendor company, the institute might ask you to prepare necessary ledger accounts, or they will ask you to pass journal entries, remember. दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, either prepare ledger accounts or pass journal entries. If they ask you to prepare the accounts, कौन कौन से accounts बनाओगे? Ledger accounts. फिक्स्ड है, इससे ज्यादा नहीं होगा. सबसे पहले आप बनाओगे एक रियलाइजेशन अकाउंट. फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, रिमेंबर. सेकंड इज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. थर्ड इज preference shareholders account. Fourth is cash or bank account. Fifth is purchasing company account. Sixth, अगर आपको इक्विटी शेयर्स मिला एज अ पार्ट ऑफ पीसी, then equity shares in purchasing company account. Preference shares अगर आपको मिला है, तो it will be preference shares in purchasing company account. और अगर debentures issue किया to the shareholders of vendor company, very very important, डिबेंचर्स इश्यूड टू द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पीसी में नहीं आता है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. सिर्फ शेयर होल्डर्स को अगर डिबेंचर्स इश्यू किया तो आप बनाओगे यहां पे डिबेंचर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट. मैक्सिमम 8 अकाउंट्स, इससे ज्यादा नहीं. बट नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन में सारे 8 अकाउंट्स कभी नहीं आते हैं, रिमेंबर. नाउ वेंडर कंपनी इज सेलिंग इट्स बिजनेस. फ्यूचर में वेंडर कंपनी कंटिन्यू नहीं करेगा. वेंडर कंपनी इज गोइंग टू क्लोज डाउन इन फ्यूचर. सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू इज क्लोज द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी. And to close the books of the vendor company, we are supposed to follow certain steps. Steps to be followed, remember. In all, there are 6 steps, remember. First, record balance sheet items at book value.
Second step is record and receive PC. Third step is discharge assets and liabilities not taken over. Fourth is realization expenses. Fifth is preference shareholders, and sixth is closing step. Follow these 6 steps when you're closing the books of the vendor company, remember. Maximum 8 accounts and 6 steps are to be followed. Everything will fall in line. Now let us look at all the 6 steps one by one, remember. So first step, record balance sheet items at book value. Book value means balance sheet values. Now start from the liabilities side. Liabilities में सबसे पहले शेयर कैपिटल होता है. शेयर कैपिटल में 2 टाइप के कैपिटल हो सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. So first, preference share capital, you will transfer it to preference share holders account. Journal entry अगर पूछा तो preference share capital account debit to preference share holders account. So it will appear in my holders account on the credit side by preference share capital. Then equity share capital and all reserves and surplus, whether they are capital in nature, revenue in nature or statutory in nature, सारे reserves and surplus and equity share capital, you will transfer it to equity share holders account, remember. So preference share capital goes to preference shareholders, equity share capital and all reserves and surplus will go to equity share holders account. All other liabilities, फिर वो creditors हो सकता है, bank loan हो सकता है, it may be creditors, it may be debentures, it may be bills payable, everything, whether taken over or not, should be transferred to realization account. All other liabilities. Where will it go to your realization account? Entry will be liabilities account debit to realization account. So realization account credit side, we give the heading by sundry liabilities. Write down all the asset liabilities one by one, whether it's debentures, bank loan, creditors, bills payable, outstanding expenses and so on, irrespective whether they are taken over or not, remember. A liabilities side is over. Now come to the asset side. बहुत सारे assets हो सकते हैं ना. Land and building, plant and machinery, furniture will be there, investments will be there, stock will be there, debtors will be there, BR will be there. All assets, whether taken over or not, should be transferred to your realization account. So all assets, where will go? It will go to my realization account. Assets में एक exception है, cash and bank balance. This is where you have to be slightly careful, cash or bank balance. इसमें 2 possibilities है. First, if they tell you it is taken over, परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कहती है आपके पास जितना भी कैश बैलेंस है, जितना भी बैंक बैलेंस है, वो भी हमको चाहिए, वो भी हम टेक ओवर कर रहे हैं. If it is taken over, then it will go to my realization account along with other assets. And suppose if they say नहीं, हमको नहीं चाहिए, not taken over,
Purchasing company is telling the vendor company, we don't require your cash or bank balance. आप अपने पास रखिए, हमको वो नहीं चाहिए. Not taken over. Then it will come in my cash or bank account as to balance brought down. And finally, if there is any P&L debit balance or ME items. ME stands for miscellaneous expenditure item. Like you may have discount on issue of debentures, you may have preliminary expenses, you may have underwriting commission which were not written off. Deferred revenue in nature. इसको आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? Equity share holders account. So the first step is record balance sheet items at book value. हमने balance sheet के सारे items book value पे, book value means the balance sheet value, यहाँ पे revised value consider नहीं करने का. In the balance sheet of vendor company, land and building is given at let's say 1 crore. नीचे adjustment देंगे. Purchasing company took over the land and building of vendor company at 5 crores. तो 5 करोड़ नहीं रिकॉर्ड होगा यहाँ पे. बुक वैल्यू कितना था? 1 करोड़. 5 करोड़ तो अग्रीड वैल्यू है, वो यहाँ पे नहीं लेने का. ट्रांसफर करते वक्त आप क्या वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे? बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे. दिस इज योर स्टेप नंबर 1, रिकॉर्ड बैलेंस शीट आइटम्स एट बुक वैल्यू. स्टेप नंबर 2, रिकॉर्ड एंड रिसीव पीसी. पीसी तो हम पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना, आइदर नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड. नाउ यू रिकॉर्ड इट. इसमें 2 पॉइंट्स. फर्स्ट, रिकॉर्ड पीसी. Record PC means record that we have to receive money from the purchasing company. We have to receive means the vendor company. Remember, you're closing the books of the vendor companies. Think from the vendor company's point of view. Vendor company को पैसा लेना है from the purchasing company. Why? Because they have sold their net assets. Business बेचा, net assets बेचा. Assets minus liabilities have been sold. Remember. So entry क्या आएगा इसके लिए? Purchasing company account debit to realization account. This entry has to be recorded with the PC amount, remember. Why realization account? Because all assets and liabilities you already transferred it to realization account. So the net assets which were taken over is appearing in your realization account, remember. And second part is receive PC. कैसे मिलेगा PC? It can be received in cash, equity shares, preference shares or debentures of purchasing company. So entry क्या आएगा? ये सब आपको मिलेगा. So cash or bank or equity shares or preference shares or debentures in purchasing company account debit. किससे मिला? Purchasing company. So to purchasing company account. In any question चारों चीज नहीं मिलती है. कैश प्लस इक्विटी हो सकता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस हो सकता है, बट चारों नहीं आएंगे. रिमेंबर, नेट एसेट मेथड में डिस्चार्ज ऑफ पीसी आपने किया होगा. नेट पेमेंट मेथड में एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे आपने पीसी कैलकुलेट किया, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या मिला है आपको. सिर्फ वो आइटम्स आपको डेबिट करना है. सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप, रिकॉर्ड एंड रिसीव पीसी. First record and then receive. Second step is over. Third step, discharge assets and liabilities not taken over. Discharge assets and liabilities not taken over.
There is no rule which says that purchasing company has to take over all assets and all liabilities of the vendor company. ऐसा कोई rule नहीं है. So suppose if the purchasing company has not taken over furniture of the vendor company, तो vendor company उस furniture का करेगा क्या? कंपनी तो बंद हो रहा है. So that furniture will be sold out. बेच देंगे, पैसा मिलेगा to the vendor company. So entry will be cash or bank account debit to realization account. फर्नीचर बेचा तो टू फर्नीचर नहीं लिखने का, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज फर्नीचर इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इन द फर्स्ट स्टेप, रिमेंबर. और अगर कोई लायबिलिटी टेक ओवर नहीं किया, बिल्स पेएबल नॉट टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी, तो बिल्स पेएबल का सेटलमेंट किसको करना पड़ेगा? वेंडर कंपनी. दे विल हैव टू पे और ऑनर दैट बिल्स, रिमेंबर. So in that case, the entry for the same will be in the books of the vendor company as realization account debit to cash or bank account. Actual amount realized or paid. Please don't calculate profit or loss. It is automatically adjusted. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट पेड. Please don't calculate profit or loss. That's your third step. Discharge assets and liabilities not taken over. Fourth step is for expenses. We call it as realization expenses. If vendor company is closing down, naturally they will have to incur some expenses to close down the company. Paid in cash. Very, very simple entry. Entry will be realization account debit to cash or bank account. Realization account debit to cash or bank account. Fifth step is preference shareholders. Preference shareholders को give them whatever is received from the purchasing company. First of all, remember every question में preference share capital नहीं होता है. तो अगर preference share capital है ही नहीं वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में, तो ये स्टेप नहीं आएगा. अगर है तो हमने वो preference share capital preference share holders को ट्रांसफर किया था. Now give them whatever you have received from the purchasing company, which you have it in your PC calculation. उनके लिए कैश मिला तो उनको कैश दे दो, इक्विटी शेयर्स मिला तो इक्विटी शेयर्स दे दो. सो इट विल बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट. जो भी मिला दे दीजिए उनको. पीसी कैलकुलेट करते वक्त आपको ऑलरेडी पता चल चुका था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या क्या देना है. आफ्टर गिविंग देम क्लोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. अगर टैली हुआ अच्छी बात है, अगर टैली नहीं हुआ एंड इफ यू हैव अ डिफरेंस, दैट डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू योर realization account, remember. So step number 5 is amount paid to preference shareholders, settlement of preference shareholders. Sixth and last step is closing step. In that first you will close रियलाइजेशन अकाउंट. कभी टैली नहीं होगा. सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट. इट विल नेवर टैली. यू विल हैव सम प्रॉफिट और लॉस, और ये प्रॉफिट और लॉस किसको बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. सो यू ट्रांसफर इट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, रिमेंबर. नेक्स्ट,
whatever you have received from the for the equity shareholders from the purchasing company, कैश मिला कैश दे दो, शेयर्स मिला शेयर्स दे दो, डिबेंचर्स मिला डिबेंचर्स दे दो. So transfer cash, equity shares, preference shares or debentures in purchasing company to equity shareholders. Entry क्या होगा? Equity shareholders account debit to cash or bank, to equity shares, to preference shares or to debentures in purchasing company account. जो भी बैलेंस है कंपनी के पास इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो. दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, रिमेंबर. एंड देन व्हाट यू डू इज क्लोज equity shareholders account and it should tally. सबसे लास्ट में आप कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और वो टैली होना चाहिए. So when you close the books of the vendor company, 8 ledger accounts and 6 steps you are supposed to follow, remember. Next is books of purchasing company. Books of purchasing company. Purchasing company के books में वो ledger accounts नहीं पूछते हैं. If they ask us, they will ask us to pass journal entries in the books of purchasing company. And there are certain journal entries, but every entry, every question में नहीं होगा. So don't get afraid by the number of entries. Sir, इतने सारे entries every question में नहीं होते हैं. Please remember. These are pro forma. First is entry for business purchased. Purchasing company ने vendor company का business खरीदा, for which they are going to pay a price. किसको pay करेंगे? To the owners of the vendor company. So how do we pass the entry in the books of the purchasing company for business purchased? It was business purchase account debit to liquidator of vendor company account, and this entry has to be recorded with the PC amount. Business purchase account debit to liquidator of vendor company. Liquidator is a person who will carry out that liquidation proceedings of the vendor company. एक आदमी को अपॉइंट किया जाता है. He will receive the shares from the purchasing company and distribute to the shareholders of the vendor company. So it's called as to liquidators of vendor company. क्या amount आएगा? PC amount आएगा. Second entry, most important entry. Entry for assets and liabilities taken over. Purchasing company is taking over the assets and liabilities of vendor company. तो entry कैसे आएगा? Assets account debit. But assets account will be debited with which value? It will be debited with agreed value. The value agreed upon by both the parties, that is the purchasing company and vendor company. 2. Business purchase account. कौन सा अमाउंट? पीसी अमाउंट. फर्स्ट एंट्री में देखिए बिजनेस परचेज को डेबिट किया, सेकेंड एंट्री में बिजनेस परचेज क्रेडिट करते, कैंसल हो गया अगेंस्ट ईच अदर, यू कैन से. एंड 2, लायबिलिटीज अकाउंट. कौन सा वैल्यू? अग्रीड वैल्यू. लेकिन कौन सा लायबिलिटीज यहां पे रिकॉर्ड करोगे? ओनली दोज लायबिलिटीज विच आर टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी. अगर वेंडर कंपनी का बिल्स पेबल परचेसिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया था, तो यहां पे वो बिल्स पेबल रिकॉर्ड नहीं करोगे.
Now the most important thing. If the PC was as per net asset method, याद है ना दो methods, net asset and net payment. If the PC was as per net asset method, this entry will tally. No difference whatsoever. But if the PC was as per net payment method, net payment में हमने PC calculate किया था based on exchange ratio, then this entry will never tally. You will always have a balancing figure either on the debit side or you will have a balancing figure on the credit side. अगर PC net payment method है तो, अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो उसको हम कहते हैं गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट, और अगर डिफरेंस क्रेडिट में आता है इट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट. इट्स अ प्रॉफिट. डेबिट में मतलब हमने ज्यादा पैसा दिया. ज्यादा पैसा क्यों देंगे हम वेंडर कंपनी को? बिकॉज दे हैव अ नेम, रेप्यूटेशन, गुडविल. क्रेडिट में अगर डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि हमने कम पैसा दिया. कम पैसा दिया मतलब हमने बार्गेन अच्छा किया, मतलब अपने को प्रॉफिट हो गया ना. So that profit goes to capital reserve because this is a one time profit. रोज ये profit नहीं होता है, remember. So second entry is for assets and liabilities taken over. Third entry, discharge of PC. Discharge of PC means payment of PC. Purchasing company will pay the PC amount to the liquidator of vendor company, who will then in turn give it to the shareholders, remember. So how do we record the transaction in the books of the purchasing company? It is liquidator of vendor company account debit. फर्स्ट एंट्री में देखिए हमने क्रेडिट किया है लिक्विडेटर को, थर्ड एंट्री में हम डेबिट कर रहे हैं, कैंसिल हो गया. दिस विल बी विद द पीसी अमाउंट. कैश अगर दिया सो टू कैश बैंक अकाउंट आएगा. अगर शेयर्स इश्यू किया तो इट विल बी टू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और अगर डिबेंचर्स इश्यू किया तो इट विल बी टू डिबेंचर्स ना. And if they are issued at a premium, this will be recorded at face value, also called as nominal value. And if these shares or debentures are issued at a premium, then you will also have two securities premium account, remember. So discharge of PC means purchasing company is paying the amount to the shareholders of vendor company through the liquidator. या तो वो कैश में पे करेंगे या तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स. एंड इफ शेयर्स और डिबेंचर्स आर इश्यूड दे मे बी इश्यूड एट पार और एट प्रीमियम. प्रीमियम पे इश्यू किया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट करोगे. फोर्थ एंट्री ऑनवर्ड्स, फर्स्ट थ्री एंट्रीज सारे क्वेश्चंस में होंगे. फोर्थ एंट्री ऑनवर्ड्स डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन. एवरी क्वेश्चन में होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है. फोर्थ इज fresh issue of shares or debentures. अगर परचेसिंग कंपनी ने एक फ्रेश इश्यू किया शेयर्स का या डिबेंचर्स का टू द जनरल पब्लिक तो पैसा मिलेगा ना उनको. So normal entry for fresh issue, can I say it will be cash or bank account debit to equity share capital, to preference share capital or to debentures if issued at par. और अगर प्रीमियम पे इश्यू किया तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सिंपल ट्रांजैक्शन. फिफ्थ, expenses of purchasing company. If you recollect in two situations, amalgamation and external reconstruction, जो purchasing company है ना वो newly formed company है, that was not in existence prior to that.
तो अगर आप नया कंपनी फॉर्म करोगे तो कुछ तो खर्चा होगा ना, नेम अप्रूवल, मेमोरेंडम बनाओगे, आर्टिकल्स बनाओगे, एक्सपेंसेस विल बी इनकर्ड। कौन खर्चा कर रहा है? परचेसिंग, ये उनका खुद का एक्सपेंसेस है। सो एंट्री फॉर द सेम विल बी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। दे विल गिव यू द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हुआ तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और bank account. So expenses of purchasing company. Sixth, very important. Expenses of vendor company paid by purchasing company. Expenses of vendor company paid by purchasing company. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, परचेसिंग कंपनी इज टेलिंग द वेंडर कंपनी आपका जो भी खर्चा होगा ना, टेल अस, वी विल पे दैट एक्सपेंस। इन सच केसेस खुद का एक्सपेंस नहीं है परचेसिंग कंपनी का, किसी और का एक्सपेंस ये पे कर रहे हैं और ये पैसा वेंडर कंपनी से वापस नहीं मिलेगा परचेसिंग कंपनी को, रिमेंबर। So how do we pass the entry? Payment किया, पैसा गया, so to cash और बैंक अकाउंट। बट अगर आप कंसर्न एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करोगे तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? बिकॉज एक्सपेंस अगर अकाउंट डेबिट किया तो उनका रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाएगा, इट विल गो टू द पीएनएल ऑफ परचेसिंग कंपनी, जो गलत है। ये हर साल नहीं होने वाला है, दिस इज कैपिटल इन नेचर, एक ही बार हुआ। सो दिस एक्सपेंस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सेकेंड एंट्री बैलेंसिंग फिगर। सेकेंड एंट्री बैलेंसिंग फिगर, अगर सेकेंड एंट्री में गुडविल था तो यहां पे गुडविल डेबिट करोगे, अगर सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व था तो यहां पे कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा। सो इट विल बी गुडविल और capital reserve account debit. This is balancing figure of second entry. सर अगर बैलेंसिंग फिगर नहीं है, गुडविल भी नहीं है, कैपिटल रिजर्व भी नहीं है, तो क्या डेबिट करोगे आप? गुडविल डेबिट करोगे। कैपिटल रिजर्व कैनॉट हैव अ डेबिट बैलेंस। So expenses of vendor company paid by purchasing company, the entry is goodwill or capital reserve account debit to cash or bank. See the second journal entry. देखिए वहां पे balancing figure क्या था? According to that, account has to be used over here. And if there was no balancing figure, आप goodwill debit करोगे. This was your sixth entry. Seventh entry we call it as set off. Set off are basically intercompany dues. One company was supposed to pay the amount to another company. Either purchasing company was supposed to pay to vendor company or vendor company was supposed to pay to purchasing company before takeover. तो takeover के बाद तो दोनों एक ही हो गए. So where is the question of any amount to be paid or received in future? So this amount has to be set off, cancelled against each other. दो तीन possibilities हो सकते हैं यहाँ पे. One is debtors and creditors होंगे, bills receivable, bills payable होते हैं और loan हो सकता है. So in that case, how do you do it? Cancel करना है. So think, creditors have which balance? Credit. Bills payable have which balance? Credit. Loan taken account has which balance? Credit. Cancel करना है. Credit balance को cancel करने के लिए आप क्या करोगे? Debit. So entry will be creditors or bills payable all. Loan taken account debit to debtors or bills receivable or loan given account.
You will easily come to know looking at the question, is there a set of transaction between the two companies? Remember. Eighth, discharge of liabilities taken over. परचेसिंग कंपनी ने क्रेडिटर्स टेक ओवर किया वेंडर कंपनी का, बिल्स पेबल टेक ओवर किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टेक ओवर किया और अब उनको सेटल कर रहा है, उनका पेमेंट कर रहे हैं. तो वेरी सिंपल, इट विल बी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. अगर कैश में सेटल किया तो, अगर वो स्पेसिफिकली कहते हैं creditors were settled by issue of equity shares, then it will be liabilities account debit to equity share capital. And if those equity shares were issued at a premium, you will have to securities premium. So, or share capital account and to securities premium account. Remember, discharge of liabilities taken over. Ninth is discharge of debentures taken over. वेंडर कंपनी का डिबेंचर्स परचेसिंग कंपनी ने टेक ओवर कर दिया है, which they are discharging by issuing new debentures. पुराने कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को नया डिबेंचर्स अगर इश्यू कर रहा है purchasing company, then you are supposed to record the entry accordingly. Old debentures account debit. ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट मतलब पुराने वेंडर कंपनी के डिबेंचर्स को कितना पैसा देना था, अकॉर्डिंगली ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. हाउ डू दे पे दिस अमाउंट? बाय गिविंग देम कैश, बाय गिविंग देम इक्विटी शेयर्स. बट नॉर्मली डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? परचेसिंग कंपनी अपना ही डिबेंचर्स देती है. Can the purchasing company issue its debentures at a discount? The answer is yes. New debentures can be issued at a discount. Remember, shares cannot be issued at a discount as per the law, but debentures can be issued at a discount. अगर purchasing company ने debentures discount पे issue किया है, discount on debentures account debit to नए debentures issue किए, so to new debentures account, and if new debentures are issued at a premium to securities premium account. सर एक ही एंट्री में आपने डिस्काउंट भी डेबिट किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट किया. इट्स अ प्रोफोर्मा एंट्री. या तो डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, या पार पे होते हैं, या प्रीमियम पे होते हैं. सब एक साथ नहीं हो सकता है. So based on the information given in the question, you will pass this entry. And the last one is for stock reserve. Unrealized profit. Stock reserve is also called as unrealized profit. If the purchasing company had sold some goods to the vendor company before takeover, तो purchasing company ने goods बेचा होगा at a selling price, and selling price includes profit of the purchasing company. Purchasing company had sold goods to the vendor company before takeover. बेचोगे तो selling price पे बेचोगे, selling price पे बेचोगे तो उसमें profit included है of purchasing company. Now, if these goods were lying unsold with the vendor company, अगर वो closing stock में included है, तो वो goods वापस purchasing company के पास आ गया, because purchasing company has taken over the net assets. Purchasing company has taken over the stock of the vendor company. मतलब सोचिए, जो goods purchasing company ने बेचा था vendor company को at selling price, which includes profit, वो गुड्स वापस आ गया परचेसिंग कंपनी के पास, तो परचेसिंग कंपनी के बैलेंस शीट में दोज गुड्स विल बी अपीयरिंग एट सेलिंग प्राइस. गलत है. इट हैज टू बी शोन एट कॉस्ट प्राइस ना.
So that stock includes some unrealized profit. उस unrealized profit को आपको क्या करना है? Eliminate करना है. प्रॉफिट को निकाल दो. प्रॉफिट को निकाल दोगे तो स्टॉक का वैल्यू कम हो जाएगा ना. सो इट विल बी टू स्टॉक अकाउंट. तो डेबिट किसको करोगे? बैलेंसिंग फिगर ऑफ सेकेंड एंट्री, दैट इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट. Balancing figure of second entry. 10 एंट्रीज है. सबके सब एवरी क्वेश्चन में नहीं आते. फर्स्ट 3 फिक्स्ड है, बट द रिमेनिंग 7 एंट्रीज may not come. All will never come in any question, remember. This is how you record transactions in the books of purchasing company. और इसके बाद अगर उन्होंने पूछा आपको that prepare a balance sheet of the purchasing company, balance sheet vertical. Schedule 3 you are supposed to follow of the Companies Act while preparing the balance sheet. So this was your basics about amalgamation, absorption and external reconstruction. PC कैसे calculate होता है, how do we close the books of the vendor company, and how do we record transactions in the books of purchasing company. Now some extra points over here. Intrinsic value. Many times PC is calculated on the basis of intrinsic value of shares. Now what do you mean by intrinsic value of shares? Intrinsic value means the amount that the equity shareholder will receive per share if the company closes down tomorrow. अगर कंपनी कल बंद हो जाएगी तो इक्विटी शेयर होल्डर को पर शेयर कितना पैसा मिलेगा वापस, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज इंट्रिंसिक वैल्यू. अब यहां पे आपको पीसी कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज, रिमेंबर. सो हाउ डू वी फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू? लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. परचेसिंग कंपनी, वेंडर कंपनी. व्हाट इज द अजम्पशन? अगर कल कंपनी बंद हो गई तो शेयर होल्डर्स को पर शेयर कितना पैसा मिलेगा? बट उसके लिए आपको सबसे पहले तो सारे एसेट्स बेच दोगे ना. ऑल एसेट्स विल बी सोल्ड आउट. सो फर्स्ट रिवाइज्ड वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स. दोनों कंपनीज बंद हो रही है. ऐसा सोचने का, सर बंद तो सिर्फ वेंडर कंपनी होगा, परचेसिंग कंपनी तो बंद नहीं होगा. अग्रीड. सिर्फ सोचने का कि परचेसिंग कंपनी भी अगर बंद हो रही तो वो भी सारे एसेट्स बेच देंगे तो उनको कितना पैसा मिलेगा. अगर रिवाइज्ड वैल्यू दिया है तो रिवाइज्ड वैल्यू लेने का. अगर रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिया है इसका मतलब है कि इट विल बी सोल्ड एट बुक वैल्यू, रिमेंबर. इसमें से आप पहले माइनस करोगे रिवाइज्ड वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटीज. debentures, bank loan, creditors, outstanding expenses, bills payable, etc., etc., etc. जो भी external liabilities उनको पहले पैसा दे देने का from the amount realized. अब जो balance बचेगा that is what you call it as net assets for shareholders. This is called as net assets for शेयर होल्डर्स. अब शेयर होल्डर्स में दो होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस. तो पहले किसको पैसा दोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. तो इसमें से आप माइनस करोगे नाउ लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कब पे करोगे? अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो पेमेंट करना है. अगर कैपिटल ही नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स का तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना है. Now the balance that you get is what you call it as net assets for equity shareholders. इसको आप डिवाइड कीजिए बाय
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में दिया होगा. So what you will get is your intrinsic value of equity shares. इसके बेसिस पे पीसी कैलकुलेट होता है. PC will be calculated on the basis of intrinsic value. So let's take a hypothetical example. मान लो इनका net assets for equity shareholders is 100 crores. Number of shares was, let's say, 5 crores. So what will be the value per share? Net assets कितना है? 100 crores. Number of shares कितना है? 5 crores. So can I say the intrinsic value per share is 20 rupees. इनका net assets आता है, let's say, 45 crores. Number of shares दिया है 3 crores. So intrinsic value per share कितना होगा? 15 rupees होगा ना. परचेसिंग कंपनी का एक शेयर का वैल्यू है 20 रुपया. वेंडर कंपनी का एक शेयर का वैल्यू है 15 रुपया. अगर वेंडर कंपनी का शेयर होल्डर कहता है 1:1 का एक्सचेंज रेशियो अप्लाई कीजिए, हमारे एक शेयर के सामने आप हमको आपका एक शेयर दो, तो वेंडर कंपनी कहता है ये तो गलत है. आपके एक शेयर का वैल्यू 15 रुपया है, उसके सामने अगर हमने आपको एक शेयर दे दिया 20 रुपया वाला, तो चीटिंग होगा. वी आर गिविंग यू मोर मनी. सॉरी, नहीं मिलेगा. तो परचेसिंग कंपनी का ऑफर रखता है, आपके दो शेयर्स के सामने हम आपको एक शेयर देंगे. अगर आपके पास दो शेयर्स है तो दो शेयर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 रुपया हो जाएगा. और अगर परचेसिंग कंपनी ने सिर्फ एक शेयर दिया तो 20 रुपया वाला दिया, ये भी गलत हो गया. So now you have to find out, based on that intrinsic value, what will be the exchange ratio. So what you do is, इसको further simplify करो. 20:14 is as good as 4:3 ना. और फिर इसको क्या कीजिए आप? सिंपली इंटरचेंज कर दीजिए. 3 shares for every 4 shares. एक्सचेंज रेशियो क्या हो गया? परचेसिंग कंपनी विल इश्यू 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at ₹20. Intrinsic value is 20 of purchasing company for every 4 equity shares of vendor company. वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास अगर 4 शेयर्स है, उनके एक शेयर का वैल्यू कितना है? 15 रुपया. तो 4 शेयर्स का वैल्यू कितना होगा? 60 रुपीज होगा. उसके सामने परचेसिंग कंपनी उनको कितना देगी? सिर्फ 3 शेयर्स देगी. लेकिन परचेसिंग कंपनी का एक शेयर का वैल्यू कितना है? 20 रुपीज. 3 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 20, 60 रुपीज हुआ ना. वैल्यू वाइज सोचने का, वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स का 4 शेयर्स का वैल्यू है 60. इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी के 3 शेयर्स का वैल्यू हो जाएगा 60. नाउ दे आर एट पार. रिमेंबर, नो वन इज मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस. और पीसी उसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, विच विल बी इक्वल टू द नेट एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी. जस्ट चेक. ओल्ड कंपनी में 4 शेयर्स है, तो न्यू कंपनी, दैट इज योर परचेसिंग कंपनी. न्यू कंपनी इज परचेसिंग कंपनी, ओल्ड कंपनी इज वेंडर कंपनी. यहाँ पे कितने शेयर्स थे? 3 करोड़ शेयर्स है, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2.25 करोड़ शेयर्स. और एक शेयर क्या प्राइस पे इश्यू करेंगे? परचेसिंग कंपनी 20 रुपीज. सो इट विल बी 2.25 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at
₹10 का शेयर ₹20 पे इश्यू करेंगे बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेसिंग कंपनी इज 20। परचेसिंग कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी तो वो उनके इंट्रिंसिक वैल्यू पे इश्यू करेगी, वेंडर कंपनी के ₹15 के बेसिस पे इश्यू नहीं होता है। रिमेंबर, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 45 करोड़ आएगा ना। एंड चेक 45 करोड़ इज योर नेट असेट्स ऑफ वेंडर कंपनी ऑल्सो। कितना टेक ओवर किया नेट एसेट्स 45 करोड़, कितना पे कर रहे 45 करोड़ विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। सो इंट्रिंसिक वैल्यू मींस व्हाट? If the company closes down tomorrow, then each equity shareholder per equity share will receive how much is what we call it as intrinsic value, remember. And now the last part. Amalgamation as per AS 14. Now this amalgamation as per AS 14 is basically classified into two categories. Amalgamation in the nature of purchase, so we call it as purchase method, or amalgamation in the nature of merger, we call it as merger method, remember. Now, when will it be amalgamation in the nature of purchase method? When will it be amalgamation in the nature of merger method? तो कुछ conditions specify किए हैं. If all the conditions are fulfilled, then it will be treated as amalgamation in merger method, remember. अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, इट विल बी अमेलगमेशन एज पर परचेज मेथड, रिमेंबर. सो मर्जर मेथड के लिए कंडीशंस क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन, all assets and liabilities are to be taken over. सारे assets and liabilities of vendor company are to be taken over. अगर एक भी asset या एक भी liability purchasing company ने take over नहीं किया, it automatically becomes purchase method. Second, assets and liabilities are to be taken over at book value. रिवाइज्ड वैल्यू नहीं. असेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर किया, उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए. इट शुड बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन. If assets and liabilities are taken over at revised value to conform with uniform accounting policy, then it is allowed. Now, what do you mean by uniform accounting policy? Simple example. Suppose purchasing company for stock valuation is following FIFO method. AS2 में याद है दो methods है, एक FIFO method और एक है weighted average method. Purchasing company is doing valuation of stock as per FIFO method, जबकि vendor company was doing stock valuation on the basis of weighted average method. दोनों सही थे अपनी अपनी जगह पे. AS2 दोनों मेथड अलाउ करते हैं, so both of them were right. But then अगर परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी का स्टॉक टेक ओवर करता है और फिर वो अपने बैलेंस शीट में बताएगा, तो व्हाट विल हैपन इज stock of purchasing company is appearing at FIFO, but stock taken over from vendor company is appearing at weighted average method. So what the purchasing company does is at the time of takeover वो revalue करते हैं stock of vendor company as per FIFO method. अगर vendor company ने FIFO method follow किया होता तो क्या वैल्यू होता? वो वैल्यू पे वो स्टॉक टेक ओवर करेंगे टू कंफर्म विथ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी. अलाउड मतलब स्टॉक का वैल्यू चेंज किया, रिवाइज किया. क्यों रिवाइज किया? To conform with uniform accounting policy. It will still remain as merger method, not purchase method. So all assets and liabilities are to be taken over. They are taken over at book
value. Shareholders should be discharged in shares. Remember, PC includes amount paid only to shareholders. तो shareholders should be discharged. उनको payment करना है. कैसे payment करोगे? Only in the form of shares. However, cash can be paid only for fraction shares. अगर फ्रैक्शंस में आंसर आ रहा है तो शेयर्स हम फ्रैक्शंस में इशू नहीं कर सकते ना, तो फ्रैक्शन पोर्शन के लिए अगर कैश पे किया अलाउड, इट विल स्टिल रिमेन मर्जर मेथड. बट सपोज आपको पीसी कैलकुलेट करते वक्त ऐसा दिया गया, purchasing company will issue 2 shares for each share of vendor company plus cash of ₹30 per share. मतलब शेयर्स भी दिया, कैश भी दिया ना. This is not merger method. It automatically becomes purchase method. Remember. Fourth, more than 90% of shareholders should agree to amalgamation. Vendor company के more than 90% shareholders should agree to the scheme of amalgamation, which means they should be ready to become the shareholders of the purchasing company. More than 90%, remember. And finally, business of vendor company should be continued by purchasing company. Business of vendor company should be continued by purchasing company means what? Whatever products the vendor company was manufacturing earlier, in future those products will be manufactured by purchasing company. वेंडर कंपनी के प्रोडक्ट्स बंद नहीं हो जाएंगे. वो फ्यूचर में कौन मैन्युफैक्चर करेगा? परचेसिंग कंपनी, एंड सेल इट इन द मार्केट. रिमेंबर, 5 कंडीशंस, ऑल 5 अगर फुलफिल हुआ देन इट इज अमेलगमेशन एज पर मर्जर मेथड. अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज परचेस मेथड. In question paper, they might ask you, what are the conditions for merger method? Theory question, 5 marks. ये 5 conditions आपको लिखने, 5 marks मिलेंगे. If in the question they specifically mention follow merger method, तो ही आप merger method follow करोगे, otherwise not. Only in the question they specifically mention follow merger method, तो merger method follow करने का. Otherwise question always has to be solved as per purchase method. Remember, हमेशा कौन सा method follow करोगे? Purchase. Merger if they specifically mention. Any changes if you follow merger method? Slight change. Only in the books of the purchasing company. तो अगर आप मर्जर मेथड फॉलो करोगे, मर्जर मेथड अगर आप फॉलो करते हो, पीसी कैलकुलेशन नो चेंज. Which means जब आप PC कैलकुलेट कर रहे हो, प्लीज डोंट थिंक ये परचेस मेथड है या मर्जर मेथड है. दोनों में PC कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी
आप वेंडर कंपनी के बुक्स क्लोज करते हो ना, याद है 8 अकाउंट्स 6 स्टेप्स, अगेन नो चेंज, same रहेगा. So again, when you're closing the books of the vendor company, please don't try and find out, अरे are we following purchase method, are we following merger method, because कोई भी method हो, your treatment remains the same, remember. तो चेंज कहां पे होता है? चेंज होता है इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी. And I'll just specify the entries in which the change takes place. We will not discuss all the 10 entries once again. Purchase, merger. First entry दोनों में same. Business purchase account debit to liquidator of vendor company with the PC amount, remember. Second entry is for assets and liabilities taken over. So in the books of purchasing company, as per purchase method, entry will be asset account debit with agreed value, goodwill account debit, it will be a balancing figure if PC is as per net payment method. 2. Business purchase account, it will be with the PC amount. To liabilities account, it will be agreed value. And to capital reserve account, but that's your balancing figure. Balancing figure. अब मर्जर मेथड अगर आप फॉलो करते हो तो सेकेंड एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे? असेट्स अकाउंट डेबिट, कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू. But when you write assets account over here, including ME items, वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में अगर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स था तो वो यहां पे रिकॉर्ड होगा. वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था वो यहां पे रिकॉर्ड होगा. ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर. ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज. तो जितने भी असेट्स आपको वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाई देंगे इंक्लूडिंग एमी आइटम्स, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड ओवर हियर. कौन से वैल्यू पे? बुक value. 2. Business purchase account, कौन सा अमाउंट? PC अमाउंट. 2. Liabilities account, कौन से liabilities? All liabilities including your reserves and surplus but excluding P&L. जितने भी रिजर्व्स वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में दिख रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कॉपी करने का, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कॉपी कीजिए. ऑल रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व, सारे रिजर्व्स आप कॉपी करोगे. कौन से वैल्यू पे कॉपी करोगे? बुक वैल्यू पे. तो क्या आपने कॉपी नहीं किया फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द वेंडर कंपनी? सोचोगे तो शेयर कैपिटल आपने कॉपी नहीं किया एंड पीएनएल बैलेंस इफ एनी. क्या कॉपी नहीं किया आपने? शेयर कैपिटल, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस एंड पीएनएल बैलेंस. ये चीजें आप कॉपी नहीं करोगे. बट दिस एंट्री विल नेवर टैली. You will get a difference over here or you will get a difference on the credit side. Wherever you get the difference, it is profit and loss account. So अगर डेबिट में आया तो भी पीएनएल, क्रेडिट में आया तो भी पीएनएल. इसीलिए पीएनएल को पहले हमने कंसिडर नहीं किया because it will automatically get adjusted when you are taking the balancing figure, remember. So P&L will be the balancing figure in the second entry, no goodwill or capital reserve. It's a merger method.
All assets and liabilities are taken over. They are taken over at book value. Same business is going to be continued. Remember, the same shareholders are going to continue. Logically sochoge to same business is continued with a new name. That's why the AS says that this has to be adjusted in your revenue, profit or loss. So P&L में adjust कीजिए, not in your goodwill or capital reserve. Remember, major change under merger method is in the second entry. Remember, there under purchase method it was goodwill or capital reserve, and under merger method it will be profit and loss account, whether it is on the debit side or on the credit side. Remember, because of this, two more entries will be affected. Entry number 6 and 10. 6 was, if you see at the top, expenses of vendor company paid by purchasing company. Goodwill or capital reserve, balancing figure of the second entry. और 10th entry देखोगे तो stock reserve, again goodwill or capital reserve account debit, balancing figure of the second entry. तो यहाँ पे entry number 6 और 10 में difference क्या होगा? यहाँ पे आप क्या लोगे? Goodwill और कैपिटल रिजर्व लोगे, और यहां पे आप किस में एडजस्ट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग फिगर ऑफ द सेकेंड एंट्री. Purchase method में balancing figure is goodwill or capital reserve. So goodwill or capital reserve account debit. Here the balancing figure is P&L. So it will be profit and loss account debit. But in purchase method, there will be one new extra entry if the vendor company has any statutory reserves. Remember, if vendor company has statutory reserves. You all know statutory reserves example: development reserve, development rebate reserve, investment allowance reserve, export profit reserve, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व्स. ये सारे आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है. स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर टू बी मेंटेन्ड बाय कंपनीज बिकॉज they have received some benefit from the government. Remember, so that's your statutory reserves. अगर वेंडर कंपनी में बैलेंस शीट में स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है तो अंडर परचेज मेथड बुक्स ऑफ purchasing company entry number 11, and the entry will be amalgamation adjustment account debit to statutory reserve account. Amalgamation adjustment account debit to statutory reserve account. Vendor company is going to close down. These statutory reserves are, as per the law, required to be maintained for a specific number of years. तो जितने years बाकी है, कंप्लीट हुआ नहीं है, अब फ्यूचर में वेंडर कंपनी तो है नहीं, तो वो तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, तो वो तो मेंटेन नहीं करेंगे. तो किसको मेंटेन करना है? ये रिजर्व परचेसिंग कंपनी को मेंटेन करना है. सो परचेसिंग कंपनी के बैलेंस शीट में एक एक्स्ट्रा रिजर्व आ जाएगा नाउ इन द नेम ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व. लेकिन ये कितने साल तक रहेगा? ओनली द रिमेनिंग नंबर ऑफ इयर्स. एक बार वो पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद परचेसिंग कंपनी क्या करता है? इस रिजर्व को कैंसिल करता है बाय पासिंग अ रिवर्स एंट्री. वो आपको नहीं करना है अभी. You just have to pass this extra entry, 11th entry, if
purchase method is followed in the books of purchasing company, provided in the balance sheet of the vendor company there was a statutory reserve. अगर नहीं था वहां पे स्टैट्यूटरी रिजर्व तो ये 11th एंट्री नहीं आएगा अंडर परचेस मेथड. मर्जर मेथड में ये 11th एंट्री नहीं आएगा बिकॉज मर्जर मेथड में सेकेंड एंट्री देखोगे तो हमने ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑलरेडी क्रेडिट किया है टू लायबिलिटीज इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस. और वहां पे जब आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस कंसीडर किया तो ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस वेदर कैपिटल, रेवेन्यू और स्टैट्यूटरी इन नेचर. तो ऑलरेडी आप वो स्टैट्यूटरी रिजर्व वहां पे रिकॉर्ड कर चुके हो, फिर से नहीं रिकॉर्ड होगा. अमेलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व एंट्री फिर से नहीं रिकॉर्ड करना है अंडर मर्जर मेथड, रिमेंबर. So this is your revision of amalgamation, absorption and external reconstruction chapter.
The next chapter that we're going to revise is partnership accounts. In this chapter, there are 4 parts, remember. First is dissolution of a firm. Second is piecemeal distribution. Third is amalgamation of firms. And fourth is conversion. 4 parts are there: dissolution, piecemeal, amalgamation and conversion. Question will be asked on any one of them, remember. So first let's start with dissolution. In dissolution, the partners decide to close down the firm. Reason not relevant. So when you close down the firm, naturally the books of accounts also have to be closed. All the assets will be sold out, liabilities will be discharged, and then settlement will be done among the partners, remember. So in dissolution, what are the ledger accounts that you will have to prepare? Ledger accounts. One is you have to prepare a realization account. You'll prepare a realization account. Second is you'll prepare a partner's capital account. Third is you'll prepare a cash or बैंक अकाउंट. ये 3 अकाउंट्स तो every question में होगा. Besides these 3 accounts, you may have to prepare a partner's current account. You may have to prepare a partner's loan account, remember, if given in the question. What you can do is, current account balances, you can transfer it to capital account. So no need to prepare a current account also. Choice is yours. Either you prepare a current account or you don't prepare a current account. But loan account, if given separately, you will have to prepare a partner's loan account also. Now, to close the books of the firm, you are supposed to follow certain steps, remember. Steps to be followed. First step is what we call it as transfer step. Second is realization of assets. Third is discharge of liabilities. Fourth is realization expenses. Fifth is partner's loan. And sixth is closing step. 6 steps to be followed to close the books of the firm, remember. First step, transfer step. In the question on dissolution, they will be giving you the balance sheet of the firm which is closing down. Tallied balance sheet will be given. Your job is very simple. All balance sheet items have to be transferred to respective accounts at book value. Book value means balance sheet value. First,
Partners capital balance. Where will you transfer it to? Partners capital account. By balance brought down. All reserves you will distribute among partners in PSR. You will distribute among partners in PSR, remember. Partners loan will be transferred to partners loan account, if any, and all other liabilities. It may include your bank loan, creditors, bills payable, outstanding expenses. Where will you transfer it? To your realization account. It has to be at book value, balance sheet values, remember. Liability side is over. Now go to the asset side. Asset side, you may have a P&L debit balance, accumulated loss. This you will distribute among partners in PSR. Distribute among partners in PSR. Cash or bank balance. Where will you record it? In your cash or bank account. S2 balance brought down. And all other assets, whether it's land and building, plant and machinery, furniture, investments, stock, debtors, everything else. Where will you transfer it? To your realization account. All assets and liabilities, all balance sheet items should be transferred at book value, step number 1, remember. Step number 2, disposal of assets. फर्म वन बाय वन सारे assets बेचने लगेंगे. अब disposal में there are 3 possibilities, remember. First possibility, sold for cash. पैसा मिलेगा firm को. Entry will be very simple. Cash or bank account debit to realization account with the selling price. Don't calculate profit or loss. उसको आप separately record नहीं करोगे. Remember that. Second possibility is asset taken over by a partner. कोई partner asset take over करता है. In that case, the entry for the same will be partners capital account debit to realization account, and this will be recorded with your agreed value, remember. The price decided between the partner and the firm. Again, please don't compare the profit or loss. It's automatically recorded, remember. And the third possibility is asset utilized to settle a liability. Asset is utilized to settle a liability. For example, creditors were paid by, instead of giving them cash, we gave them a bills receivable. An asset, BR, is utilized to settle a liability, creditors. Creditors were paid by giving them bills receivable. Just an example, in that case, in the books of the firm, it will be no entry.
no entry has to be recorded because both the items are already appearing in your realization account. Normally the entry would have been liability account debit to asset account, but now as both of them are appearing realization, you have already transferred debt to realization the very first step. The entry will be realization to realization. That doesn't make any sense now. So no journal entry for the same. Step number 2 is done. Step number 3, discharge of liabilities. Similar to your assets, यहाँ पे भी 3 alternatives होंगे. First, paid in cash. Liabilities settled, paid in cash. Entry for the same will be realization account debit to cash or bank account. Second possibility, liability taken over by a partner. पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है. पार्टनर कहता है मैं फ्यूचर में उनको पैसा दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. So firm will not pay cash right now. In future, the partner will settle that particular liability. Entry for the same will be realization account debit to concerned partner's capital account. And the third possibility is liability discharged by giving an asset. थोड़ी देर पहले देखा ना, creditors settled by giving bills receivable. Answer is no entry. Step number 3 is done. Step number 4, realization expenses. In that sub possibility 1, paid and borne by the firm. किसने एक्सपेंसेस पे किया? फर्म ने एक्सपेंसेस पे किया. कौन बेयर करेगा एक्सपेंसेस? फर्म बेयर करेगा एक्सपेंसेस. रिमेंबर, in that case a very simple entry, expense of the firm, fame paid by the firm. So realization account debit to cash or bank account. But in certain cases what happens is it is expense of the firm but paid by the partner. Remember, partner ने expense pay किया on behalf of the firm. Partner paid expense on behalf of the firm. So what will be the entry? It will be realization account debit. फर्म का एक्सपेंस है, सो रियलाइजेशन डेबिट, बट टू कैश और बैंक नहीं आएगा, पार्टनर ने पे किया है. सो इट विल बी टू पार्टनर्स capital account. To partners capital account, remember. That is your step number 4. Step number 5 is partners loan. Partners loan will be either settled in cash or it will be taken over by a particular partner. So in that case, the entry will be partners loan account debit to partners capital account if taken over by a partner, or it will be to cash or bank account if it is settled in cash. Immediately after you have paid partners loan, close partners loan account. अगर tally हुआ, well and good. If it doesn't tally, difference you will transfer it to realization account, remember.
And then comes the last step, closing step. सबसे पहले क्या क्लोज करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट. It will never tally. You will always have some profit or loss. It has to be distributed among all partners. Among all partners in PSR, profit sharing ratio. Next, close partners capital account and the balance transfer to cash or bank account. And finally, close cash or bank account and it should tally. Very simple concept for dissolution of a firm. But this was if all partners are solvent. Normally, if one of the partner becomes insolvent, the firm is dissolved. The firm is closed down if one of the partner becomes insolvent. In case of insolvency of a partner, you will always have a concept called as deficiency. Deficiency is the amount which the firm will not receive from the insolvent partner. इंसॉल्वेंट पार्टनर से पैसा लेना होता है, नहीं मिलेगा because वो इंसॉल्वेंट हो गए है ना. So this concept is called as deficiency. This is a loss to the firm which has to be borne by the remaining solvent partners. और वो कैसे bear करेंगे, that is what you are supposed to learn now. Same dissolution only, but now you will have insolvency of a partner. Partner is declared insolvent. In that case, you have to follow Garner versus Murray rule. Garner versus Murray rule. The accounts to be maintained remains the same. रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैश और बैंक अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स लोन, कुछ भी चेंज नहीं होगा वहां पे. The steps to be followed also remains same. Transfer step, disposal of assets, discharge of liabilities, expenses, partners loan. First 5 steps में कुछ भी change नहीं है. Sixth step, closing step. इसमें सबसे पहले हम क्या क्लोज करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट. इट विल नेवर टैली. You will have some difference, profit or loss. Distribute among all partners in your PSR, remember. ये हो जाने के बाद next, when you close your partner's capital account, you should first close only the insolvent partners column. क्या क्लोज करोगे? सिर्फ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कॉलम. एंड इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कॉलम जब क्लोज करोगे, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑलवेज फर्स्ट फाइंड आउट टोटल ऑफ डेबिट. It will always be more than the total of credit. Insolvent है, his account should have a debit balance representing amount receivable from the partner. इसमें से आप माइनस कीजिए total of credit. So जो balance आएगा, that is what we call it as amount receivable. इतना पैसा इंसॉल्वेंट पार्टनर से लेना है. नाउ चेक आउट,
is the insolvent partner able to pay something? जरूरी नहीं है कि वो पैसा दे पाएगा. He may be able to pay a part of the amount. He may not be able to pay anything. Remember, अगर कुछ पैसा मिला from the partner, insolvent partner, तो you minus amount received. तो जो बैलेंस आएगा, that is what we call it as deficiency. The balance that we have is what we call it as deficiency. अब ये deficiency को आपको distribute करना है as per Garner versus Murray rule. Now Garner versus Murray rule क्या कहता है? Garner versus Murray rule says, I'll just write it as G versus M, that there are two ways of distributing these losses. One is, you have to first find out, are the partners following fixed capital method or fluctuating capital method? अगर वो fixed capital method follow कर रहे हैं, how will you come to know कि वो fixed capital method follow कर रहे हैं कि नहीं? Very simple. Question में firm का balance sheet देंगे, उस बैलेंस शीट में देखने का सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस दिया है और कैपिटल प्लस करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए. अगर कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट के बैलेंसेस, दोनों बैलेंसेस आपके बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हैं, इट मींस दे आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड. अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, deficiency has to be distributed in the ratio of fixed capital balances. तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनका फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस कितना है वो फाइंड आउट करो, उस रेशियो में आप डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे. डेफिशिएंसी के लिए जर्नल एंट्री इज वेरी सिंपल. रिमेंबर, इट इज सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू insolvent partners capital account. Solvent partner to insolvent partners capital account. This is under fixed capital method. But suppose if they are following fluctuating capital method. Fluctuating, वो कैसे पता चलेगा? अगर बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, नो करंट अकाउंट इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, दैट मींस दे आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. हाउ डू वी फाइंड आउट द balances under fluctuating capital method? Remember, partners A, B, solvent partners. क्या लोगे आप पहले? कैपिटल बैलेंसेस कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट में से. ये दोनों आपके सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं. इसमें आप ऐड करोगे शेयर इन रिजर्व्स. अगर रिजर्व्स है तो उसका जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें ए का शेयर कितना, बी का शेयर कितना, वो आप क्या करोगे? ऐड करोगे. रिमेंबर, यू विल माइनस शेयर इन P&L debit balance, that is your accumulated loss. वो भी आप क्या करोगे? माइनस करोगे. रिमेंबर, एंड यू विल प्लस और माइनस share in P&L adjustment account. P&L adjustment account will be on account of errors which took place in the past. अगर पास्ट में कुछ एरर हुआ है, गलती हुआ है, उसको रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करने में अगर कुछ P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस आता है, इट मे बी अ पॉजिटिव बैलेंस, इट मे बी अ नेगेटिव बैलेंस, दैट हैज टू बी कंसिडर्ड ओवर हियर. और ये प्लस माइनस करने के बाद जो कैपिटल बैलेंसेस आएगा, इस रेशियो में
deficiency has to be distributed of the insolvent partner, remember. So deficiency in this ratio, while calculating this ratio, remember you will not consider any transactions relating or that took place at the time of dissolution. अगर किसी पार्टनर ने कोई असेट टेक ओवर किया, आप कंसिडर नहीं करोगे. अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी टेक ओवर किया, कंसिडर नहीं करोगे. रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस अगर कुछ भी है तो उसका भी शेयर आप कंसिडर नहीं करोगे. रिमेंबर दैट. This has to be the capital balance as on the date of dissolution. जिस दिन डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ उस दिन क्या कैपिटल बैलेंस है उसके बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे. रिमेंबर, सो व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस, नो ट्रांजैक्शंस दैट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन should be considered while calculating your capital balances over here. So Garner versus Murray rule has to be followed for distributing the deficiency of the insolvent partner. Entry is very simple. Solvent partner's capital account debit to insolvent partner's capital account. After that, what will happen is insolvent partner's column will tally. सॉल्वेंट पार्टनर्स का कैपिटल कॉलम टैली नहीं होगा. डिफरेंस ट्रांसफर इट टू कैश बैंक एंड देन क्लोज कैश बैंक, इट विल टैली. रिमेंबर, सो दिस वाज रिवीजन रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन पार्ट ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर. 4 पार्ट्स है: डिसोल्यूशन, पीसमिल, अमैल्गमेशन एंड कन्वर्जन. डिसोल्यूशन इज ओवर. नाउ वी विल स्टार्ट विद द पीसमिल. Now, piecemeal. Now, in piecemeal, what happens is, piecemeal is also dissolution of a firm only. But under dissolution, the simple assumption was everything was completed in one single day. बैलेंस शीट दिया 31 मार्च का, पार्टनर्स ने डिसाइड किया फर्म डिसॉल्व करने का 31 मार्च को और फर्म डिसॉल्व भी कर दिया 31 मार्च को. एक दिन में सारे असेट्स बेच दिए, पूरा पैसा मिल गया. सेम डे सारे लायबिलिटीज भी पे कर दिया और कैपिटल्स भी सेटल कर दिया. प्रैक्टिकली इलॉजिकल. हाउ कैन एवरीथिंग हैपन इन वन सिंगल डे? नहीं होता है. दिस इज वेयर पीसमिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. Under piecemeal chapter, what happens is it's dissolution, but all assets will not be realized in one day. All liabilities will not be paid in one day, remember. Assets will be realized in parts, in installments over a period of time. And therefore, the liabilities will also have to be paid in parts over a period of time, remember. Assets installments में realized होगा तो liabilities भी installment में pay करेंगे. This concept of realizing assets in installments and payment of liabilities in installment is what we call it as piecemeal distribution of cash. Piecemeal distribution of cash. So first of all, remember this chapter doesn't have any ledger accounts. It doesn't have any journal entries. What you have to prepare is a statement of piecemeal distribution of cash in a columnar form. Similar to your petty cash book which you have studied. So how do we prepare a statement? Statement of piecemeal distribution of cash. एक डेट कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर्स कॉलम होता है और एक कैश कॉलम. ये 3 कॉलम फिक्स्ड है. एक्स्ट्रा कॉलम्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लायबिलिटीज दैट यू हैव. जितनी लायबिलिटीज उतनी कॉलम्स बनाओगे. Which means every question में number of liabilities different होंगे तो number of columns भी different होगा. A few examples.
सपोज बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन का एक कॉलम आएगा। सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो उसका एक कॉलम आएगा ना। सपोज क्रेडिटर्स है तो उसका एक कॉलम आएगा ना। सपोज पार्टनर्स लोन है तो पार्टनर्स लोन का कॉलम आएगा। एंड लेट्स से देयर वर 3 पार्टनर्स ए बी सी, तो उसका कॉलम होगा ना सेपरेट। जितने लायबिलिटीज उतने कॉलम्स। So this number of columns will differ from question to question. But yes, date particulars cash fixed है। वो 3 columns तो सब questions में होंगे। Now in piecemeal what the partners will do is they first try to sell the assets. But remember assets जब बेचने जाएंगे तो all assets will not be sold on one day. आज कुछ एसेट बेचा, एक महीने के बाद कुछ एसेट बेचा एंड सो ऑन। बट एसेट्स बेचने के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर टू बी फॉलोड बाय द फर्म कि पहले कौन सा एसेट बेचे। Should we first sell land and building or should we first sell plant and machinery or should we first sell investments or stock? इसका कोई ऑर्डर नहीं है। जो आप पहले बेच सकते हो बेच दो। डोंट गो बाय द ऑर्डर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट कि पहले लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है तो मैं पहले लैंड एंड बिल्डिंग ही बेचूंगा, मैं दूसरा एसेट नहीं बेचूंगा। ऐसा कोई रूल नहीं है। सो फर्स्ट यू sell off the assets in whatever order you realize it, remember. But when you pay the liabilities, you have to follow a specific order. Partners cannot pay amount first to whomsoever they want to pay first, remember. एक specific order follow किया जाता है which is called as legal order of लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट। इसमें सबसे पहले क्या पे किया जाता है? एक्सपेंसेस। सो दे विल बी गिविंग यू द एक्सपेंसेस। सबसे पहले एक्सपेंसेस पे करने का, रिमेंबर। एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो पैसा बचेगा ना, दैट विल बी यूज्ड टू पे ऑफ योर अदर लायबिलिटीज। In certain cases what happens is expenses immediately first day पे नहीं होता है, but partners estimate करते हैं कि फ्यूचर में 10,000 का खर्चा होगा। ये estimate partners ने किया on the very first day, remember. In that case what you should do is आपके पास जो भी कैश बैलेंस होगा उसमें से 10,000 रुपए आप साइड में निकाल के रख दोगे कि फ्यूचर में आगे जाके मुझे ये एक्सपेंस पे करना है। सो फर्स्ट एक्सपेंसेस। सेकेंड लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज secured liability. Secured liabilities are those liabilities for which a specific asset was given as a security. बैंक से लोन लिया, सिक्योरिटी में प्रीमाइसेस दिया, मतलब प्रीमाइसेस इज गिवन एज अ सिक्योरिटी टू द बैंकर्स। तो बैंक लोन पे करने के लिए आप क्या यूज करोगे? वो प्रीमाइसेस करोगे। प्रीमाइसेस को बेच दो। प्रीमाइसेस बेच के जो पैसा आएगा उसमें से सबसे पहले आप किसको पैसा दोगे? बैंक को पैसा दोगे। सिक्योर्ड लायबिलिटी पूरा कर दो। If the amount realized from premises is more than the bank loan amount, तो पूरा पैसा नहीं दे देने का बैंकर्स को, सिर्फ जितना लोन है उतना रीपे कर दो। बैलेंस कैश पार्टनर्स कैन यूज फॉर पेमेंट ऑफ अदर लायबिलिटीज, रिमेंबर। However, if the amount realized from the sale of the security is less than the liability amount, तो जितना पैसा मिला दे दो, लेकिन लायबिलिटी पूरा सेटल नहीं हुआ बिकॉज अमाउंट रियलाइज्ड वाज लेस, तो जो भी बैलेंस लायबिलिटी बचा है दैट विल नाउ बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड, रिमेंबर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिल द टाइम द एसेट गिवन एज अ सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड, हमने बैंक से लोन लिया, प्रीमाइसेस हमने सिक्योरिटी में दिया, जब तक हम प्रीमाइसेस बेच नहीं पाते हैं। बट प्रीमाइसेस बेचने के पहले आपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दिया, पैसा मिलेगा।
प्रीमाइसेस बेचने के पहले आपने स्टॉक बेच दिया, पैसा मिला ना. Till the time the premises, that is the asset given as a security, is realized, secured liability is treated as unsecured and it has to be paid proportionately along with other unsecured liabilities. तो सपोज आपने प्रीमाइसेस नहीं बेचा, क्या बेचा आपने? स्टॉक बेचा, पैसा मिला. तो इस स्टॉक में से आप क्या पे करोगे? बैंक का लोन पे करोगे, प्लस इफ यू हैव अदर अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज. अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज में क्या होता है? क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेएबल होते हैं, उनको भी पेमेंट करने का proportionately simultaneously. So secured liabilities are those liabilities for which a specific asset was given as a security, remember. Third in order is preferential liability. Very simple. Preferential liabilities are always unsecured, but they have a preference. They have to be paid first before you pay your other unsecured liabilities. तो ये प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज में कौन कौन से लायबिलिटीज आते हैं? वन इज आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, दैट इज टैक्सेस पेएबल टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को जो टैक्सेस पे करना है, that will be treated as your preferential liability. And second is outstanding salaries and wages, that is also treated as an preferential liability. No asset is given as a security to them, they are always unsecured. However, before you pay your other unsecured liabilities, like creditors are unsecured, bills payable is unsecured, but उनको पे करने के पहले आप पे करोगे outstanding taxes and outstanding salaries and wages, remember. इनको पे करने के बाद आएगा unsecured liabilities, that is your creditors, bills payable and so on. और अगर एक से ज्यादा unsecured liabilities है तो सभी unsecured liabilities को proportionately पे करने का simultaneously. Fifth is partners loan. By the time you have paid all your unsecured liabilities, सारे external liabilities आपने पे कर दिया, अब क्या बचेगा? सिर्फ इंटरनल लायबिलिटीज एंड पार्टनर्स कैपिटल. तो पहले आप क्या पे करोगे? इंटरनल लायबिलिटी, दैट इज पार्टनर्स लोन, और फाइनली आप पे करोगे पार्टनर्स कैपिटल. लास्ट में पार्टनर्स को पैसा दिया जाता है, रिमेंबर. What is important is how do you pay the partners towards their capital contribution. That is what you have to understand now. First 5 steps remains the same, you can say. Now, payment to partners. अब partners को पे करने के लिए there are two methods over here. One is called as surplus capital method, also known as excess capital method, also known as proportionate capital method, also known as highest relative capital method. और दूसरा मेथड है called as maximum loss method, which is also called as notional loss method, remember. Two methods. क्वेश्चन में स्पेसिफाई करते हैं आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है.
highest relative capital method, yeah, maximum loss method or notional loss method. It will always be specified. Remember, whichever method you follow, the format remains the same. The legal order remains the same. Till the time you pay your partner's loan, nothing changes. Changes kab aayega? Only when you are paying to partners towards their capital contribution. That time you have to think what will be the method and how are you going to pay them, whom are you going to pay them first, and so on. So let's first discuss surplus capital method. Let's take a very simple example. There are three partners, A, B, and C. First, capital balances. Let's say A ka capital balance is 10 lakhs, B ka it is 6 lakhs, and C ka it is, let's say, 5 lakhs. And they will be giving you PSR. Let's say the PSR is 5:3:2. 5:3:2. Now, are the capital balances and the PSR in the same ratio? The answer is no. 10:6:5 is the capital ratio और PSR is 5:3:2. Same ratio नहीं है. So now the question arises, किसको पहले पैसा देना चाहिए? जिस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है एज कंपेयर टू अदर पार्टनर्स, उसको वो एक्सेस अमाउंट पहले रिटर्न कर दीजिए. उस पार्टनर को आप उसका एक्सेस कैपिटल रिटर्न करोगे. सिर्फ एक्सेस, टोटल कैपिटल पहले रिटर्न नहीं करने का. रिमेंबर, लेट्स मेक अ स्लाइट चेंज. इंस्टेड ऑफ 6, this take it as 7. Now how do we do it? Three partners, A, B, C. This is your solution. सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करोगे? कैपिटल balances. We call it as point A. कितना? 10 lakhs, 7 lakhs, 5 lakhs. B point. Write down PSR 5:3:2. C point. Capital balance divide by PSR. 10 lakhs को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 lakhs. 7 lakhs को 3 से डिवाइड करोगे तो it comes to how much? 7 divided by 3. It gives me 2.33 recurring lakhs. And 5 lakhs को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 lakhs आएगा ना. How do you interpret this? For every share of profit, A has contributed 2 lakhs as capital. For every share of profit, B has contributed 2.33 lakhs as capital. And C has contributed 2.5 lakhs for every share of profit. तीनों का सेम नहीं है ना, कभी नहीं होगा. Find out किसने सबसे कम capital contribute किया per share. A, B or C. So it is A na, because A has contributed only 2 lakhs per share. Don't go by absolute figures. Sir, A का total capital तो 10 lakh है, which is more than B and C. But per share of profit तो उसने सिर्फ 2 lakh contribute किया. उसका share is 5/10. Remember, आधा प्रॉफिट वो लिख के जाता है, बट आधे प्रॉफिट के लिए उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया क्या? 10 लाख रुपए का. सो पर शेयर इट इज द लीस्ट ना. So D point. Taking A as base into PSR. जिसने भी कम कैपिटल कंट्रीब्यूट किया पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट शुड बी योर बेस, दैट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. तो A को लोगे बेस A, 2 lakhs into 5 is 10 lakhs. 2 lakhs into 3 for B is 6 lakhs.
2 lakhs into 2 for C, it is 4 lakhs. Now find out the excess capital. कैसे मिलेगा? It is A minus D. So यहाँ पे it will be 0, nil, because 10 lakhs minus 10 lakhs will become 0. In case of B, 7 lakhs minus 6 lakhs is 1 lakh. And in case of C, 5 lakhs minus 4 lakhs is also 1 lakh. B and C have contributed 1 lakh excess capital as compared to what A has contributed. So before you pay A anything, आपको पहले B को 1 lakh पे करना है और C को 1 lakh पे करना है. बट बी और सी में किसने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है? बी और सी ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया एज कंपेयर्ड टू ए. बट अब बी और सी में भी फाइंड आउट करो दैट विच पार्टनर हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल एज कंपेयर्ड टू द अदर पार्टनर. तो अगेन आप क्या करोगे? पीएसआर लोगे. बट अब पीएसआर लोगे सिर्फ बी और सी. ए तो आउट हो गया ना. Balance divided by PSR. 1 lakh divided by 3 is 0.33 and 1 lakh divided by 2 it is 50,000. So over here, now who has contributed less capital as compared to the other partner? Remember, 1 lakh divided by 3 it is 0.33, that's 33,000, and 1 lakh divided by 2 is 50,000. Taking B as base into PSR. 33,000 multiplied by 3 will give you 1 lakh. Remember, it's 33,333. और यहाँ पे it will be 66,667 ना. Final excess. ये 0, ये 0. यहाँ पे आएगा 33,333. सबसे पहले हम पे करेंगे सिर्फ सी को 33,333. सी को 33,333 पे करने के बाद अब बी एंड सी को साइमल्टेनियसली पे करोगे. बी को पे करोगे 1 लाख और सी को पे करोगे 66,000 और इन दोनों को पे करने के बाद आप पे करोगे तीनों को 10 lakhs, 6 lakhs, 4 lakhs. Remember, this is your order of payment towards partners' capital if you are following surplus capital method. जिस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया एज कंपेयर टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट हैज टू बी पेड फर्स्ट. रिमेंबर, तो हमने पहले सी को पे किया 33,000. उतना पैसा देने के बाद अब बी और सी को साइमल्टेनियसली पे करोगे 1 लाख प्लस 66,000 और उनको पे करने के बाद अब तीनों को पे करोगे 10 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख. नॉर्मली इतना पैसा फर्म के पास नहीं होगा, मतलब पार्टनर्स को पैसा नहीं मिलेगा, which means partners will suffer a loss, but that loss will be in their profit sharing ratio. Remember, first method, surplus capital method. This method cannot be followed if any one of the partner is an insolvent partner, और if any one of the partner has a debit capital balance, आप ये method follow नहीं कर सकते हो. Then comes the second method into existence, and that is maximum loss method. Maximum loss method. Under maximum loss method में what happens is, after all liabilities are paid, external as well as internal, that is partners loan, वो पे करने के बाद जो कैश बचेगा ना आपके पास, पार्टनर्स के पास, that is assumed to be the last realization. ऐसा अज्यूम किया जाता है कि फ्यूचर में कुछ पैसा रियलाइज नहीं होगा. ये आखिरी रियलाइजेशन, ये आखिरी कैश है जो आपको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है.
विच मीन्स पार्टनर्स को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, मतलब पार्टनर्स को लॉस होगा, वो गारंटीड है, रिमेंबर. So based on this, you have to find out what is the maximum loss that the partners will suffer. So first calculation is calculation of maximum loss. And how do we calculate the maximum loss? It's very simple. Total capital minus cash available. This is your maximum loss. इससे ज्यादा लॉस पार्टनर्स को नहीं होगा. मैक्सिमम इतना लॉस है. अब ये मैक्सिमम लॉस आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग all partners. In which ratio? In their PSR, remember. Distribute among all partners in PSR. सभी पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे in their profit sharing ratio, remember. So let's take a very very simple example. Previous case में हमने देखा था ना, A, B and C कैपिटल बैलेंसेस कितना था उनका? A का 10 lakhs था, B का 7 lakhs था और C का 5 lakhs था. PSR भी अपने को दिया हुआ था ना, it is 5:3:2. And let's assume cash available is only 2 lakhs. सिर्फ 2 लाख कैश बचा है और पैसा नहीं है. ये आखिरी 2 लाख है ऐसे समझ के चलने का. सो हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट नाउ? ये 2 लाख में से किसको पैसा देना है? ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है. किसको कितना पैसा देना है 2 लाख में से? दैट इज व्हाट यू हैव टू नाउ अंडरस्टैंड. सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम लॉस. कैसे कैलकुलेट होता है? पहले टोटल कैपिटल, तीनों को ऐड करोगे तो टोटल कैपिटल आएगा 22 lakhs ना. 10 lakhs plus 7 lakhs plus 5 lakhs करोगे तो 22 lakhs माइनस कैश अवेलेबल. आपके पास सिर्फ 2 लाख है ना, तो आपका मैक्सिमम लॉस कैन आई से विल बी 20 lakh rupees. इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, रिमेंबर. सब क्या करोगे नाउ? वेरी सिंपल. 3 partners A, B, C. First write down capital balances. कितना था इनका कैपिटल बैलेंस? 10 lakhs. इनका कितना था? 7 lakhs. इनका कितना था? 5 lakhs. माइनस मैक्सिमम लॉस इन PSR. आपका मैक्सिमम लॉस कितना है? 20 लाख. PSR क्या है? 5:3:2. तो 5:3:2 में अगर मैं 10 लाख को डिवाइड करता हूं तो ये 10 लाख आएगा, ये 6 लाख आएगा और ये 4 लाख आएगा ना. माइनस करने के बाद ये 0 हो गया. ये पॉजिटिव 1 लाख है, ये भी पॉजिटिव 1 लाख है. दोनों पॉजिटिव 1 लाख है तो दोनों को 1 लाख रुपीस देने का आउट ऑफ दैट 2 lakhs अवेलेबल. रिमेंबर, कैश पेड. 2 लाख का जो कैश अवेलेबल है उसमें से बी को मिलेगा 1 लाख, सी को मिलेगा 1 लाख, ए को कुछ नहीं मिलेगा. हाउएवर, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद if any partner has a debit capital balance, मतलब नेगेटिव हो जाता है किसी पार्टनर का, तो क्या अज्यूम करने का? ही इज इंसॉल्वेंट. वो पार्टनर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट.
नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, तो उसका जो भी डेफिशिएंसी होगा वो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना अमंग द रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स, इन विच रेशियो, गार्नर वर्सेस मोरे रूल, रिमेंबर। अगर मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद किसी भी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो अज्यूम किया जाता है कि वो इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट है मतलब कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, तो उसका जो नेगेटिव बैलेंस है वो डेफिशिएंसी हो जाएगा, और वो डेफिशिएंसी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स एज पर गार्नर वर्सेस मोरे रूल। गार्नर वर्सेस मोरे रूल मतलब कैपिटल बैलेंसेस के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिक्स्ड कैपिटल हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो सकता है, वी ऑलरेडी सीन इन योर डिसोल्यूशन चैप्टर। और फिर किसी पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस आएगा, उतना कैश उसको दे देने का। दिस एक्सरसाइज हैज टू बी कैरिड आउट every time cash is realized and is to be paid to the partners. बट रिमेंबर फर्स्ट 5 लीगल ऑर्डर सेम रहता है, वहां तक सोचना नहीं है। ओनली आफ्टर यू हैव पेड ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल लायबिलिटीज यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स नाउ। सो सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड एग्जाम में क्लियरली मेंशन किया जाता है आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, रिमेंबर। सो दिस वाज योर रिवीजन अबाउट पीसमील पार्ट। पार्टनरशिप में 4 पार्ट्स है, डिसोल्यूशन है, पीसमिल है। नाउ वी गो टू द थर्ड पार्ट विच इज अमैल्गमेशन ऑफ फर्म्स। Amalgamation of firms. Amalgamation of firms means two or more existing firms doing a similar business, normally competitors of each other. They come together and they form a new firm. It is called as amalgamation of firms. It also includes a sole proprietor or a partnership firm. ऐसा जरूरी नहीं कि दो फर्म्स को ही मर्ज करना है. Even if two sole proprietors come together and form a new firm, it will still be called as amalgamation of firms, remember. One firm, one sole proprietor coming together and starting a new firm, amalgamation of firms. So amalgamation of firms में क्या करना है? Let's take a very simple case. A, B and company, C, D and company. Partners, A, B and company में partners कौन होंगे? By the name, it will be A and B. और यहाँ पे partner कौन होंगे? Mr. C and Mr. D. Now they decide, let's amalgamate. तो वो मिलके एक नया फर्म स्टार्ट करेंगे और उस नए फर्म का नाम दे दिया उन्होंने ABCD एंड कंपनी। और इसमें पार्टनर्स कौन कौन होंगे? बट नेचुरल, चारों पार्टनर्स होंगे ना, ABC and D. In the old firm they must be having some PSR, profit sharing ratio होगा ना उनका. Let's say A and B were sharing profits in the ratio of 3:2. C and D were sharing profits equally 1:1. तो न्यू फर्म में जब ये अग्री, they will be having a new PSR. Let's say they decide on the new PSR of 4:3:2:1. All these information will be given in the question. आपको कोई रेशियो अज्यूम नहीं करना है, remember. This is your new firm and these are your old firms. Once this amalgamation takes place, future में ABN company बंद हो जाएगा, CDN कंपनी भी बंद हो जाएगा, फ्यूचर में एक ही कंपनी बचेगा एंड दैट इज ABCD एंड कंपनी, रिमेंबर. सो इन अमैल्गमेशन यू हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ old firms
You have to record entries in the books of the new firm. और अगर पूछा तो बैलेंस शीट नए फर्म का बनाना है, बट फर्म का बैलेंस शीट मतलब हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनेगा, वर्टिकल शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करना है. So how do we close the books of old firm? Close books of old firm. इसमें कौन कौन से अकाउंट्स नॉर्मली बनाए जाते हैं? लेजर अकाउंट्स. पहला अकाउंट होगा आपका revaluation account. Second will be partners capital account, and the third that you have to prepare is a new firm account. ये तीन अकाउंट्स आपको बनाने हैं, revaluation, partners capital and new firm account. You're closing the books of the old firm. Steps to be followed. First, transfer capital balances to partners capital account. Distribute reserves and surplus in PSR, profit sharing ratio. Now comes assets and liabilities. Transfer assets and liabilities taken over to new firm account, but it will be transferred at agreed value. कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे? agreed value. And agreed value may be book value, it may be revised value. If agreed value is revised value, then naturally you will have some profit or loss. And this profit or loss should be recorded in your revaluation account, remember. So fourth is, if agreed value is revised value, then profit or loss should be transferred to revaluation account. Building, book value 10 lakhs, taken over for 12 lakhs. Agreed value 12 लाख है ना, तो 2 लाख का appreciation हुआ, कहाँ जाएगा ये 2 लाख? Revaluation account, credit side, it's your profit. और न्यू फॉर्म अकाउंट में कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 12 lakhs agreed value. न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 12 lakhs, और जो एप्रिसिएशन है, प्रॉफिट है, दैट विल गो टू माय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिमेंबर. Assets and liabilities not taken over by न्यू फॉर्म. अगर कोई एसेट या लायबिलिटी नए फर्म ने टेक ओवर नहीं किया, देन इट विल बी सोल्ड बाय ओल्ड फर्म और टेकन ओवर बाय ए पार्टनर. अगर बेच दिया, पैसा मिला, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और प्रॉफिट और लॉस विल गो टू रीवैल्यूएशन. Liability not taken over, settled in cash, so liability account debit to cash or bank, difference revaluation account. अगर किसी पार्टनर ने असेट टेक ओवर किया है, then in that case it will go to partners capital, so partners capital account debit to asset account,
Profit or loss goes to revaluation, remember. Similarly applies with liabilities. Close revaluation account, profit or loss PSR में distribute करोगे ना. And finally close partners capital, transfer balance to new firm. Close new firm, it will tally. नया फॉर्म क्लोज कर दीजिए, टैली होना चाहिए. तो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, टैली नहीं होगा, प्रॉफिट और लॉस आएगा, दैट विल गो टू माय पार्टनर्स इन पीएसआर, डिस्ट्रीब्यूट कर दो. उसके बाद क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा ट्रांसफर इट टू न्यू फर्म. फाइनली न्यू फर्म क्लोज कीजिए, टैली होना चाहिए. द डिफरेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच इज ट्रांसफर्ड टू न्यू फर्म रिप्रेजेंट्स their capital contribution in the new firm, remember. This is how you close the books of the vendor firm. एक बार नहीं, दो vendor firm है. So if they ask you to close the books of the vendor firms, आपको दोनों के books ऐसे ही close करने हैं. Twice you will have to prepare all these accounts and twice you will have to follow these steps, remember. So we have closed the books of the vendor firm. Now in the books of purchasing firm, remember. और परचेसिंग फर्म में क्या आपको रिकॉर्ड करना है? सिर्फ जनरल एंट्रीज. हाउ डू वी गेट इट? फर्स्ट, assets and liabilities will be taken over of the vendor firm one by one. Assets and liabilities taken over of vendor firm. सिंपल एंट्री होगा, assets account debit, agreed value. 2, liabilities account agreed value, and 2, partners capital account. Remember हमने ओल्ड फर्म का बुक्स क्लोज करते वक्त एक न्यू फर्म लेजर अकाउंट बनाया था. उस लेजर अकाउंट को यहाँ पे कॉपी करना है. डेबिट साइड पे जो भी आइटम्स, दैट इज ऑल योर असेट्स, सो असेट्स अकाउंट डेबिट्स. क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज होंगे और पार्टनर्स कैपिटल रिकॉर्ड कर दीजिए, कॉपी कीजिए, एंट्री टैली होगा, रिमेंबर. assets and liabilities taken over of the vendor firm. बट ये एंट्री आपको 2 बार रिकॉर्ड करना है, बिकॉज 2 वेंडर फर्म है ना. अपने एग्जाम्पल के हिसाब से एबीएन कंपनी वाज वन फर्म, सीडीएन कंपनी वाज सेकेंड फर्म. तो 2 बार आप ये एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे सेपरेटली. डोंट ट्राई टू मर्ज बोथ द एंट्रीज. सर मैं ऐड करके एक फिगर लिखूं, नॉट एडवाइजेबल, यू कैन से. सेकेंड एंट्री विल बी फॉर goodwill adjustment. Goodwill is to be adjusted amongst partners without opening goodwill account. Goodwill account नहीं बनाना है. It has to be adjusted amongst partners. Raise and write off का concept use करना है. हमने एबीएन कंपनी में कितने पार्टनर्स थे? ए और बी पार्टनर्स थे ना. और उनका पीएसआर हमने कितना लिया था? ऊपर देखिए 3:2 लिया. एंड लेट्स से देयर गुडविल वाज 1 लाख. वैल्यूएशन आपको दिया होगा. सेकेंड फर्म कौन है? सीडीएन कंपनी है. उसमें पार्टनर्स कौन है? सी एंड डी है. उनका पीएसआर कितना था? 1:1 था. और उनका गुडविल आपको दिया जाता है लेट्स से 2 लाख.
First firm 2 partners, PSR 3:2, goodwill is 1 lakh. Second firm 2 partners, C&D, PSR is 1:1, goodwill is 2 lakhs. Now how do you do the adjustment of goodwill? अब क्या पकड़ोगे? Working note, particulars, goodwill, A, B, C, D. 4 partners है ना? First, goodwill raised. पहले फर्म का गुडविल रेज करो 1 लाख. किसमें रेज करोगे? सिर्फ ए और बी में. सी और डी को इस 1 लाख में हिस्सा नहीं मिलेगा. कौन से रेशो में रेज करोगे? ओल्ड रेशो 3:2 में. तो ए का शेयर आएगा 60,000, बी का शेयर आएगा 40,000 ना. फिर से आप गुडविल रेज करोगे. But now you will raise goodwill of the second firm 2 lakhs. इसमें किसको हिस्सा मिलेगा? सिर्फ C और D को मिलेगा. PSR equal, तो दोनों को 1 लाख मिलेगा ना. New firm A, B, C, D and company. PSR is 4:3:2:1 ना. फिर आप क्या करोगे? गुडविल राइट ऑफ करोगे. कितना राइट ऑफ करोगे? दोनों का टोटल. जितना रेस किया, ए का 1 लाख, बी सी एंड डी का 2 लाख, टोटल 3 लाख रेस किया, टोटल राइट ऑफ करना है. कौन से रेशियो में राइट ऑफ करना है? न्यू पीएसआर 4:3:2:1. तो इन दैट केस इफ यू कैलकुलेट, दिस इज 1,20,000, this is 90,000, this is 60,000 and this is 30,000. When you raise goodwill, partners capital is credited, and when you write off, partners capital is debited. Raise goodwill, goodwill account debit to partners capital. Write off, it is partners capital account debit to goodwill. अब अगर आप देखोगे तो A में 60,000 डेबिट आएगा ना, नेगेटिव इज मोर ना. B में 50,000 डेबिट आएगा ना, 90 and 40. C में 40,000 क्रेडिट आएगा और D में 70,000 क्रेडिट आएगा. क्रेडिट इज मोर ना. जस्ट चेक, आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? A's capital account debit 60,000, B's capital account debit 50,000, to C's capital 40,000, to D's capital 70,000. Your entry will tally. So as per this example, it is A, B to C and to D. A debit is 60, this is 50, this is 40, this is 70. Your journal entry tally. So in every question of amalgamation, you will be having goodwill raised and write-off concept. Raise karoge old partners, old PSR, and when you raise goodwill, partners are credited. Write-off karoge total goodwill among all partners in their new PSR. और write-off करते वक्त partners capital क्या होता है? Debit होता है, remember. Now find out the difference, और उस difference के basis पे आप क्या करोगे? Journal entries record करोगे. This is first major adjustment in the books of the new firm in case of amalgamation of firms, remember. And the second will be adjustment of partners capital balances. Adjustment of partners capital balances. In the new firm, capital adjustment has to be done in PSR. और जब करोगे तो नेचुरल देयर कैन बी सम डिफरेंस ना. और डिफरेंस को कहां पे एडजस्ट करोगे? इट विल बी एडजस्टेड आइदर इन कैश और बैंक,
It will be adjusted in current account or it will be adjusted through your loan account, for which clear instructions will be given. Now, this adjustments can be on account of two possibilities, remember. Adjustment, दो possibilities है. One is total capital of firm will be given. फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए इन PSR, वो आपको दिया होगा. द टोटल कैपिटल शुड बी 10 lakhs. चार पार्टनर्स थे ABCD, 10 lakhs कौन से रेशियो में? 4:3:2:1 PSR में. तो आपको पता चल गया ना कितना कैपिटल होना चाहिए. कंपेयर इट विद द एग्जिस्टिंग कैपिटल. डिफरेंस इज आइदर दे विल ब्रिंग इन कैपिटल, और अगर एक्सेस कैपिटल होगा तो फर्म उनको रीपे कर देगी. अगर कैश में बोला तो कैश में सेटलमेंट कीजिए, कैश में नहीं बोला तो इट विल बी करंट अकाउंट और इट विल बी लोन अकाउंट. क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, रिमेंबर. दैट इज वन पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज taking a particular partner's capital balance as base. They will tell you A का capital should be taken as a base और B's capital should be taken as a base. किसी एक पार्टनर का नाम देंगे, उसका जो कैपिटल बैलेंस है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा. उसके बेसिस पे फाइंड आउट करो दूसरे पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, अकॉर्डिंगली उनका कितना कैपिटल बैलेंस होना चाहिए, रिमेंबर. फिर डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए. अगेन कैश में एडजस्ट होगा, लोन में एडजस्ट होगा या करंट अकाउंट में एडजस्ट होगा. बट जिसका बेस लिया है उसके कॉलम में कुछ डिफरेंस आएगा ही नहीं, बिकॉज दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट्स में या कॉलम्स में डिफरेंस आएगा, रिमेंबर. So adjustment of capital balances has to be done. And the last point when that will be your set off. If one firm had sold some goods to another firm, debtors, creditors, bills receivable, bills payable, loan given, loan taken, it has to be set off. Inter-firm transactions. नए फर्म में वो अपियर नहीं होना चाहिए, बिकॉज पुराने दोनों फर्म्स मिलके एक नया फर्म स्टार्ट हो गया है. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पेइंग एनी अमाउंट टू एनीवन और रिसीविंग एनी अमाउंट फ्रॉम एनीवन. इट हैज टू बी सेटल्ड, कैंसल्ड. सिंपल एंट्री. क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल और लोन टेकन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और लोन गिवन अकाउंट, रिमेंबर. सो सेट ऑफ का एंट्री कैसे आएगा? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल और लोन टेकन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल और लोन गिवन अकाउंट. दिस इज योर अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स रिविजन. पार्टनरशिप में चार पार्ट्स: डिसोल्यूशन डन, पीसमेल डन, अमेलगमेशन डन, एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, एंड दैट इज conversion of firm to a company or sale of firm to a company. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो फर्म चला रहे हैं डिसाइड करते हैं चलो फर्म को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ कंपनी. अब तक फर्म था, फ्यूचर में वो कंपनी के नाम से बिजनेस होगा. तो फर्म बंद हो जाएगा, फ्यूचर में कंपनी कंटिन्यू करेगा. वेंडर पार्टी इज द फर्म, परचेसिंग कंपनी हो जाएगा.
दूसरा पॉसिबिलिटी, सेल ऑफ अ फर्म टू अ कंपनी. सपोज पार्टनर्स डिसाइड करते लेट्स डिसॉल्व द फर्म. बट रिमेंबर, जब भी आप डिसोल्यूशन करोगे इट्स नॉट इजी जितना पेपर पे दिखता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. नॉर्मली जब भी डिसोल्यूशन करोगे तो लॉस ही होता है. सो पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग डाउन द फर्म, हम अपना फर्म किसी को बेच देते हैं एज अ गोइंग कंसर्न. सो कंपनी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द बिजनेस ऑफ द फर्म. सो कंपनी अप्रोच करता है फर्म को, हम आपका बिजनेस खरीदने के लिए रेडी है, आर यू रेडी टू सेल, एंड दे विल से यस वी विल रेडी टू सेल इट. रिमेंबर अगेन, अगर फर्म ने अपना बिजनेस किसी कंपनी को बेच दिया तो फर्म तो बंद हो गया. फ्यूचर में बिजनेस कौन कंटिन्यू करेगा, कंपनी कंटिन्यू. सो हियर यू विल हैव टू फर्स्ट calculate PC, close the books of the vendor firm, record entries in the books of the purchasing company, and then prepare the balance sheet of the company, but as per schedule 3 vertical format. और वो भी अगर उन्होंने पूछा तो बनाना है, otherwise not. Remember, so conversion or sale concept remains the same. पुराना पार्टनरशिप फर्म ने अपना बिजनेस एक कंपनी को बेच दिया, फर्म फ्यूचर में बंद हो जाएगा, कंपनी विल कंटिन्यू द बिजनेस इन फ्यूचर. रिमेंबर, so what are the steps to be followed over here? One is you will have to calculate PC, purchase consideration. Second is you have to close books of vendor firm. Third is journal of purchasing company, and fourth is balance sheet of a company. बट बैलेंस शीट बनाओगे अगर स्पेसिफिकली बोला तो, अदरवाइज नॉट. रिमेंबर, सो 4 थिंग्स: पीसी, क्लोज द बुक्स ऑफ वेंडर फर्म, जर्नल एंड बैलेंस शीट. अब पीसी कैलकुलेट करते वक्त वेरी सिंपल, देयर इज ओनली वन मेथड कॉल्ड एज नेट asset method. Only one method, net asset method. How do we get PC net asset method? Very simple. Revised value or book value of assets taken over. कौन कौन से assets कंपनी ने टेक ओवर किया, कौन से वैल्यूज पे टेक ओवर किया है, रिवाइज्ड वैल्यू पे टेक ओवर किया या बुक वैल्यू पे. इसमें से आप माइनस कीजिए revised value or book value of liabilities taken over. तो बैलेंस आएगा, दैट इज योर पीसी. अभी अमाउंट किसको पे करना है, कंपनी हैज टू पे दिस अमाउंट. And how will the company pay this amount? This amount will be paid by the company either in the form of cash or bank, or in the form of equity shares, or in the form of preference shares, or in the form of debentures. और ये शेयर्स और डिबेंचर्स जो कंपनी इशू करेगी, दैट विल आइदर बी एट पार और एट प्रीमियम. So PC only one method, net asset method. Remember. Then we close the books of vendor firm. Close books of vendor firm. कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाओगे, बिजनेस बंद हो रहा है, डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सोचिए. You will prepare a realization account. You will prepare a partner's capital account. You will prepare a cash or bank account. And if required, you will prepare a partner's loan account over here. Plus कुछ extra accounts बनेंगे. Purchasing
company account. Business is taken over by a company now. So purchasing company account, and then equity shares or preference shares or debentures in purchasing company account. इतने अकाउंट्स आपको बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ द वेंडर फर्म, बट सारे अकाउंट्स नहीं होंगे. ओनली फ्यू अकाउंट्स विल बी देयर. Steps to be followed. First, ट्रांसफर स्टेप ना. फर्म के जो बैलेंस शीट आइटम्स है उसको रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे ट्रांसफर कर दोगे. कैपिटल बैलेंसेस विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रिजर्व्स ऑफ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे पीएसआर, इट विल गो टू माय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू. Assets will go to my realization account at book value. Cash or bank is an exception. If cash or bank is taken over by the company, then it will go to my realization account, and if not, it will be shown in my cash or bank account, remember, as balance brought down. In case of remaining assets, see the instructions given, remember, and accordingly you will be recording those transactions. It will go to my realization account. अगर P&L डेबिट बैलेंस है, accumulated loss है, then it will be recorded in my partners capital. You will distribute among the partners in PSR, remember. Second will be record and receive PC. Entry for recording PC, purchasing company to realization. Receiving PC, क्या मिला? Cash मिला, cash or bank account debit. Equity shares मिला, so equity shares in purchasing company account debit. Preference shares in purchasing company account debit. Debentures in purchasing company account debit to purchasing company. Very, very simple. Third, dispose of assets and liabilities not taken over. अगर कोई असेट फर्म कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया है फर्म का, फर्म या तो उसको कैश में बेच देगी और वन ऑफ द पार्टनर विल टेक ओवर दैट असेट. सेम अप्लाइज विथ लायबिलिटीज. अगर कोई लायबिलिटी कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया है, फर्म कैश में पे करेगी और पार्टनर विल टेक ओवर दैट पर्टिकुलर liability. Assets and liabilities not taken over. Fourth step is for expenses. क्लोज करने के एक्सपेंसेस होंगे ना, सिंपल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. फिफ्थ, पार्टनर्स लोन अगर हुआ तो वो आप करोगे ना सेटल. कैश में सेटल कर दिया, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. क्लोज कीजिए पार्टनर्स लोन अकाउंट. अगर टैली हुआ अच्छी बात है. इफ इट डज नॉट टैली, यू विल ट्रांसफर द डिफरेंस टू योर रियलाइजेशन अकाउंट, रिमेंबर. लास्ट इज क्लोजिंग स्टेप. पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? रियलाइजेशन. कभी टैली नहीं होगा. डिफरेंस, प्रॉफिट और लॉस क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर पीएसआर, रिमेंबर. अब रिमेंबर, आपको फर्म से शेयर्स मिले थे. क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे कंपनी से जो शेयर्स मिले हैं वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल बैलेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन, फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन. अगर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन का इंस्ट्रक्शन इज नॉट गिवन,
then you will distribute among the partners in their final claim ratio. And how do you get the final claim ratio? After recording all transactions, after distributing your realization profit or loss also, find out what is the final capital balances in each partner's column. That is your final claim ratio. In that ratio, the shares received will be distributed among the partners. अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिया शेयर्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर तो फिर फाइनल क्लेम रेशियो यूज नहीं करने का. अगर वो कहते हैं कि शेयर्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन XYZ रेशियो, फॉलो दैट रेशियो. फाइनल क्लेम रेशियो कब फॉलो करोगे? ओनली इफ दे स्पेसिफिकली डोंट मेंशन कौन से रेशियो में शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. So final claim ratio is calculated as credit minus debit. हर पार्टनर का कैपिटल कॉलम का क्रेडिट का टोटल लीजिए माइनस डेबिट का टोटल लीजिए. फाइंड आउट द फाइनल कैपिटल बैलेंस. उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर्स को. एंड देयर आफ्टर क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन कैश और बैंक. दैट्स हाउ यू क्लोज द बुक्स ऑफ द वेंडर फर्म. रिमेंबर, सिमिलर टू डिसोल्यूशन, क्योंकि फर्म बंद हो गया. नाउ Journal of Purchasing Company. कंपनी ने फर्म का बिजनेस खरीदा. So first entry will be business purchase account debit to vendor firm account, and this entry has to be recorded with your PC amount, purchase consideration amount. Second entry is for taking over the assets and liabilities. So entry will be assets account debit. कौन सा value? Agreed value. 2. Business purchase account, PC amount. And 2, liabilities account, agreed value. Now listen carefully. If the PC was as per net asset method, this entry will tally. You will not have a difference, remember. अगर पीसी नेट एसेट मेथड से है तो ये एंट्री टैली होगा, आपको डिफरेंस नहीं आएगा. बट कभी कभी क्या देते हैं वो लमसम पीसी अमाउंट दे देंगे. परचेसिंग कंपनी टुक ओवर द वेंडर फर्म फॉर ₹10 lakhs. लमसम फिगर दे दिया 10 लाख. उसका बाइफिकेशन उन्होंने नहीं दिया. हमने पीसी कैलकुलेट नहीं किया. पीसी अमाउंट वाज गिवन टू अस स्ट्रेट अवे. In that case, this entry will never tally. यहां पे बैलेंसिंग फिगर होगा और it will be on the credit side. डेबिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आए इट इज कॉल्ड एज गुडविल. इसका मतलब है कि कंपनी ने पार्टनर्स को, फर्म को ज्यादा पैसा दिया एज कंपेयर टू नेट एसेट्स टेकन ओवर, और जो एक्स्ट्रा पैसा दिया दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म. और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आया तो कंपनी, इसका मतलब है कि उन्होंने कम पैसा दिया. प्रॉफिट टू द कंपनी, इट गोज टू कैपिटल रिजर्व, रिमेंबर. एंड द थर्ड एंट्री विल बी फॉर डिस्चार्ज ऑफ पीसी. पैसा दे दो ना कंपनी फर्म को, सो इट विल बी वेंडर फर्म अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ पीसी टू cash or bank account, to equity share capital or preference share capital or debentures account, और अगर प्रीमियम पे इश्यू किया तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आएगा. In the books of company, you normally have to pass these 3 entries whenever a company takes over the business of a firm or
the firm is converted into a company, remember. इसके बाद अगर पूछा तो, if they ask you, you have to prepare the balance sheet of the company, vertical, schedule 3, remember. So this is how you do your conversion of a firm into a company or sale of a firm to a company, remember. So we have revised dissolution, piecemeal, amalgamation as well as conversion. Revision of partnership accounts comes to an end. The next chapter that we are going to revise is liquidation of companies. Liquidation of companies means closing down of a company. जैसे पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन होता है, फर्म इज क्लोजिंग डाउन, वैसे कंपनीज में देयर इज लिक्विडेशन. Liquidation of companies can be on account of two possibilities, remember. One is, we call it as voluntary liquidation. And second is what we call it as compulsory liquidation. Voluntary liquidation means the shareholders themselves decides कंपनी बंद कर देते हैं. कौन डिसीजन लेगा? शेयर होल्डर्स. एंड लॉजिकली सोचिए, शेयर होल्डर्स विल डिसाइड टू क्लोज डाउन अ कंपनी विच इज अ लॉस मेकिंग कंपनी. अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, नो शेयर होल्डर विल एवर से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को बंद कर दीजिए. इट्स ऑलवेज ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी. Compulsory liquidation will be on account of order from the court or by the government. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत पोल्यूशन कर रही है उस एरिया में, which is harmful to the people staying in that locality, government may pass an order, this company has to close down, even though it may be a profit making company, remember. Or the court will pass an order, this company has to close down. So compulsory liquidation, profit making company, it's possible. But in case of voluntary, profit making companies will never be asked to be closed down by the shareholders. It will always be a loss making company, remember. Now whenever a company is being liquidated voluntary, the shareholders will pass a special resolution that this company should be closed down. And thereafter, a professional person is appointed whom we call it as a liquidator. He will look after the liquidation proceedings, remember. He will be appointed by the shareholders. Usko authority diya jayega that your job is to close down this company. और कंपनी क्लोज डाउन मतलब क्या करना है लिक्विडेटर को? असेट्स बेच देने का, पैसा रियलाइज करने का, उस पैसों में से पहले लायबिलिटीज पे कर दीजिए और फिर जो पैसा बचा वो ओनर्स शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का. दिस इज द जॉब ऑफ द लिक्विडेटर. इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू हैव थ्री थिंग्स, रिमेंबर. वन इज preparing a document called as Statement of Affairs. Second is liquidators final statement of account, and third is B list contributories. Three things are there. Questions can be asked on any one of them, remember. Now, before we look into all these things, remember, first you have to understand the legal order of payment. Liquidator को appoint तो कर दिया. Now, when he sells the assets, there is no specific order to be followed. कि बैलेंस शीट में पहले लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो पहले बेचेंगे, फिर प्लांट एंड मशीनरी. ऐसा ऑर्डर उसको फॉलो नहीं करना है फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स.
But for discharge of liabilities, payment of liabilities, there is a specific legal order to be followed, remember. So now you have to understand the legal order of payment, remember. Very simple. सबसे पहले वो पे करेगा लीगल एक्सपेंसेस इफ एनी. आपको ढूंढने नहीं जाना है, दिया है तो पे करो, नहीं दिया है तो इग्नोर, जीरो. सेकंड इज liquidators remuneration. Liquidators remuneration. And liquidators remuneration may be paid as a fixed amount. आपको 5 लाख रुपया रेम्यूनरेशन मिलेगा. One possibility. Second possibility, you may get it as a percentage of assets realized. So one possibility is fixed amount. Second possibility is as a percentage of assets realized. Assets realized करके जितना पैसा मिलेगा उसका एक specific percentage मिलेगा. 1%, 2%, 5%, 10%. It will be given in the question. It may also be as a percentage of amount paid to creditors. It may also be a percentage of amount paid to shareholders. Different possibilities है. क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि रेम्यूनरेशन जो हम लिक्विडेटर को पे कर रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट करना है. रिमेंबर, सेकेंड स्टेप. थर्ड लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज liquidation expenses. Pay liquidation expenses. Again, it will be given in the question straight away. आपको वो pay करना है. You don't have to do the calculations for the same, remember. Fourth is important. Secured liabilities. Secured liabilities are those liabilities which are secured against a specific asset. आपने एक पर्टिकुलर असेट उनको सिक्योरिटी में दिया है, इसको कहा जाता है secured liabilities. Then whatever amount is realized from the sale of that asset should be first utilized to discharge that liability only. अगर एक्स्ट्रा पैसा मिला असेट बेच के, then the excess amount can be used to pay other liabilities. But before you pay this liability, you cannot pay the amount realized from that asset for any other liability, remember. So let's take a very simple example. हमने लोन लिया. एक एग्जाम्पल हमने लोन लिया फ्रॉम ICICI बैंक. कितने का लोन लिया आपने इनसे? आपने इनसे लोन लिया था लेट्स से 10 लाख रुपए का. असेट आपने सिक्योरिटी में इनको दिया लैंड एंड बिल्डिंग. रियलाइज्ड वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, कितना पैसा मिला? यू रिसीव्ड लेट्स से 25 lakhs. लोन कितने का था? 10 लाख का. कितना हमने एसेट बेच के पैसा मिला? 25 लाख. सो पूरा 10 लाख आईसीआईसीआई को दे देने का. कैन वी से वी हैव अ सरप्लस ओवर ईयर ऑफ 15 lakhs. ये 15 लाख आप यूज कर पाओगे टू पे अदर लायबिलिटीज एज पर द लीगल ऑर्डर. स्टेप नंबर 5 onwards. But let's take a very simple case over here. You have taken one more loan from SBI. SBI से हमने लोन लिया था लेट्स से 25 लाख का. क्या सिक्योरिटी में दिया? प्लांट एंड मशीनरी. और प्लांट और मशीनरी बेच के कितना पैसा मिला? 22 lakhs मिला. लोन कितने का लिया था? 25 लाख का. क्या सिक्योरिटी में दिया? प्लांट एंड मशीनरी. इसका रियलाइज्ड वैल्यू कितना है? 22 lakhs. पूरा 22 lakhs एसबीआई को दे देने का. बट लोन तो 25 लाख का था. So have we repaid the full liability? The answer is no. Which means there will be a deficiency. कितने का डेफिशिएंसी होगा? 3 लाख का डेफिशिएंसी होगा.
SBI cannot tell the liquidator आपके पास जो ICICI का 15 लाख का सरप्लस है उसमें से आप हमको 3 लाख रुपया दे दो तो हमारा अकाउंट भी क्लियर. लिक्विडेटर सेज डोंट वरी, आपको पैसा मिलेगा 3 लाख लेकिन अभी नहीं मिलेगा. बिकॉज लिक्विडेटर हैज टू फॉलो द लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट. लिक्विडेटर कहता है कि ये 3 लाख रुपया अब आपका जो बैलेंस है दैट विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड लायबिलिटी. वो 3 लाख मैं आपको दूंगा बट व्हेन वी पे द अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, अभी 15 लाख में से मैं आपको 3 लाख नहीं दे सकता हूं. So this 3 lakhs will be paid along with other unsecured liabilities. This will be paid along with other unsecured liabilities. So that's your legal order 4. Secured liabilities. Fifth is preferential liabilities. Very, very, very important. Remember, preferential liabilities are always unsecured in nature, but they will be having a preference before you pay your other unsecured liabilities. Example of preferential liabilities are basically two examples most important. One is outstanding taxes. Taxes payable to the government. Central government हो सकता है, state government हो सकता है, उनको जो taxes pay करना है, outstanding अगर है, that will be treated as preferential liability. वो है unsecured. You have not given any asset as a security to the government कि जब तक हम आपको taxes नहीं दे देते तब तक ये asset आपके पास security में रखिए. No. So it is unsecured, but it is treated as preferential. So before you pay other unsecured liabilities, आपको government को tax pay करना है. However, there is one condition over here. Taxes will be considered as preferential if it is outstanding for less than 12 months prior to date of liquidation. चेक कीजिए टैक्सेस आउटस्टैंडिंग कब से है. सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं. डेट ऑफ लिक्विडेशन इज लेट्स से 1st April 22. डेट ऑफ लिक्विडेशन इज 1st April 22. आपके पास दो टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है. वन इज आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स एंड सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग लेट्स से GST. दोनों गवर्नमेंट को ही देना है ना. कितना आउटस्टैंडिंग है? लेट्स से दिस इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम, आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स इज फ्रॉम 1st January 21. Outstanding from, and this is outstanding from 1st June 21. Now you have to decide which one is preferential, which one is not preferential. अमाउंट रेलिवेंट नहीं है. 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी अमाउंट रहने दो. अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, डेट इज इंपॉर्टेंट. इट इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम विच डेट? डेट ऑफ लिक्विडेशन से रिवर्स में जाने का, प्रायर टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन. अगर पिछले 12 महीने के अंदर से ये ड्यू है then it will be treated as preferential. और अगर ये 12 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है prior to the date of liquidation, that will not be treated as preferential liability. Date of liquidation is 1st April 22. रिवर्स में जाइए, 12 महीना रिवर्स में जाइए, तो can I say the date will be 1/4/21? 1st April 21 के बाद अगर कोई टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है तो वो प्रेफरेंशियल होगा. 1st April 21 के पहले से अगर कोई टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड. रिमेंबर, तो ये आपका क्या गिना जाएगा? अनसिक्योर्ड.
अभी पे नहीं करोगे। जब आप दूसरे अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज पे करोगे उस वक्त पे करना है, अभी नहीं। जबकि ये आउटस्टैंडिंग फॉर लेस देन 12 months है ना, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ आउटस्टैंडिंग taxes preferential liabilities. Second example is outstanding salaries and wages. Outstanding salaries and wages payable to the employees. This is also considered as preferential with certain restrictions. What are those restrictions? Amount per person maximum 20,000. Outstanding salaries or wages per person, per employee should not be more than 20,000. उससे ज्यादा अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो एक्सेस अमाउंट प्रेफरेंशियल नहीं होगा। राइट नाउ लिक्विडेटर कितना पे करेगा? सिर्फ 20,000। मान लो एक एम्प्लॉय का सैलरी आउटस्टैंडिंग है 25,000, अभी लिक्विडेटर उसको 25,000 नहीं देगा। लिक्विडेटर अभी इसको सिर्फ 20,000 रुपीज देगा। स्टेप नंबर 5, प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज। एंड व्हाट द लिक्विडेटर विल टेल दैट एम्प्लॉय, आपको बैलेंस 5,000 मिलेगा, बट व्हेन वी पे द अदर अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज अभी नहीं मिलेगा। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग फॉर a maximum period of 4 months. जो सैलरीज और वेजेस आउटस्टैंडिंग है वो मैक्सिमम कितने मंथ्स का प्रेफरेंशियल गिना जाएगा? 4 मंथ्स का सिर्फ प्रेफरेंशियल गिना जाएगा। अगर 6 महीने का सैलरी नहीं दिया है तो 6 महीने का सैलरी प्रेफरेंशियल नहीं है, उसमें से प्रेफरेंशियल होगा सिर्फ 4 मंथ्स का। एक्स्ट्रा मंथ्स का जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो लिक्विडेटर पे करेगा, बट not as a preferential liability, as an unsecured liability at a later stage, remember. And the third point is 4 months outstanding should be within 12 months prior to date of liquidation. It should be outstanding within 12 months prior to date of liquidation. Suppose 5 साल पहले का 4 महीने का सैलरी पे नहीं किया तो वो प्रेफरेंशियल नहीं गिना जाएगा। 4 साल पहले का 1 महीने का सैलरी 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है तो नथिंग इज प्रेफरेंशियल। सो 10,000 तो 20,000 से कम है, अग्रीड। 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है लेस देन 4 मंथ्स, अग्रीड। बट वो 1 महीना कभी का है? 4 साल पहले का है। दैट 1 मंथ शुड बी विद इन 12 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। तीनों कंडीशंस आपको सोचना है, अप्लाई करना है। अगर फुलफिल होता है तो वो प्रेफरेंशियल अभी पे करो, अगर फुलफिल नहीं होता है डोंट वरी, लिक्विडेटर उनको पैसा देगा, अभी नहीं देगा, फ्यूचर डेट पे देगा, अलोंग विथ अदर अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। जब वो क्रेडिटर्स को पैसा देगा, बिल्स पेबल को पैसा देगा, तब ये एम्प्लॉयज को भी सैलरी पे किया जाएगा। सो दैट्स द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड वन विल बी any other amount payable to employees. अगर एम्प्लॉयज को और कोई रीजन से पैसा देना है, इट इज प्योरली प्रेफरेंशियल विदाउट एनी कंडीशंस। एम्प्लॉयज का एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोविडेंट फंड का। If any provident fund amount is payable to the employee, no conditions applied. वो 20,000 का लिमिट अप्लाई नहीं होगा, 4 months 12 months का लिमिट अप्लाई नहीं होता है। सपोज अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो कॉम्पेंसेशन इज पेएबल टू दैट एम्प्लॉय।
Again, full compensation payable to the employee will be preferential without any conditions, remember. So your fifth legal order of payment is preferential liabilities, taxes payable to the government, outstanding salaries and wages. Taxes may, it should be outstanding within 12 months prior to the date of liquidation. And in case of outstanding salaries and wages, maximum per person 20,000. It should not be outstanding for a period of more than 4 months, and that 4 months should be within 12 months prior to the date of liquidation. Sixth legal order is liabilities with floating charge. Liabilities with floating charge means they do not have a charge against a specific asset. No. उनको जो asset अच्छा लगेगा, that we can utilize to pay off them, remember. In this, there is an example of debentures only. Debentures are always issued as a floating charge. उनको सारे assets पे हक बनता है except those which were given as a security against secured liability. ICICI बैंक को जो लैंड एंड बिल्डिंग दिया था उस पे डिबेंचर होल्डर्स क्लेम नहीं कर सकते हैं. SBI को जो हमने प्लांट एंड मशीनरी सिक्योरिटी में दिया था उस पे डिबेंचर होल्डर्स क्लेम नहीं कर सकते. बाकी कोई भी असेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, दूसरे कोई फर्नीचर है उस पे वो क्लेम कर सकते हैं. But when you pay liabilities with floating charge in your step number 6, you have to pay the principal amount plus outstanding interest up to date of liquidation. जिस दिन कंपनी बंद हो रहा है तो वहां तक का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो वो भी पे करने का इन योर स्टेप नंबर 6 along with the principal amount, remember. So that's your step number 6, liabilities with floating charge. Step number 7 is unsecured liabilities. Those liabilities for which no asset was given as a security. कुछ भी security में नहीं दिया. इसमें क्या क्या आएंगे? Creditors आएंगे, bills payable आएंगे, दूसरे outstanding expenses आएंगे and so on. So few examples: creditors, comma, bills payable, comma, outstanding expenses, comma, plus deficiency of secured liability. याद है हमने SBI से लोन लिया था, 25 लाख का लोन लिया था, सिक्योरिटी में प्लांट एंड मशीनरी दिया था, प्लांट एंड मशीनरी बेच के 22 लाख मिला था, 3 लाख रुपीस का डेफिशिएंसी था, वो अब हम उनको पे करेंगे. प्लस बैलेंस ऑफ preferential liabilities. If any taxes were outstanding for a period of more than 12 months, ऊपर के एग्जाम्पल में देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स 12 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है वो अभी पे करने का. आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, एम्प्लॉय को 25,000 पे करना था, हम 20,000 ऊपर पे करेंगे. अभी हम कितना पे करेंगे? 5,000 rupees, remember. So your 7th legal order of payment is unsecured liability. 8. Interest on liabilities with floating charge from the date of liquidation to the date of payment. From the date of liquidation to the date of payment. If you recollect at the top मैंने date of liquidation देखिए 1st April 22 दिया है.
Go at step number 6. आपका डेट ऑफ लिक्विडेशन कितना था? 1/4/22. Let's say debentures. Debentures were 10% debentures. कितने का इश्यू किया था? 1 crore का डिबेंचर्स इश्यू किया था. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इट कैरीज? 10%. तो एक साल का इंटरेस्ट सोचो कितना आएगा? 10% ऑफ 1 crore इज 10 lakh rupees ना. सो इन द बैलेंस शीट आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 1 crore प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 1 year का कितना? 10 lakhs. तो यहां पे आपने कितना पे किया? 1.1 CR उनको पे किया. अब लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, बट 1 अप्रैल को पैसा नहीं दिया होगा. लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, फिर वो असेट्स बेचेगा, असेट्स स्लोली बिकता है, पैसा मिलता है, फिर वो लीगल ऑर्डर फॉलो करेगा. मतलब लायबिलिटीज विद फ्लोटिंग चार्ज लीगल ऑर्डर में स्टेप नंबर 6 है. लेट्स से उनको पैसा दिया ऑन 30th September 22. उनको कब पैसा दिया? 30th September 22. दिस इज अप टू 1st April 22. अब डिबेंचर होल्डर्स पैसा तो ले लेते हैं, बट व्हाट दे विल टेल द कंपनी? हमको जो 10 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट दिया है वो सिर्फ 1 अप्रैल तक का है, और आप पेमेंट कर रहे हो आज 30th September, मतलब 6 महीने के बाद पैसा दिया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट भी हमको चाहिए. 1 CR का 10% फ्रॉम 6 months. 6 months कौन सा? डेट ऑफ लिक्विडेशन 1 April टू द डेट ऑफ पेमेंट 30th September. ये 6 महीने का भी हमको इंटरेस्ट चाहिए. 1 crore पे 10% फॉर 6 months अगर आप कैलकुलेट करोगे, डेट ऑफ लिक्विडेशन 1 April 22 टू डेट ऑफ पेमेंट इज 30th September 22. ये गैप हो गया 6 months का. तो इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 crore, इसका 10% फॉर 6 months. आंसर इज 5 lakhs आएगा ना. They will demand interest on 30th September itself. उस दिन लिक्विडेटर नहीं देगा, बिकॉज लिक्विडेटर विल से पहले मुझे दूसरे लायबिलिटीज को पे करने दो जो पुराने हैं. उनको पे करने के बाद लीगल ऑर्डर में 8th स्टेप आपका आता है. अगर पैसा होगा तो मैं आपको दूंगा, अदरवाइज भूल जाना. सो नाउ 8th स्टेप में द लिक्विडेटर विल पे 5 lakh rupees एज इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स, and that is from the date of liquidation to the date of payment. Payment हमने क्या दिया था? 30th September को. Now this may be paid on October, November. That is totally irrelevant, remember. 9th is preference shareholders. And what will you pay to the preference shareholders? Preference share capital plus arrears of dividend, if any. अगर क्वेश्चन में क्लियरली दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 साल का डिविडेंड नहीं दिया, 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया, 3 साल का डिविडेंड नहीं दिया, तो आप पे करोगे, अदरवाइज नॉट. सो अरियर्स ऑफ डिविडेंड इफ एनी. और लास्ट में किसका टर्न आता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स. बैलेंस अमाउंट, जो भी बैलेंस पैसा लिक्विडेटर के पास बचा, लिक्विडेटर किसको दे देगा? टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. मेरा काम खत्म हो गया. 10 लीगल ऑर्डर का स्टेप्स फॉलो करने हैं. यू आर नॉट सपोज टू इंटरचेंज द स्टेप्स, रिमेंबर. असेट्स रियलाइज करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, बट लायबिलिटीज पे करते वक्त लीगल ऑर्डर आपको फॉलो करना है. सो लिक्विडेटर ये ऑर्डर फॉलो करेगा, असेट्स रियलाइज करेगा, सबको पैसा दे देगा. उसके बाद शेयर होल्डर्स को भी पैसा देने के बाद व्हाट ही विल डू इज ही विल कॉल अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड ही विल एक्सप्लेन टू देम कि देखिए मैंने असेट्स बेच दिया, मैंने लायबिलिटीज पेमेंट कर दिया,
बैलेंस कैश बचा था वो मैंने आपको दे दिया. He is supposed to report to the shareholders. He is supposed to explain to the shareholders मुझे कितना पैसा मिला और कितना मैंने पेमेंट किया. This he will do it with the help of a particular document called as liquidator's statement of affairs. Remember, so liquidator's final statement of account. This is like a normal cash or bank account. It's a normal cash or bank account. कितना पैसा आया और कितना उसने पेमेंट किया. When will he prepare this? At the end, after he has realized all assets, after he has made all payments. So this particular account has to be prepared on the basis of actual figures over here. Actually कितना पैसा मिला, realized value, estimated realizable value नहीं लिखा जाता है. See, the column is blank. रियलाइज्ड वैल्यू, कितना पैसा मिला लिक्विडेटर को और पेमेंट कितना किया वो अपने को रिकॉर्ड करना है. रिसीट्स, पेमेंट्स, मनी कमिंग इन, मनी गोइंग आउट, दैट्स व्हाई इट्स अ नॉर्मल कैश और बैंक अकाउंट. सी द डेबिट साइड, रिसीट साइड, कैश और बैंक बैलेंस, कितना पैसा था लिक्विडेटर के पास व्हेन द लिक्विडेशन स्टार्टेड, कंपनी उनको कैश दे देगी. असेट्स रियलाइज्ड, कौन से असेट्स? द वन विच वर नॉट गिवन एज अ सिक्योरिटी, जो असेट अपने सिक्योरिटी में नहीं दिया था. याद कीजिए एग्जाम्पल, हमने लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योरिटी में दिया था, प्लांट एंड मशीनरी. वो दो असेट्स यहां पे नहीं लिखोगे. फर्नीचर लिखोगे, इन्वेस्टमेंट्स लिखोगे, स्टॉक लिखोगे, डेटर्स लिखोगे, बीआर लिखोगे. व्हाट यू विल नॉट राइट ओवर हियर इज योर लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी. लैंड एंड बिल्डिंग वाज गिवन एज अ सिक्योरिटी टू आईसीआईसीआई, प्लांट एंड मशीनरी वाज गिवन टू एसबीआई. वो आप कंसीडर नहीं करोगे. रिमेंबर, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज. याद है हमने आईसीआईसीआई को लैंड एंड बिल्डिंग दिया था, उनसे लोन लिया था सिर्फ 10 लाख का, बट वो लैंड एंड बिल्डिंग बेच के कितना पैसा मिला? 25 लाख मिला था. 15 लाख का एक्स्ट्रा मिला था ना, दैट 15 lakhs comes over here. Remember, surplus from securities. And then you have over here is contributories. This is called as contributories. अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास पार्टली पेड शेयर्स है and if the liquidator doesn't have sufficient funds to pay the outside liabilities, तो लिक्विडेटर के पास पावर होता है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनके पास पार्टली पेड शेयर्स है उनको बोलेंगे आप पैसा दो, बिकॉज वी हैव टू मेक द पेमेंट टू अदर अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज. तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पैसा मिलेगा जिनके पास पार्टली पेड शेयर्स है. These people are called as contributories. उनसे पैसा मिला. कितने शेयर्स पे कितना का कॉल किया, that is the amount that you're going to write. Receipts हो गया. Payments देखिए, legal expenses, liquidators remuneration, liquidation expenses. Liabilities secured by floating charge. याद है अपने एग्जाम्पल में debentures, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, ये दोनों आप रिकॉर्ड करोगे. रिमेंबर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसमें प्रेफरेंशियल, outstanding taxes, outstanding salaries and wages with those conditions and others. Others में creditors, bills payable and so on. Total outer column. फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दोगे, कितने शेयर्स है, पर शेयर कितना पैसा दिया, वो रिकॉर्ड होता है. कैपिटल और डिविडेंड सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होता है. एंड फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ डैश, पर शेयर कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न किया, दैट इज रिकॉर्डेड ओवर हियर. रिमेंबर, एंड फाइनली क्लोज दिस अकाउंट, इट हैज टू टैली. जितना पैसा लिक्विडेटर को मिला उतना उसने पेमेंट भी कर दिया, उसके पास कुछ भी बैलेंस नहीं बचा है. कंपनी क्लोज डाउन, दैट मींस दिस अकाउंट हैज टू टैली नाउ. रिमेंबर, सो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स
बाद में बनाएंगे. फर्स्ट हम क्या बनाते हैं? लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. दैट्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वेयर इन ही प्रेजेंट्स कहां से पैसा आया और किसको मैंने पैसा दे दिया. रिमेंबर, दैट्स योर फर्स्ट पार्ट, लिक्विडेटर्स final statement of account. Next, what you have to learn over here is B list contributories. Contributories are shareholders holding partly paid equity shares जिनसे लिक्विडेटर पैसा मांग सकता है. So first of all, contributories, they are equity shareholders holding partly paid shares. Holding partly paid shares, remember. Now ये जो contributories होते हैं ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, A list and B list. A list contributories are existing shareholders as on the date of liquidation. जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हो रही है उस दिन उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन थे उनको कहा जाता है ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज. शेयर होल्डर्स एज ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन. B list contributories are previous shareholders. B list मतलब वो लोग, that people are not shareholders as on the date of liquidation. Liquidation के पहले ही उन्होंने shares बेच दिया था. जिस दिन कंपनी बंद हो रही है उस दिन वो लोग shareholders नहीं थे. उन्होंने shares बेच दिया. किसको बेचा? A list वालों ने उनसे shares खरीदा था. Remember. So B list वाले is previous shareholders before date of liquidation. Now what happens is इनके पास partly paid shares है. Liquidator doesn't have sufficient money to pay the creditors. सारे assets बेच दिए, पैसा आ गया, बट क्रेडिटर्स को पूरा पैसा नहीं मिल रहा है. तो लिक्विडेटर क्या करता है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ए लिस्ट वाले जिनके पास पार्टली पेड शेयर्स है उनसे वो पैसा मांगता है. फुल्ली पेड वालों से आप पैसा मांग नहीं सकते हो. यू कैन डिमांड द मनी ओनली फ्रॉम पार्टली पेड शेयर होल्डर्स. मैक्सिमम लोग पैसा दे देते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं देते बिकॉज दे हैव बिकम बैंकक्रप्ट. सिंपल एग्जांपल, वो बैंकक्रप्ट हो गया, उनके पास पैसे ही नहीं है तो पैसे कहां से देंगे? तो लॉ में प्रोविजन है, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पैसा नहीं दे सकता है बिकॉज ऑफ बैंकक्रप्सी, नो अदर रीजन, रिमेंबर, देन द लिक्विडेटर हैज पावर्स टू रिकवर द मनी फ्रॉम द प्रीवियस शेयर होल्डर, जिनको हम कहते हैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज. अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पैसा नहीं दे सकता है तो लिक्विडेटर किससे पैसा रिकवर करेगा? प्रीवियस शेयर होल्डर, दैट इज बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज. बट बी लिस्ट वालों से पैसा रिकवर कर सकते ओनली इफ द शेयर्स वर सोल्ड विद इन 12 months प्रायर टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन. If sold within 12 months prior to date of liquidation. अगर वो बी लिस्ट वाले ने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 3 साल पहले शेयर्स बेच दिया तो लिक्विडेटर उनसे पैसा नहीं मांग सकता है. It has to be sold within that 12 months तो ही पैसा मिलेगा. How much amount the liquidator will receive? The liquidator will receive the unpaid amount on shares
or unpaid amount on shares or proportionate share in outstanding creditors as on the date of ट्रांसफर. जिस दिन शेयर्स बेचा उस दिन कितने क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है, उसमें इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का क्या शेयर है, प्रोपोर्शनेट शेयर, वो आपको कंपेयर करना है. टू फिगर्स टू बी कंपेयर्ड, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स और प्रोपोर्शनेट शेयर्स इन आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स. इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए एंड द लिक्विडेटर विल रिसीव फ्रॉम द बी लिस्ट shareholder whichever is less. दोनों को कंपेयर किया जाता है और जो कम अमाउंट है वो मिलेगा. रिमेंबर, फुल अमाउंट बी लिस्ट वाले से नहीं मिल सकता है. So B list contributories are previous shareholder. They are not shareholder as on the date of liquidation. Remember, उनसे पैसा कब मिलेगा? Only if the existing shareholder on the date of liquidation doesn't pay the money, who is called as A list contributories. But B list वालों से आप मांग सकते हो only if the shares were sold within 12 months prior to the date of liquidation. How much amount will be received? Unpaid amount on shares or proportionate share in outstanding creditors as on the date of transfer, whichever is less. Remember, small calculations has to be done and accordingly you arrive at the amount that will be received from the B list contributories. Remember, next is statement of affairs. Statement of affairs is prepared by the liquidator immediately once he is appointed. The moment he is appointed as a liquidator, सबसे पहला काम liquidator क्या करता है? Show me the balance sheet of the company which is going to be liquidated. मुझे जानना है कि कंपनी के कौन कौन से assets और कौन कौन से liabilities है. He wants to study the balance sheet of the company. Once he has received the balance sheet, then what the liquidator does is he tries and finds out कि लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा. बेचा नहीं है अभी तक, बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, जिसको कहते हैं हम एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू. So statement of affairs is always prepared on the basis of estimated realizable value. In short, we call it as ERV. Remember, अभी तक उसने एक भी asset बेचा नहीं है. He tries and finds out how much will he receive from the sale of one by one all the assets. बिल्डिंग बेचूंगा तो कितना पैसा मिलेगा, मशीनरी बेचा तो कितना पैसा मिलेगा, स्टॉक से कितना पैसा मिलेगा, डेटर से कितना पैसा मिलेगा एंड सो ऑन. फिर उसमें से मुझे कौन कौन से लायबिलिटीज पे करने हैं. He has to follow the legal order, remember. And then he arrives at a conclusion. Does the firm have sufficient money to pay all external liabilities? Or they don't have sufficient funds? और ये वो explain करता है by preparing a particular document which is called as liquidator's statement of affairs. जब वो ये डॉक्यूमेंट बना रहा है, बी वेरी क्लियर, उसने अभी तक एक भी असेट बेचा नहीं है. He has not yet sold any asset. He is preparing the statement on the basis of estimated realizable value. Remember, again it has a particular format and you are supposed to follow the same over here. Remember, see this liquidator's statement of affairs. Remember, this is always prepared on the basis of estimated realizable value. And see the column, estimated realizable value. Format hai. You have to know this format, pit pat, and then it merely becomes a fill in the blanks chapter, you can say.
assets not specifically pledged, those assets which are not given as a security. इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है आपका कैश और बैंक बैलेंस. It will include your stock, it can include your debtors, it can include your investments, and very important, it will also include your calls in arrears. If the company had made a final call, और अगर कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया था फाइनल कॉल का, we call it as calls in arrears. उनसे पैसा मिलेगा. All this comes in your assets not specifically pledged, remember. इन सब के फिगर्स का ये टोटल है. This is the total of assets not specifically pledged, list A. List B's assets specifically pledged. Secured liabilities against which a particular asset was given as a security. Let's recollect the example. फर्स्ट हमने आईसीआईसीआई से लोन लिया था, तो कौन सा असेट हमने सिक्योरिटी में दिया था? लैंड एंड बिल्डिंग. एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 25 lakhs, जबकि आईसीआईसीआई से लोन कितने का लिया था? 10 लाख का लोन लिया था, विच मींस आपके पास सरप्लस था 15 लाख का ना. सेकेंड, हमने प्लांट एंड मशीनरी सिक्योरिटी में दिया था टू एसबीआई. एसबीआई से जो लोन लिया 25 लाख का लोन लिया था, लेकिन असेट बेच के तो सिर्फ 22 लाख रुपया मिलने वाला था ना, which means there will be a deficiency of 3 lakhs, there is no surplus. तो लिक्विडेटर को ऑलरेडी इतना पैसा मिलने वाला है फ्रॉम असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, प्लस उसको मिलेगा 15 लाख रुपया. ये जो 15 लाख है सरप्लस का टोटल, वो यहां पे आता है. रिमेंबर, अभी तक लैंड एंड बिल्डिंग बेचा नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी बेचा नहीं है. अगर फ्यूचर में बेचेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, अभी तक कुछ भी पैसा मिला नहीं है. He has not even sold a single asset, remember. This is the total amount that the liquidator will have to pay your liabilities, remember. So it's called as estimated amount available for meeting liabilities. Meeting liabilities means paying liabilities. Next part is summary of gross assets. Gross assets means सारे assets बेच के टोटल कितना पैसा मिलने का चांस है. सारे assets बेच के टोटल कितना पैसा मिलने के चांसेस है. लेट्स से यहां पे ये सारे assets बेच के आपको मिलने वाला है 80 लाख रुपीस, और नीचे सरप्लस कितना है? 15 लाख. तो ये कितना हो गया? 95 lakhs आपके पास है दूसरे लायबिलिटीज पे करने के लिए. बट समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स इज डिफरेंट. यहां पे आप क्या कंसीडर करोगे? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड. एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, दैट इज योर लिस्ट बी का ईआरवी कॉलम का टोटल 47 lakhs था ना. 25 plus 22 is 47 lakhs. So this is 47 lakhs. And other assets means list A का assets, वो कितना था? 80 lakhs. तो आपके पास टोटल कितना हो गया? 127 lakhs होगा. How much will you have in all? 127 lakhs. It is just a summary that you have to present. It doesn't affect any calculations, remember. आफ्टर दिस एक नया कॉलम एग्जिस्टेंस में आ गया, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम. ऊपर के पार्ट में देखोगे, ऊपर के फॉर्मेट में देखोगे तो ग्रॉस लायबिलिटी का कॉलम नहीं था. यहीं से वो स्टार्ट होता है एज पर द फॉर्मेट गिवन इन द कंपनीज एक्ट. Secured creditors as per list B. As per list B, how much creditors are settled? Secured liabilities वाले. आईसीआईसीआई कितना लोन लिया था? 10 लाख का. Will you be able to pay full 10 lakhs to ICICI out of the realization of land and building? The answer is yes. क्योंकि 25 लाख आएगा, उसमें से 10 लाख तो आप आराम से पे कर सकते हो ना. But will you be able to pay 25 lakhs to SBI, जिनको हमने प्लांट एंड मशीनरी में सिक्योरिटी दिया था, प्लांट एंड मशीनरी का? द आंसर इज नो.
क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी बेच के कितना मिल रहा है, सिर्फ 22 lakhs मिल रहा है। तो आप पे 22 lakhs ही कर पाओगे ना, 3 लाख नहीं पे कर पाओगे अभी, वो डेफिशिएंसी है, वो बाद में आपको पे करना है। सो अभी आप कितना पे करोगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, तो राइट नाउ यू आर पेइंग देम 32 lakhs। 32 lakhs कैसे आया, इट इज 10 lakhs plus 22 lakhs, रिमेंबर नथिंग इन माय ERV कॉलम। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे करने के बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा, 95 lakhs, which is used for preferential creditors, liabilities with floating charge and other unsecured creditors। लीगल ऑर्डर याद कीजिए, सिक्योर्ड लाइबिलिटीज के बाद नंबर आता है प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज का, फिर आता है लाइबिलिटीज विद फ्लोटिंग चार्ज और फिर आता है अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आप किसको पे करोगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में दो होते हैं, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस होता है एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस होगा ना। whatever amount you are supposed to pay them, write it over here, इसका टोटल यहां पे जाएगा और ये सेम टोटल ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम में भी रिकॉर्ड होगा बट ऑन अ डिफरेंट लाइन। ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम में आप रिकॉर्ड करोगे इन द लाइन ऑफ हेडिंग लिस्ट सी, जो हेडिंग लिखा है उस लाइन में रिकॉर्ड करना है, जबकि ईआरवी कॉलम में 2-3 लाइंस के बाद आइटम्स हो जाने के बाद उसका टोटल वहां पे रिकॉर्ड होता है। तो 95 lakhs कैश था लिक्विडेटर के पास, उसमें से वो प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज वालों को पे कर देगा और फिर जो पैसा बचेगा दैट इज योर एस्टिमेटेड अमाउंट अवेलेबल फॉर liabilities with floating charge and other unsecured creditors। फिर लिस्ट डी, liabilities with floating charge, इसमें आप क्या पे करोगे, डिबेंचर्स को पे करोगे and you will pay outstanding interest but only up to date of liquidation। इसमें लीगल ऑर्डर 8th पॉइंट नहीं आता है, दैट इज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन टू द डेट ऑफ पेमेंट। बिकॉज जब ये स्टेटमेंट लिक्विडेटर बना रहा है उसको नहीं पता है कि मैं एक्चुअली डिबेंचर होल्डर्स को कितने मंथ्स के बाद पैसा देने वाला हूं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उसको नहीं पता। हाउ कैन ही कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फ्यूचर पीरियड व्हेन ही डजंट नो द फ्यूचर पीरियड। तो यहां पे आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट ओनली अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। आगे का इंटरेस्ट अभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो आप पे भी नहीं करोगे। रिमेंबर, प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल पे किया माइनस करो, सेम टोटल ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम में भी आएगा। रिमेंबर, फिर जो बैलेंस बचेगा दैट इज योर एस्टिमेटेड अमाउंट अवेलेबल फॉर अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर आप पे कीजिए अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसमें क्रेडिटर्स आएंगे, बिल्स पेबल आएंगे, दूसरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे प्लस डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट बी। प्लस डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट बी मतलब वो एसबीआई का लोन 3 लाख रुपया जो देना बाकी था वो आएगा, प्लस balance of preferential liability if any। अगर कुछ सैलरीज पे करना रह गया जो 20,000 से ज्यादा है, कुछ टैक्सेस पे करना रह गया है विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months, तो वो सब भी आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। फाइंड आउट द टोटल अमाउंट पेड टू देम एंड सेम फिगर अपीयर्स इन माय ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम आल्सो। रिमेंबर, पे करने के बाद जो बैलेंस पैसा बचेगा दैट इज द टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। बट व्हेन यू पे द शेयर होल्डर्स, पहले आप किसको पे करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बचा तो दैट विल गो टू माय इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो लिस्ट एफ इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको पेमेंट कर दो, फिर जो बैलेंस बचेगा दैट इज अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस होल्डर्स को जो पे किया वो ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम में भी आएगा ना।
And now this balance, जो भी balance cash बचा है, that you are supposed to pay to the equity shareholders. But find out, actually you were supposed to pay how much? Remember, it's a liquidation. Company is closing down. It's a voluntary liquidation, which means it's a loss-making company which is closing down. तो logically सोचोगे, तो liquidator के पास जो पैसा होगा ना, that will always be less as compared to the amount payable to the shareholders. So find out how much amount was payable. Paid up capital. This is nothing but your paid up equity share capital. And one thing is guaranteed. Amount available for equity shareholders will always be less than the paid up equity share capital. So you will be having deficiency. फॉर्मेट में सरप्लस भी लिखा हुआ है, एंड दैट लॉजिकली कब आएगा? इफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज क्लोज डाउन ऑन अकाउंट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द कोर्ट. अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बंद हो रहा है, देन यस देयर विल बी अ सरप्लस. बट वॉलंटरी में तो ऐसा नहीं होता ना. So this is what you are supposed to prepare under your statement of affairs. Remember, this statement is always prepared on the basis of estimated value. It is always prepared once he is appointed. Remember, जब वो ये statement बना रहा है, he has not sold a single asset. ये स्टेटमेंट बनाते वक्त आप 4 फिगर्स रिकॉर्ड नहीं करते हो जो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है. यहां पे कौन कौन से फिगर्स आप रिकॉर्ड नहीं करते हो? You don't record legal expenses in statement of affairs. You don't record liquidators remuneration. You don't record liquidation expenses, and you don't record interest on liabilities with floating charge from the date of liquidation to the date of payment. क्योंकि अभी तक आपने किसी को पैसा दिया ही नहीं है. How do we calculate that period? Remember, so that's not possible. So this is your liquidator's statement of affairs. It's a format. You need to know the format really very well, and then once you know the format, it becomes a fill in the blanks chapter. Remember. So with this, we complete revision of liquidation of companies chapter.
Okay, the next chapter that we are going to revise is financial statements of banking company. Financial statements of banking companies. Now here you are not going to learn only how to prepare the final accounts of the bank. That's a part of your syllabus, remember? But besides that, you have to learn various small provisions in case of a bank, and how do we do accounting in certain specific transactions of the bank, remember. So here this chapter will include small areas, small calculations, small provisions in case of a bank, remember. First of all, the main business of a bank. The main business of a bank is basically divided into two categories, remember. One is accepting deposits, and second is giving loans. Accepting deposit means accepting money from the general public. It is in the form of current accounts, which a businessmen and professionals have, remember. Savings account, all of us have one, remember. Then there is a fixed deposit account, and there will be one recurring deposit account. Four main places from where the bank receives money, remember. So bank receives money from the general public, and this money the bank uses it for giving loans. They give loans for purchasing a house, for doing business, for purchase of machinery, for purchase of car, for various reasons. Bank gives loan, remember. So main business of any bank is basically classified in two categories: accepting deposits and giving loans. Accepting deposits, this will be their main liability or a major liability. In any bank's balance sheet, the liabilities will have various items, and the major one with the highest amount will normally be deposits schedule, you can say. Giving loans, that's their major asset, remember. This is their major asset, and technically this particular item is called as advances. Technically this particular item is called as advances. So now the main business we have already discussed. Now the main asset of the bank, that's the major asset, advances, are basically repaid by the people in installments over a period of time, remember. Whenever a person takes a loan from the bank, it is normally paid in EMIs, equated monthly installments over a period of time. Now these advances of a bank are basically classified into two categories as per the RBI guidelines, remember. All banks have to follow the RBI guidelines. Whatever RBI says, they have to follow. These advances are basically classified into two categories. One will be performing assets, and second is non-performing assets. Performing assets, we simply call it as PA, and non-performing assets, we call it as NPA. Now, what are performing assets and what are non-performing assets? RBI has defined performing assets as those assets which are not non-performing assets. So, what are non-performing assets? Non-performing assets are those assets which are outstanding for a period of 90 days or more, remember.
So if a particular person has not paid the money for 90 days, then that particular account is classified as a non-performing assets. 90 days, don't treat it as 3 months. Yes, it is equivalent to 3 months, but it has to be specified as 90 days. So non-performing assets are accounts outstanding for a period more than 90 days. So what are performing assets? Performing assets are those accounts which are being paid regularly. We call it as which are being serviced regularly. जो कस्टमर रेगुलरली पैसा दे रहा है, ईएमआई दे रहा है, नो डिफॉल्ट, हिज अकाउंट इज कॉल्ड एज अ परफॉर्मिंग एसेट. सपोज अगर किसी पर्सन ने एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, ओनली वन ईएमआई ही हैज नॉट पेड, सो कैन वी से हिज अकाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 90 days. His account is also classified as a performing asset. किसी ने 2 EMIs नहीं दिया है, वो भी performing asset गिना जाएगा, remember. So only once the account is not received for a period of more than 90 days, it automatically becomes a non-performing asset. This classification the bank does 4 times in a year. At the end of each quarter, first quarter end होता है 30th June, 30th September, 31st December and 31st March. At the end of each quarter, बैंक एनालाइज करते हैं कि हमने जिन लोगों को पैसा दिया है, लोन दिया है, आर दे गिविंग अस द मनी ऑन टाइम. अगर कोई कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो कितने डेज से वो आउटस्टैंडिंग है. अकॉर्डिंगली अगर 90 डेज से कम आउटस्टैंडिंग होगा तो वो परफॉर्मिंग असेट गिना जाएगा. एंड इफ द अकाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट डिफाइन किया जाता है. नॉन परफॉर्मिंग असेट मींस वहां पे रिस्क बढ़ गया है, पैसे डूबने के चांसेस आर मोर. रिमेंबर, परफॉर्मिंग असेट रेगुलरली पैसा मिल रहा है. सो मेजर advances has to be always classified into 2 categories, whether they are performing assets or non-performing assets. अब अगर बैंक ने लोन दिया है तो उसपे बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, which is the major income of any bank, remember. Now this income of the bank has to be classified on the basis of performing assets and non-performing assets. So how do we recognize income? It is called as income recognition. It is called as income recognition. The major income of the bank will be interest on advances. So should it be recognized on accrual basis or should it be recognized on cash basis? Income, 2 type of assets, performing assets, non-performing assets. Performing assets पैसा रेगुलरली मिल रहा है, किसी ने एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, अकाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर लेस देन 90 डेज, उसको परफॉर्मिंग असेट कहा जाता है. एंड इनकम ऑफ परफॉर्मिंग असेट्स इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूअल बेसिस. Accrual basis means income is earned but not yet received from the customer. फिर भी उसको recognize किया जाएगा. It will be shown in the P&L of the current year as income receivable in the balance sheet thereafter. So accrual basis, पैसा कमाया, you should have received the income but you have not yet received the income. Whereas in case of a non-performing asset, it's more than 90 days और कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है. सो आरबीआई कहता है कि यहाँ पे पैसे मिलने के चांसेस कम हैं, बैड डेट्स के चांसेस ज्यादा है. डोंट रिकॉग्नाइज द इनकम ऑन अक्रूअल बेसिस. रिमेंबर, अगर फ्यूचर में वो कस्टमर आके पैसा देता है, अकाउंट क्लियर करता है, सेटल करता है, तो जब पैसा मिलेगा तब इनकम रिकॉग्नाइज करने का अक्रूअल सिस्टम पे नहीं. So in case of non-performing asset, income has to be recognized on cash
basis. If it is received, it is income. If it is earned, accrued, not yet received, it should not be considered as an income, remember. So the first classification is of income recognition, performing assets and non-performing assets के basis पे. At the same time, these particular assets are to be classified into different categories जिसपे provisions करना पड़ता है. In case of normal businesses, we do make RDD, but that's voluntary. एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि मुझे कितना आरडीडी क्रिएट करना है, नहीं करना है, परसेंटेज फिक्स्ड नहीं होता है. बट इन केस ऑफ बैंक्स, all banks have to follow the guidelines specified by the RBI, remember. And RBI ने specific rates mention किया हुआ है. This is the rate at which RDD should be provided. इससे कम रेट पे नहीं करने का. हाँ, अगर किसी बैंक को ज्यादा आरडीडी क्रिएट करना है एट अ हायर रेट, मोस्ट वेलकम, बट कम रेट पे अलाउड नहीं है. सो नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इज what is the rate of provision that every bank has to make, remember. No choices, whether it's a public sector bank or a private sector bank, whether it's a big bank or a small bank, every bank has to follow these provisions, remember. ये rates सभी banks के लिए same है. It is specified by the RBI. These are the minimum rates. इससे ज़्यादा अगर किसी को provision करना है तो कर सकता है, इससे कम provision allowed नहीं है, remember. So now RDD rates over here. आरडीडी प्रोविजन किस पे करोगे? एसेट पे. कौन से एसेट पे? मेजर एसेट. मेजर एसेट कौन सा है? एडवांसेस. एडवांसेस मतलब लोन्स गिवन. उस पे आपको आरडीडी क्रिएट करना है. So now how do you find out and what is the percentages? This percentages you are supposed to remember over here. First of all, एडवांसेस. एडवांसेस को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया. वन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड असेट्स, वन इज कॉल्ड एज substandard assets, one is called as doubtful assets, and the next is called as loss assets, remember. Standard, substandard, doubtful and loss assets. What are standard assets? Standard assets are basically your performing assets. जो कस्टमर रेगुलरली पैसा दे रहे हैं और who are outstanding for a period of less than 90 days, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड असेट्स, रिमेंबर. इस स्टैंडर्ड असेट्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं. It is basically divided into 3 parts. One is small and medium enterprises and agricultural sector, farmers basically. Second is commercial real estate, and third is others. Small and medium enterprises and agricultural sector, second is commercial real estate, and third is others. Over here, commercial, small and medium enterprises, they have to make a provision of only 0.25%. Whatever is the advance amount, uska 0.25 is the provision that the bank has to make in case of small and medium enterprises and agricultural sector. Commercial real estate, they have to make a provision at the rate of 1%. And others have to make a provision at the rate of 0.4%, remember. So अगर क्वेश्चन में वो कहते हैं प्लीज क्रिएट आरडीडी और कैलकुलेट आरडीडी,
और अगर उन्होंने सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट दिया, ये स्पेसिफाई नहीं किया ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है या कमर्शियल रियल एस्टेट है या अदर्स है, अगर वो स्पेसिफाई नहीं किया देन यू विल ऑलवेज कंसिडर इट एज अदर्स, रिमेंबर। और कितना प्रोविजन करोगे? 0.4%। यू हैव टू रिमेंबर द रेट्स, देयर इज नो अल्टरनेटिव। एग्जाम में कौन से टाइप का असेट है वो देंगे, उसका एडवांस अमाउंट क्या है वो देंगे, परसेंटेजेस आपको याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई विद द एडवांस अमाउंट एंड यू विल गेट द प्रोविजन अमाउंट, रिमेंबर। स्टैंडर्ड असेट्स आर परफॉर्मिंग असेट्स. Next is substandard assets. Substandard assets are non-performing assets for less than 12 months. They are non-performing assets for less than 12 months. मतलब वो non-performing हो गया, 2 महीना non-performing है, 3 महीना non-performing है, up to 12 months if they are non-performing, it becomes a substandard assets. अब substandard assets में first 2 categories है, secured and unsecured. Secured and unsecured. Secured means some asset was received as a security from the customer, like a housing loan. अगर बैंक ने हाउसिंग लोन किसी को दिया है तो सिक्योरिटी में क्या लिया होगा? वो घर सिक्योरिटी में लिया है, रिमेंबर। सो अगर किसी आदमी ने हाउसिंग लोन लिया लेकिन 6 महीने से ईएमआई नहीं पे किया, he has not paid EMI for 6 months. So remember, when the bank is classifying, first of all it will be classified as a non-performing asset because 3 months से ज्यादा outstanding हो गया. Once it is non-performing assets, it comes under substandard and it will be called as secured. Why secured? Because the house is given as a security. अगर वो आदमी ने लोन रीपे नहीं किया, हाउसिंग लोन, तो बैंक क्या करेगा? वो घर बेच देगा, ऑक्शन किया जाता है, उससे पैसा रिकवर होगा, बैंक अपना ड्यूज रखेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिला कस्टमर को रिटर्न कर दिया जाता है. दैट इज सिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड, नो asset was received as a security, remember. Unsecured में भी 2 categories है, escrow infrastructure loan and others. Escrow infrastructure loan, this is on account of basically government projects, remember. So no asset is taken as a security. Now in case of secured, the provision that you have to make is 15% of the advance amount. जितना भी outstanding advance है उसका 15% provision करना है. Unsecured escrow, it will be 20% and others will be 25%. अगर क्वेश्चन में सिर्फ सबस्टैंडर्ड असेट दिया, सबस्टैंडर्ड असेट एडवांस अमाउंट 10,000 crores, बट वो बताना भूल गए कि ये सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है तो एस्क्रो है, अदर्स है, कुछ नहीं दिया, सिर्फ सबस्टैंडर्ड 10,000 crores. Then what are we supposed to do? If nothing is given, it is always treated as secured. और आप कितना परसेंट प्रोविजन करोगे? 15% प्रोविजन किया जाएगा. So substandard we have seen. Doubtful over here. Doubtful. What are doubtful assets? Doubtful assets are those assets which are NPA for more than 12 months. They are non-performing assets for more than 12 months, remember. So, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई कस्टमर 1 महीना 2 महीना पैसा नहीं देता है, आरबीआई कहता है डोंट वरी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लोगों को लेकिन पैसा मिलेगा, सो परफॉर्मिंग असेट्स.
3 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, पैसा नहीं दे रहा है, more than 90 days, it will be classified as a non-performing asset, and the moment it becomes a non-performing asset, it is classified as substandard asset. अगर सेम अकाउंट 12 मंथ से ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग रहता है, then after substandard it will be then classified as doubtful. So first of all, an account is always performing. पैसा नहीं दिया 90 डेज के लिए तो उसको सबस्टैंडर्ड कहा जाता है, और 12 महीने तक पैसा नहीं दिया देन इट बिकम्स डाउटफुल. डाउटफुल में अगेन देयर विल बी टू कैटेगरीज. Secured and unsecured. Unsecured, no asset was received as a security. एंड सिक्योर्ड को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है. अप टू 1 year, 1 year to 3 years, more than 3 years. Up to 1 year, 1 year to 3 years, and more than 3 years. क्वेश्चन में क्लियर बाइफिकेशन होता है. Doubtful assets up to 1 year, doubtful assets for 2 years, doubtful assets for 4 years. You should know the period, remember. If it is up to 1 year, then you have to make a provision of 25%. 1 year to 3 years hai, then you have to make a provision of 40%. If it is doubtful for more than 3 years, you have to make a provision of 100%. And if it is unsecured, no asset was received as a security, then you have to make a provision of 100%. It's NPA for more than 12 months. मतलब logically अगर count करोगे ना, 15 महीना हो गया और वो पैसा नहीं दे रहा है, more than 15 months and is not giving the money, no asset is received as a security, मतलब पैसे डूबने के chances पूरे हैं, पूरा bad debts हो सकता है. That's why you have to make 100% provision as no asset was received as a security. And the last is loss asset. लॉस असेट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है. That if a person doesn't give the money for 5 years, it should be treated as loss asset. If a person doesn't give for 10 years, it should be treated as loss asset. No. कौन डिसाइड करेगा a particular account is a loss asset or not? 3 लोगों के पास पावर्स है. First is the management of the bank. बैंक का मैनेजमेंट खुद डिसाइड करेगा कि हमने जिस कस्टमर को पैसा दिया है, जो पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, should we classify him as a loss asset? Second is the auditors of the bank who are doing the audit, who are checking the books of accounts, and if they come across while checking the books of accounts an account of a particular customer जिसपे ऑडिटर को लगता है कि ये आदमी से पैसे मिलने के चांसेस 0 है, he has to recommend to the management that please consider this particular customer's account as a loss asset and accordingly provisions कीजिए. And the third party is the RBI itself. RBI will tell the bank इस particular customer के account को आप loss asset consider कीजिए and provisions कीजिए. So loss asset के लिए कोई time limit नहीं है, remember. It's decided by the management, the auditors or the RBI, and loss asset में provision has to be made of 100% of the advance amount. These percentages you have to remember. Advance amount will be given, then just apply these percentages and you will get the amount of provisions to be made, remember. Next is ECGC and DICGC. Export Credit Guarantee Corporation and Deposit and Investments Credit Guarantee Corporation. Normally they just use the word ECGC and DICGC. These are government department which gives a guarantee to the bank
कि आप बिजनेसमैन को लोन दीजिए, अगर बिजनेसमैन ने पैसा नहीं दिया तो हम आपको पैसा देंगे, बट 100% लोन का गारंटी कभी नहीं गवर्नमेंट देती है। दे फर्स्ट टेल द बैंक जितना हो सके उतना उनसे सिक्योरिटी लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है 100% सिक्योरिटी तो जो अनसिक्योर्ड पोर्शन होगा उसका हम गारंटी देंगे, बट वो भी पूरा 100% नहीं दिया जाता है। रिमेंबर, let's take a very simple example. Whether it is ECGC or DICGC, the calculations will remain the same. सिर्फ नाम change हो रहा है, otherwise there is no change in the calculations. Remember, advance given was, let's say, 100 lakhs. Security received, let's say the security received was 25 lakhs. ECGC cover is, let's say, only 40%, and account is doubtful for 2 years. Account is doubtful for 2 years, remember. Now, how do we do this calculations? एडवांस कितना है? 100 lakhs का ना। इसको सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। सिक्योर्ड दिया है 25 lakhs, तो बैलेंस हैज टू बी अनसिक्योर्ड, कितना होगा? 75 lakhs होगा ना। ना ECGC कवर दिया है 40%, मतलब गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है 40%, बट 40% किसका? 40% ऑफ द अनसिक्योर्ड पोर्शन का। अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है यहाँ पे? 75 lakhs। इसमें से माइनस कीजिए ECGC, हाउ मच? 40%। 75 lakhs का अगर आप 40% कैलकुलेट करोगे तो 30 lakhs आएगा ना। तो बैलेंस अनसिक्योर्ड विल बी 45 lakhs. Balance unsecured is 45 lakhs. Now, how much provision has to be made? Amount of provision. कितना provision बैंक करेगी? Remember, it is doubtful, secured. Doubtful, secured, 2 years. डाउटफुल सिक्योर्ड अगर ऊपर देखोगे इट कम्स 2 years, कम्स बिटवीन 1 year to 3 years, रिमेंबर। और उस पे कितना प्रोविजन करना है आपको? 40% प्रोविजन करना है। सो डाउटफुल सिक्योर्ड इज हाउ मच? 25 lakhs। उसका 40% आप प्रोविजन कीजिए, दैट विल गिव यू 10 lakhs का प्रोविजन, प्लस अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड कितना है? 45 lakhs, और अनसिक्योर्ड पे कितना आता है? 100%, मतलब कितना प्रोविजन? 45 lakhs। तो टोटल प्रोविजन आप कितना करोगे? 55 lakhs ऑन दिस स्पेसिफिक अकाउंट। इस कस्टमर को हमने एडवांस दिया है 100 lakhs का, इस पे आप प्रोविजन कितना करोगे? 55 lakhs का प्रोविजन आपको करना है। So this is ECGC. Whether they use the word ECGC or DICGC, the calculation concept remains the same. Nothing changes, remember. So that was the next concept in your banking. Next is bills discounted. Bills discounted.
The drawer discounts the bill with the bank. तो ड्रॉवर के बुक्स में इफ यू रिकलेक्ट योर बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, bill of exchange chapter, when the drawer discounts the bill with the bank, हम drawer के books में क्या entry record करते थे? Bank account debit, discount account debit to bills receivable account. Now सोचिए बैंक के बुक्स में सेम ट्रांजैक्शन का क्या एंट्री आएगा? Bank is also doing a business. Bank is also maintaining books of accounts, remember. So when a drawer discounts the bill with the bank, bank भी entry record करेगा उनके books में, remember. Entry in their books will be bill purchased account debit. बैंक ने bill खरीदा from the drawer. So bill purchased account debit to client's account, customer's account. बैंक पैसा देती है उस आदमी को बट कैश नहीं दिया जाता है. That person will be an account with the bank. उस अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. And you will have to discount account. Let's take hypothetical figures. बिल कितने का डिस्काउंट किया? 1 लाख का. कितना पैसा बैंक ने दिया? 98,000. तो कितना डिस्काउंट था? 2,000 रुपीस था. And let's say the bill was discounted on 8th March 22. बिल कब डिस्काउंट किया? 8th March 22. Discount is credited with rupees 2,000. That's the income of the bank, remember. अब इनकम है तो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. ऑन द क्रेडिट साइड नॉर्मल है ना. बट व्हाट दे टेल यू इज द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल इज लेट्स से 1st June 22. मतलब बैंक को ड्रॉई से पैसा मिलेगा बट कब मिलेगा? ऑन द ड्यू डेट. ड्यू डेट कब है? 1st June 22 को मिलेगा. Now think 1st June 22, can I say falls in the accounting year 22-23? Assuming April to March is your accounting year. और 8th March 22 अगर सोचोगे तो this falls in the accounting year 21-22. दोनों अलग अलग accounting years के dates है, remember. 8th March in the year 21-22, 1st June in the year 22-23, remember. तो आपने जो 2,000 रुपए का डिस्काउंट कमाया, यू हैव क्रेडिटेड डिस्काउंट विद रुपीस 2,000, वो किसी एक ईयर का पूरा इनकम नहीं है. दैट इनकम हैज टू बी डिवाइडेड ओवर दिस पीरियड, रिमेंबर. सो योर डिस्काउंट इनकम इज 2,000. इट इज फॉर द पीरियड 8th March 22 to 1st June 22. Count, it's a period of how many days, remember. कैसे count करोगे? Very simple. March in all has how many? 31 days. उसमें से 8 दिन निकाल दो. So 23 days of March plus 30 days of April, that becomes 53, plus 31 days of May, that becomes 84, plus 1 day of June. 85 days का इनकम है. This income is of 85 days. बैंक ने 2,000 रुपया कमाया but over a period of 85 days. और ये पूरे 85 days किसी एक accounting year में नहीं आते हैं. It is to be divided over 2 accounting years. तो ये जो इनकम है इसको आपको डिवाइड करना है between 21-22 and 22-23 based on the number of days. Based on the number of days. अब 83 days में से current year 21-22 में can I say there will be only 23 days? 31st March minus 8th March.
तो बैलेंस 62 days विल बी इन योर नेक्स्ट ईयर। तो ये जो 2000 रुपए आपने इनकम कमाया, इसको 2 साल में डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। रिमेंबर 85 डेज को इस रेटिकुलर रेशियो में डिवाइड कीजिए। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो नाउ लेट्स यूज द कैलसी। 2000 divided by 85 into 23, this is 541. You are getting it after rounding off. Don't write the figures in पैसेस। और यहां पे कितना आएगा? बैलेंस अमाउंट 2000 minus 541, that gives me 1459. Remember, 31st March 22। ईयर एंडिंग पे आप क्या करोगे? हमने जो इनकम क्रेडिट किया था 2000 डिस्काउंट, इसमें से नेक्स्ट ईयर का इनकम कितना है? 1459। इट नीड्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इट इज नॉट एन इनकम ऑफ द करंट ईयर, इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द नेक्स्ट ईयर, इट हैज टू बी शोन इन द P&L ऑफ नेक्स्ट ईयर। रिमेंबर, so here you are supposed to pass a journal entry. Discount was credited when the bill was purchased. Remember, हमने डिस्काउंट क्रेडिट किया था, बट 2000 करंट ईयर का इनकम नहीं है, इसमें से नेक्स्ट ईयर का इनकम है 1459। इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। इनकम्स ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब करंट ईयर का इनकम कम कर रहे हो, तो एंट्री फॉर द सेम विल बी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 14592. A specific name is given by the RBI, we call it as rebate on bill discounted account 1459. करंट ईयर का इनकम कम हो जाएगा, इट इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। रिमेंबर, so if you want to find out the discount income for any year, if you want to find out the discount income for any year, how do we calculate the same? Discount income for the year. Closing rebate will automatically become the opening rebate of the next year. So next year you will be having some opening rebate. Same way last year भी तो ऐसे ही हुआ होगा, bills must have been discounted during the end of the year, तो उसमें से कुछ इनकम उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया होगा। So discount income for the year is calculated as opening rebate on bill discounted. ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है। व्हाट यू विल हैव टू कैलकुलेट इज ओनली द क्लोजिंग रिबेट फिगर, जैसे हमने ऊपर किया। सो ओपनिंग रिबेट, इसमें आप ऐड कीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और अब माइनस करोगे क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, और फिर जो आपको बैलेंस मिलेगा दैट इज योर डिस्काउंट इनकम फॉर द ईयर, और ये आपके P&L में अपीयर करेगा। This amount will appear in your P&L, remember. So this was regarding bills discounting, remember. बैंक के लिए इनकम होता है, and accordingly that income has to be divided over 2 years if the bills were discounted towards the end of the year और उसका ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर में अगर आता है तो। अगर आपने बिल डिस्काउंट किया जून में और उसका ड्यू डेट अगर अगस्त है, तो वो तो सेम अकाउंटिंग ईयर में आएगा ना, उसमें ये सब कैलकुलेशंस नहीं आएगा। This calculation comes only on account of those bills which are discounted towards the end of the year, but जिसका due date will fall in the next accounting year, remember. Next concept होता है
bills for collection. बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर याद करोगे तो ड्रॉअर के पास चौथा ऑल्टरनेटिव था, सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो ड्रॉअर क्या करता है, बैंक को जाके बिल दे के आता है, एंड ही टेल्स द बैंक ऑन द ड्यू डेट यू गो टू द ड्रॉइज प्लेस ऑन माय बिहाफ। ड्रॉअर ने बैंक को बिल बेचा नहीं है। The drawer is asking for a service from the bank कि ड्यू डेट पे मैं नहीं हूं, तो आप मेरे बिहाफ पे ड्रॉई के पास जाइए, ड्रॉई को ये ओरिजिनल बिल ऑफ एक्सचेंज दीजिए, ड्रॉई आपको पैसा देगा और वो पैसा आप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। He is simply asking for a service from the bank. उसने बैंक को बिल बेचा नहीं है। इट्स नॉट डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, रिमेंबर ओवर हियर। तो लॉजिकली सोचोगे तो बिल बैंक का प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक उस बिल का मालिक नहीं है, तो लॉजिकली देयर शुड हैव बीन नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बैंक व्हेन the drawer gives the bill to the bank for collection purpose. Discounting के वक्त entry आएगा, we have seen at the top, remember. But if the bill is given for collection, logically in the books of the bank there should have been no journal entry. Drawer के books में आप entry record करते थे, bills sent to bank for collection account debit to bills receivable, or bills for collection account debit to bills receivable. But बैंक के बुक्स में लॉजिकली एंट्री नहीं आना चाहिए था, बट आरबीआई कहता है नहीं, आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे। तो इन द बुक्स ऑफ बैंक, बुक्स ऑफ बैंक, if the bill is received for collection from the drawer who is one of their customer client, तो बैंक क्या एंट्री रिकॉर्ड करती है? सिंपल एंट्री बैंक रिकॉर्ड करती है, बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट। इट गेट्स कैंसल्ड लॉजिकली सोचोगे तो, जितना आप डेबिट करोगे उतना ही आप क्रेडिट भी करोगे। असेट लायबिलिटी, इट गेट्स कैंसल्ड। इट डजंट अपीयर एनीवेयर इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आइटम ना ही आपके पीएनएल में आएगा, नाइदर इट विल अपीयर इन योर बैलेंस शीट। रिमेंबर, इट डजंट अफेक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिगर, बट स्टिल इट हैज टू बी रिकॉर्डेड फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। रिमेंबर, मान लो द बिल वाज ऑफ 10 लाख रुपीस। कितने का बिल मिला था कलेक्शन के लिए? 10 लाख। अब क्या होगा? ड्यू डेट आएगा, और ड्यू डेट पे सोचोगे तो दो पॉसिबिलिटीज है, द बिल इज आइदर ऑनर्ड और द बिल विल बी डिसऑनर्ड। रिमेंबर, it is either honored or dishonored. Honored मतलब ड्रॉई ने बैंक को पैसा दिया ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रॉअर, बैंक को पैसा मिला ना, so what accounting bank will do in their books of accounts? First thing, जो एंट्री उन्होंने रिकॉर्ड किया था ऑन द डेट द बिल वाज रिसीव्ड फॉर कलेक्शन, ऊपर हमने रिकॉर्ड किया बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी, उस एंट्री को बैंक कैंसिल करेगा बिकॉज द जॉब इज डन। जाके वो पैसा लेके आए ना, सो एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे उसके लिए? बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन asset account, amount was 10 lakhs, और बैंक को पैसा मिला, honored, ड्रॉई ने पैसा दिया। रिमेंबर, so the second entry that the bank will record will be cash account debit to customers account, clients account। जिस कस्टमर ने, ड्रॉवर ने बैंक को बिल दिया था फॉर कलेक्शन,
उसके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, उतना बैलेंस बढ़ेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रॉवर्स बैंक अकाउंट, रिमेंबर। और अगर बैंक ने कुछ कमीशन चार्ज किया, सर्विस प्रोवाइड किया, तो फ्री में नहीं करेंगे ना, बैंक में चार्ज सम कमीशन। अब ये कमीशन बैंक किससे रिकवर करेंगे? कस्टमर, ड्रॉवर से रिकवर किया जाता है, नॉट फ्रॉम द ड्रॉई, रिमेंबर। So in that case, you will have one more entry in the books of the bank, and that will be customer account debit to commission account, or they call it as bank charges something or the other. Amount देंगे 200, 500, 1000, 2000 रुपया, something will be given, accordingly you record it, remember. This is if the bill is honored. बैंक गया, ट्रॉय ने पैसा दिया, but दूसरा possibility है ना, डिसऑनर्ड, ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया, बैंक वेंट टू द ड्रॉइज प्लेस, बैंक ने ड्रॉई को बिल बताया, बोला आज ड्यू डेट है, आज आपको पैसा देना है, ड्रॉई कहता है सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा, द बिल वाज डिसऑनर्ड। बैंक हैज डन हिज जॉब, बैंक कम्स बैक एंड देन दे आर गोइंग टू सपोज टू रिकॉर्ड द एंट्री। बैंक की एंट्री रिकॉर्ड करेगा, दिस एंट्री रिमेन्स द सेम, दैट इज बिल्स फॉर कलेक्शन, liability account debit 10 lakhs to bills for collection asset account, amount will be 10 lakhs. ये नहीं आएगा, पैसा मिला नहीं तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा ना, बट बैंक कमीशन चार्ज करेगा। बैंक सेज वी हैव प्रोवाइडेड अ सर्विस, हम गए थे ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, इसमें हमारी क्या गलती है? We want our commission because we have provided you a service, remember. Drawer cannot say no. And remember, ऐसे भी बैंक चार्जेस है ना, बैंक कभी कस्टमर को पूछ के उनके अकाउंट को डेबिट नहीं करते, डायरेक्टली हो जाता है। So this entry will remain same. That is customer's account debit to commission account, remember. This is what you call it as bills for collection. एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज AEOO. फुल फॉर्म इज acceptances, endorsements and other obligations. Acceptances, endorsements and other obligations. A simple example. Many a times क्या होता है ना, bank gives a guarantee on behalf of its customers to someone else. किसी को बैंक गारंटी देती है कि ये कस्टमर आपको पैसा देगा, नहीं दिया तो हम आपको पैसा देंगे. Guarantees are given by the bank on behalf of their customers. ये नॉर्मली बिजनेसेस में होता है. अगर बिजनेसमैन ने कोई ऑर्डर प्लेस किया, बड़ा ऑर्डर, बड़ा अमाउंट पे करना है, तो बैंक गारंटी देता है उस सप्लायर को कि अगर ये बिजनेसमैन ने पैसा नहीं दिया तो हम आपको पैसा देंगे. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस. तो बैंक क्या करता है, एक स्टैम्प पेपर पे उनका एक फॉर्मेट होता है, वो लिख के वो सप्लायर को दे देगा. हम आपको गारंटी देता है कि ये कस्टमर आपको 100 करोड़ रुपया देगा, नहीं दिया तो हम आपको 100 करोड़ देंगे. 100 crores इज जस्ट एन एग्जांपल, रिमेंबर. तो जब बैंक गारंटी देता है तो सिर्फ एक पेपर पे लिख के देता है दैट वी आर गारंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर कस्टमर हु इज वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, कि वो पैसा देगा, नहीं देगा तो हम आपको देंगे. बट रिमेंबर, जिस दिन बैंक ने गारंटी दिया टू दैट पर्टिकुलर सप्लायर, बैंक ने पैसा भी उस सप्लायर को नहीं पे किया था, सिर्फ पेपर पे लिख के दिया कि अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो हम आपको पैसा देंगे. रिमेंबर, acceptances, endorsements and other obligation comes into existence. Remember, लॉजिकली सोचोगे तो जब बैंक गारंटी देता है देयर शुड हैव बीन नो जर्नल एंट्री, बट आरबीआई कहता है नहीं, बैंक एंट्री रिकॉर्ड करेगा. तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा इन द बुक्स ऑफ बैंक ऑन द डे द बैंक गिव्स अ गारंटी. रिमेंबर, और बैंक एक सिंपल एंट्री रिकॉर्ड करता है, acceptances, endorsements and other obligations
asset account debit to acceptances, endorsements, other obligations, liability account. Let's say 100 करोड़ का गारंटी बैंक ने दिया था ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर. अब वो काम हो गया, सप्लायर ने सबमिट कर दिया होगा, मशीन्स अगर खरीद रहे होगा तो उस इंस्टॉल कर दिया, डिलीवर कर दिया. सो नाउ द क्लाइंट इज सपोज टू पे 100 crores टू दैट सप्लायर ना. सो सेकंड नाउ थिंग, on the due date, दो पॉसिबिलिटी है. क्लाइंट ऑनर्स द कमिटमेंट, client does not honor the commitment. Simple. क्लाइंट ने ऑनर किया मतलब कस्टमर ने पैसा दे दिया उस सप्लायर को. कस्टमर ने अगर पैसा दे दिया तो बैंक को फिर से 100 करोड़ देना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो. So the moment the customer pays the money to that particular supplier, वो कस्टमर क्लाइंट बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने उनको 100 करोड़ दे दिया है, अब आप फ्यूचर में फिर से उनको 100 करोड़ मत देना, तो आपने जो गारंटी दिया वो कैंसिल कर दो. रिमेंबर, so bank will have to cancel the guarantee given. जब गारंटी दिया था तो क्या एंट्री पास किया था? एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स, अदर ऑब्लिगेशंस, असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटी अकाउंट. इसको कैंसिल करना है. कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? रिवर्स एंट्री पास करोगे. एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बैंक विल बी एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स, अदर ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू acceptances, endorsements, other obligations, asset account. अमाउंट कितना था? 100 CR. The end. और कुछ बैंक रिकॉर्ड नहीं करेगा. But suppose if the client does not honor, क्लाइंट ने 100 करोड़ उस पर्टिकुलर सप्लायर को नहीं दिया, तो वो सप्लायर किससे पैसा रिकवर करेगा? बैंक से, क्योंकि बैंक ने गारंटी दिया था ना. तो सप्लायर बैंक के पास आएगा विद दैट गारंटी लेटर. आपने गारंटी दिया था, उस क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया, आपको 100 करोड़ रुपीस देना पड़ेगा. एंड द बैंक कैन नॉट से नो. बैंक हैज टू गिव 100 crores. So how do we do the accounting in the books of the bank in such cases? First of all, ये एंट्री सेम आएगा. कैंसिल कर दीजिए गारंटी दिया वो, तो वो एंट्री सेम आएगा. और पेमेंट करेगा बैंक. किसको पेमेंट करेगा? टू दैट पर्टिकुलर सप्लायर. बट अमाउंट इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ दैट कस्टमर. रिमेंबर, बैंक ने पैसा दिया सप्लायर को, लेकिन किसके बिहाफ पे दिया? अपने कस्टमर के बिहाफ पे दिया. मतलब फ्यूचर में बैंक ये पैसा रिकवर करेगी. किससे रिकवर करेगी? उनके ही कस्टमर से. इट्स लाइक अ लोन गिवन टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर. तो बैंक के एंट्री रिकॉर्ड करेगा उसके लिए कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश. Bank will pass a simple entry, customer account debit to cash account. It's like a loan given to the customer. Bank future में ये पैसा किससे रिकवर करेगी? कस्टमर से रिकवर किया जाएगा. So this was the concept of acceptances, endorsements and other obligations. Remember. Now what we are going to look at is basically your financial statements. How does a bank prepare its final accounts? P&L बनता है, balance sheet बनता है, perfect. But not as per Schedule 3 of the Companies Act. No. Banks have to prepare their financial statements as per the Banking Regulation Act format. बैंक्स के लिए एक सेपरेट एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. जैसे कंपनीज का एक एक्ट है,
तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक फॉर्मेट उन्होंने स्पेसिफाई किया, एवरी बैंक हैज टू प्रिपेयर इट्स फाइनल अकाउंट्स इन दिस फॉर्मेट ओनली, रिमेंबर फॉर्मेट चेंज नहीं हो सकता है, आइटम्स ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, रिमेंबर फॉर्मेट हैज टू रिमेन द सेम ओवर हियर, whether it is balance sheet or P&L, format कभी change नहीं होगा. So now let us look at the format of the balance sheet and then P&L of a particular bank as per Banking Regulation Act. Schedule 3 of the Companies Act follow नहीं करना है आपको. First, balance sheet. Balance sheet of so and so bank. नाम होगा एज ऑन सो एंड सो डेट होगा, एक पर्टिकुलर्स कॉलम है आपका, एक शेड्यूल नंबर कॉलम, एक करंट ईयर कॉलम और एक प्रीवियस ईयर. फर्स्ट कॉलम शुड ऑलवेज बी करंट ईयर, सेकंड कॉलम शुड ऑलवेज बी प्रीवियस ईयर, रिमेंबर. फर्स्ट बैलेंस शीट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज कॉल्ड एज कैपिटल एंड लायबिलिटीज. इसमें फर्स्ट इज capital, that's your normal share capital, authorized kitna, issued kitna, and so on, not at all difficult. Second is reserves and surplus. इसमें आप सारे reserves and surplus record करोगे, आपका securities premium, आपका general reserve, P&L balance कितना है, and so on. Schedule number 3 is deposits. डिपॉजिट्स में बेसिकली कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स आते हैं, इसमें करंट अकाउंट का डिपॉजिट्स बैलेंस आएगा, सेविंग्स अकाउंट का आता है, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. दे विल बी गिविंग यू द बैलेंसेस, उसका एक सेपरेट शेड्यूल बनता है. शेड्यूल इज लाइक नोट्स टू अकाउंट्स, रिमेंबर. तो उसमें आपको स्पेसिफाई करना है करंट अकाउंट का कितना बैलेंस है, सेविंग्स अकाउंट का कितना बैलेंस है, फिक्स्ड डिपॉजिट का कितना बैलेंस है, टोटल कीजिए और वो टोटल आपको रिकॉर्ड करना है. बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मींस बैंक ने लोन लिया. बैंक किससे लोन लेता है, आरबीआई से एंड अदर बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक LIC करके इंडिया में है, उनसे बैंक लोन ले सकता है. So borrowings is basically loan taken by the bank, और बैंक normally loan लेता है from Reserve Bank of India or from financial institutions. Other liabilities and provisions. इसमें क्या क्या आएगा, आपका outstanding expenses आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा ना, बैंक्स आर आल्सो डूइंग अ बिजनेस. अगर बैंक ने प्रॉफिट कमाया तो उनको टैक्स पे करना है टू द गवर्नमेंट, रिमेंबर. इन दिस यू विल आल्सो हैव योर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. याद है थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इफ द बिल इज डिस्काउंटेड इन द करंट ईयर बट इट्स मैच्योरिटी फॉल्स इन द नेक्स्ट ईयर, some amount of income has to be carried forward. It's income received in advance, we call it in technical terms. Rebate on bill discounted. Write down everything. Total of equity and liabilities हो गया ना. Next, assets. First, schedule number 6, cash and balance with RBI. Cash in hand कितना है और बैलेंस विद आरबीआई कितना है. एवरी बैंक हैज टू मेंटेन सम बैलेंस विद द आरबीआई, रिमेंबर. सो उतना कितना बैलेंस है, फिगर्स दिए होंगे, आपको सिर्फ फॉर्मेट आना चाहिए एंड देन इट बिकम्स अ सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर, रिमेंबर. शेड्यूल नंबर 7 इज बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. दूसरे बैंक में कितना पैसा है पर्टिकुलर बैंक का. Money at call and short notice is basically where the loans are given for a day or two. एक दो दिन में जो पैसा रिटर्न करना है कस्टमर को, it is called as money at call and short notice. Investments, investments में क्या क्या होगा. Bank can make investments in shares of various companies. Bank can invest in debentures. Bank can invest in bonds. Bank can invest in government securities. Bank can invest in gold, silver also. Whatever, wherever they have invested, it has to come in your investments schedule, remember, schedule number 8.
Schedule number 9, advances, is important. I'll just show it over here. Schedule number 9, advances. किसी भी बैंक में ये सबसे मेजर फिगर होगा ऑन द एसेट साइड. Advances in simple words means loan given by the bank. ये जो शेड्यूल है ये 3 पार्ट्स में बाइफर्केट किया गया है. 3 पार्ट्स में. A part, in that first, bills purchased or discounted. Bills are purchased or discounted. Drawer discount करता है, बैंक ने बिल खरीदा था. So what is the amount? It's like an advance given ना. बिल जब ड्रॉवर डिस्काउंट करता है तो बैंक ने तो उसको पैसा दे दिया कस्टमर को, ड्रॉवर को. बट बैंक को ड्रॉई से पैसा कब मिलेगा? ओनली ऑन द ड्यू डेट. तो उतने डेज के लिए इट इज एज गुड एज लोन गिवन बाय द बैंक टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर. एडवांसेस दिया हुआ है. लेट्स से दिस फिगर वाज 200 crores. देंगे क्वेश्चन में, रिमेंबर. Second is overdraft, cash credit, short-term loans. Overdraft and cash credit facilities available only to current account holders. कैश बुक में आपने देखा हुआ है बैंक ओडी क्रेडिट बैलेंस हो सकता था ना. सो ओडी फैसिलिटीज अवेलेबल, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल ओनली टू करंट अकाउंट होल्डर्स. दैट्स बेसिकली बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स. Short-term loans, loans given for a period of 3 months, 6 months, 9 months, it's called as short-term loans, remember. And let's say that figure was 300 CR. सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा आपको. Third is term loans. Third is term loans. Term loans are long-term loans. Housing loan, car loan, business loan, factory construct करने के लिए लोन दिया. All these are long-term loans. Let's say it was 1500 crores. इसका टोटल कीजिए 2000 crores आएगा ना. ये कहाँ पे जाएगा? आपके बैलेंस शीट में. शेड्यूल नंबर 9, एडवांसेस. टोटल कितना एडवांसेस है? 2000 crores. That is the loan given by the bank to the public, you can say. Now the same information in that same schedule has to be presented in a different manner. Same figures will have to be distributed in a different manner, remember. Total same rahega now. And how do we do that? First, secured by tangible asset. Like हाउसिंग लोन के लिए सिक्योरिटी में क्या दिया? घर दे दिया. इट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड बाय अ टैंजिबल असेट, रिमेंबर. मेनी पीपल टेक लोन अगेंस्ट गोल्ड. उनके पास गोल्ड होता है, वो जाके बैंक में गिरवी रखते हैं, बैंक उनको लोन देता है. तो बैंक ने जो लोन दिया उस कस्टमर को, उसके सामने बैंक के पास सिक्योरिटी आ गया ना गोल्ड का. इट इज सिक्योर्ड बाय टैंजिबल असेट, रिमेंबर. सेकेंड इज सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट और बैंक गारंटी. Secured by government और बैंक गारंटी. याद है ECGC, DICGC, गवर्नमेंट was giving a guarantee. गवर्नमेंट बैंक को बोलती है इस पर्टिकुलर आदमी को लोन दीजिए, उसने पैसा नहीं रिपे किया तो हम आपको पैसा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. सो इट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट और बैंक गारंटी. एंड थर्ड इज अनसिक्योर्ड. इन तीनों का टोटल सेम आना चाहिए 2000 crores.
सेम आएगा टोटल, टोटल डिफरेंट नहीं हो सकता, बट इंटरनल बाइफिकेशन में चेंज. Secured by tangible assets. Out of 2000, secured by tangible assets is let's say 1000 crores. Bifurcation देंगे आपको. Secured by government or bank guarantee was let's say only 400 crores. So unsecured by default कितना हो जाएगा? 600 crores आपका balancing figure हो जाएगा ना? अगर आपको वो अनसिक्योर्ड का फिगर नहीं देते, बट दे विल टेल यू सिक्योर्ड इज 1000, सिक्योर्ड बाय बैंक गारंटी और गवर्नमेंट गारंटी इज 400, तो यू हैव टू नो कि मेरा ए और बी का टोटल सेम होना चाहिए, तो 2000 ही आना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट मेरा अनसिक्योर्ड कितना होना चाहिए? 600 करोड़ होना चाहिए. लेकिन ये आप बैलेंस शीट में नहीं लेके जाओगे 2000 करोड़ को, बिकॉज ऑलरेडी आप ए का टोटल को 2000 को करोड़ हमने रिकॉर्ड किया बैलेंस शीट में. So don't add 2 plus 2 4000 सा जाएगा बैलेंस शीट में. No, B part is a bifurcation of A part in a different manner, we call it as. एक और क्लासिफिकेशन यहां पे आ जाता है C part. इसमें दो चीजें हैं और इन दोनों का टोटल सेम रहेगा 2000 crores. It will not change, remember. So what are those? In India, outside India. जो एडवांसेस बैंक ने दिया है, what is the amount of advances given to customers in India and what is the amount of advances given to customers outside India? They will give you this bifurcation. Let's say this is 1900 crores, so this will have to be 100 crores. अगर बाइफिकेशन दिया तो ये सब प्रेजेंट करना है. कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ ए और बी का इंफॉर्मेशन होता है, सी का इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो डोंट शो द सी पार्ट, डोंट मेक एनी अजम्पशंस ऑन योर ओन. जितना इंफॉर्मेशन दिया होगा उतना प्रेजेंट करोगे, जो नहीं दिया उसको इग्नोर करने का. रिमेंबर, दिस इज योर शेड्यूल नंबर 9 रिलेटिंग टू एडवांसेस. रिमेंबर, नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स. प्रीमाइसेस होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, लेस डेप्रिसिएशन, WDV हैज टू बी प्रेजेंटेड. एंड लास्ट इज अदर एसेट्स. अदर एसेट्स में आपका एडवांस टैक्स आता है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आता है. एनी अदर एसेट्स व्हिच कैन नॉट कम इन द प्रीवियस 5 शेड्यूल्स ऑटोमेटिकली कम्स इन योर लास्ट शेड्यूल नंबर 11. रिमेंबर, टोटल कीजिए, आपका बैलेंस शीट टैली हो गया, सारे फिगर्स दिए होंगे, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है. शेड्यूल नंबर 12 is contingent liability. Contingent liability, the bank may or may not have to pay depending on a future event outcome. Hence, it is shown as a contingent liabilities. Claim against the bank not acknowledged as a debt. किसी ने बैंक पे क्लेम किया, मुझे आपसे 5 करोड़ का कॉम्पेंसेशन चाहिए. बैंक कहता है ऐसे थोड़ी हम दे देंगे. दे विल फाइट दैट केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो जब जज जजमेंट देंगे तब पता चलेगा कि बैंक को पैसा देना है या नहीं देना है. सो इट इज ट्रीटेड एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी. Acceptances, endorsements and other obligation is also contingent liability. Acceptances, endorsements and other obligations याद कीजिए, guarantee given by the bank on behalf of the customer to a supplier. At the later date, अगर कस्टमर ने सप्लायर को पैसा दे दिया तो बैंक को गारंटी का पैसा नहीं देना है. लेकिन अगर कस्टमर ने सप्लायर को पैसा नहीं दिया, बैंक को गारंटी का पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में. So it's called as a contingent liability. And you have bills for collection. लॉजिकली बैंक के बुक्स में बिल्स फॉर कलेक्शन का एंट्री नहीं होना चाहिए था. हमने डिस्कस किया बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट. रिमेंबर, बट वो लॉजिकली बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करता है. इट इज जस्ट शोन बिलो द बैलेंस शीट. इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन. रिमेंबर,
That's your balance sheet, 12 schedules in all. You are not supposed to interchange the schedules. Format same rahega, remember. Now the second part over here is your P and L. Very small P and L. First, incomes. Incomes में दो incomes है. Interest earned, other incomes. Interest earned. Bank interest किस पे कमाएगी? Bank will earn interest on the advances given. Bills were purchased, discounted. तो उस पे discount income है ना? That comes under interest earned. बैंक ने घर खरीदने के लिए लोन दिया तो कस्टमर उसका इंटरेस्ट पे करेगा ना, दैट कम्स इन योर इंटरेस्ट अर्न्ड. कार खरीदने के लिए बैंक ने लोन दिया, बैंक को उस पे ईएमआई मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, दैट्स योर इंटरेस्ट अर्न्ड. रिमेंबर, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस. सो व्हाट कम्स इन योर अदर इनकम्स? बैंक ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदा था, वो बेचा. बैंक जब इन्वेस्टमेंट्स बेचेगा तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. वॉट एवर मे बी द केस, इट कम्स इन योर शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम्स. अगर लॉस है तो हम नेगेटिव ब्रैकेट में लिखते हैं. सेम वे अगर कोई असेट बेचा, मशीन बेचा, फर्नीचर बेचा, प्रीमाइसेस बेचा, प्रॉफिट या लॉस हो सकता है ना. बैंक में लॉकर्स होते काफी सारे, बैंक में उसका रेंट चार्ज करती है बैंक, दैट इज देयर अदर इनकम्स. बैंक कमीशन चार्ज करती है, अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो उसमें बैंक कमीशन चार्ज करेगी, दैट इज देयर अदर इनकम्स. इफ यू गो फॉर द बैंक फॉर एनी सर्विसेज, लाइक आपको फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है, बैंक आपको फॉरेन एक्सचेंज बेचती है डॉलर्स, बट उसके उनको कमीशन मिलता है, दे अर्न प्रॉफिट ऑन इट, दैट कम्स इन योर अदर इनकम्स. They will be giving you certain items, just record it over there and you find a total of incomes. Remember, expenditure, second part. In that, first is interest expended, schedule number 15. Remember, interest expended means interest paid. और बैंक किसको इंटरेस्ट पे करेगी? कस्टमर्स को. किस पे पे करेगी? सेविंग्स अकाउंट पे अपने को इंटरेस्ट मिलता है बैंक से. फिक्स्ड डिपॉजिट पे वी रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक, मतलब बैंक इज पेइंग अस इंटरेस्ट ना. रिकरिंग डिपॉजिट पे बैंक इंटरेस्ट पे करती है, करंट अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट नहीं पे करती है. बट व्हाटएवर इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन योर सेविंग्स अकाउंट, fixed deposit account, recurring deposit account is what we call it as interest expended. Expended word RBI ने use किया, आपको भी वो use करना है. It is nothing but in simple words, paid. Remember, operating expenses, आपके normal expenses, salaries, rent, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बैड डेट्स, ये सारे आपके एक्सपेंसेस नॉर्मल जो हम पीएनएल के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे, शेड्यूल नंबर 16 में आएगा. प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज. प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, इसमें सबसे पहला प्रोविजन होगा आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. याद है हमने वो चार्ट देखा था, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, वेदर द असेट इज स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट्स. आरबीआई ने रेट स्पेसिफाई किया है, हमने आरडीडी कैलकुलेट किया था, दैट आरडीडी विल कम ओवर हियर. एंड द सेकंड विल बी मेजर प्रोविजन फॉर टैक्स. बैंक अगर प्रॉफिट कमाएगी तो टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. रिमेंबर, सो दिस इज, लेट्स टेक सम हाइपोथेटिकल फिगर्स टू अंडरस्टैंड द थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट. टोटल ऑफ इनकम्स, मान लीजिए ये आपका आया 2000 crores. टोटल ऑफ इनकम कितना था? 2000 crores था. एंड लेट्स से टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आ गया 1200 crores. इनकम्स का टोटल है 2000 crores, एक्सपेंसेस का टोटल है 1200 crores. So what is your current year's profit or loss? This is the third part, P&L. इसमें profit or loss for the year, current year का loss कितना होगा? 2000 minus 1200, that's
800 crores, remember. Every bank who is earning profits will be having some balance in P&L. अब company accounts में भी देख चुके हो. No organization distributes 100% of its profits as dividend to the shareholders. कोई company नहीं करता है, bank भी नहीं करता है. Yes, part of the profit is distributed, but major profit तो वो retain करते हैं ना. So there will always be some opening balance, remember. Let's say they tell you balance brought forward. This is nothing but opening balance of P&L. It was given as 200 crores. तो C का total कितना होगा? 800 plus 200, that's 1000 crores, remember. Now listen carefully. The fourth part in your P&L is your appropriations. थर्ड का जो टोटल आया P&L का 1000 crores, सेम शुड बी द टोटल ऑफ द फोर्थ पार्ट ऑल्सो. एप्रोप्रिएशन का टोटल भी सेम होना चाहिए 1000 crores. सी D शुड बी इक्वल टू C. दिस इज D. ऊपर C है, P&L का टोटल, दिस इज C. C और D सेम होना चाहिए, नॉट अ डिफरेंस ऑफ सिंगल रुपी. Now let's look at the appropriations. First is transfer to statutory reserve. Statutory means compulsory as per law. Every bank has to compulsorily transfer a part of its current year's profit to a statutory reserve. It's a rule. It cannot be avoided by any bank. कितना transfer करना है? As per the Banking Regulation Act, it is 20%. However, as per the RBI guidelines, it is 25%. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है 20% ट्रांसफर कीजिए, लेकिन आरबीआई गाइडलाइंस कहता है 25% ट्रांसफर कीजिए. सो यू हैव टू फॉलो द आरबीआई गाइडलाइंस, रिमेंबर. एंड ऑलवेज राइट अ नोट. अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक परसेंटेज देते हैं, देन यू फॉलो दैट परसेंटेज. अगर नहीं दिया तो आपके पास दो चॉइस है. Write a note. In the absence of any information, we have transferred to statutory reserve 25% of current year's profit as per RBI guidelines. And this is where students make a mistake. 25% किसका कैलकुलेट करोगे? करंट ईयर्स प्रॉफिट का कैलकुलेट करना है. करंट ईयर का प्रॉफिट 1000 crores नहीं है. करंट ईयर का प्रॉफिट इज ओनली 800 crores. इसका 25% कैलकुलेट कीजिए. मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 1000 crores का 25% करके आ जाते हैं, जो गलत है. इट इज CY, करंट ईयर्स प्रॉफिट. मतलब यहां पे कितना आएगा? 200 crores आएगा ना. स्टैट्यूटरी रिजर्व को हमने ट्रांसफर किया 200 crores. 800 crores का 25%. Don't take it off 1000 crores, remember. Second is transfer to other reserves. This is purely voluntary. अगर क्वेश्चन में दिया तो करने का, अदरवाइज नहीं करने का. Transfer to other reserves is purely voluntary. If it is given in the question, you do it. If it's not given, ignore it. मान लो they tell you transfer to voluntary reserve is 10%. General reserve को 10% transfer कीजिए. Again 10% किसका करोगे? करंट ईयर के प्रॉफिट का करने का. टोटल 1000 crores का नहीं करने का. करंट ईयर का प्रॉफिट इज 800. उसका 10% gives you 80 crores. ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड. अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जीरो. आई एम अज्यूमिंग नथिंग इज गिवन, सो आई एम टेकिंग इट एज जीरो. So what is the balance carried over to the balance sheet? That will be your balancing figure. 1000 minus 200 minus 80. That will give me how much? 720 crores now.
फिर नेक्स्ट ईयर का जब मैं पीएनएल बनाऊंगा तो उसमें बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस 720 आ जाएगा, ऊपर के एग्जांपल में कितना था 200। नेक्स्ट ईयर का जब आप पीएनएल बनाओगे, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर व्हिच विल ऑटोमेटिकली बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। रिमेंबर, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द appropriations पार्ट। पीएनएल का जो टोटल है, सेम टोटल आपका appropriations का भी होना चाहिए। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कंपलसरी है। इफ दे टेल यू टू प्रिपेयर द पीएनएल, आप पीएनएल बना रहे हो बट नोवेयर इन द एडजस्टमेंट्स हैव दे स्पेसिफाइड हाउ मच यू आर सपोज्ड टू ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो आपको पता होना चाहिए कि दो रेट्स है। आप एक फॉलो करोगे विद अ नोट, प्लीज राइट अ नोट फॉर द सेम, फॉर द रेट दैट यू हैव फॉलोड। एडवाइजेबल टेक 25% एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। This is how you prepare the final accounts of a bank. Remember, format is different as compared to normal company final accounts. Schedule 3 का format और ये format different है। Schedule 3 का format यहाँ पे अगर आपने apply किया, balance sheet tell you sir, marks 0 because you have not followed the Banking Regulation Act का format. Banks के लिए आपको यही format follow करना है। Remember. Is it clear, everybody? Now the last part of the chapter, and is called as capital adequacy ratio. It is called as capital adequacy ratio. Now what happens is every bank has to maintain certain amount of capital fund. How do we calculate the capital adequacy ratio? It is calculated as capital fund upon risk weighted assets into 100. It is expressed as a percentage. आरबीआई का गाइडलाइंस कहता है इट शुड बी मिनिमम 9%। कितना मिनिमम होना चाहिए? 9%। इससे ज्यादा हुआ अच्छी बात है, कम हुआ you don't have to do anything, you just have to write a note that the capital adequacy ratio is 8%, which is less than the minimum required of 9%. इतना ही आपको लिख के छोड़ देना है, but yes, percentage find out करना है। minimum कितना होना चाहिए? 9%. So how do we find out your capital fund? Capital fund basically means the amount invested in the bank. Long term funds invested in the बैंक, रिमेंबर, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। रिमेंबर, टीयर 1 इज परमानेंट कैपिटल, यू कैन से परमानेंट। इसमें बेसिकली क्या क्या इंक्लूडेड होता है? आपका इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें इंक्लूडेड होगा, इसमें इंक्लूडेड होगा ऑल reserves and surplus except revaluation reserve, वो आप यहां पे कंसीडर नहीं करोगे। रिमेंबर, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस, बट रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं कंसीडर करोगे। इसमें से आप माइनस करोगे पीएनएल डेबिट बैलेंस इफ एनी, accumulated losses, and you will minus your miscellaneous expenditure items if any. This is your tier 1 capital fund. Remember, when you minus PNL and miscellaneous expenditure items, if you have made any investments in subsidiaries, you also minus investments
in subsidiaries, then remember that amount is also blocked up. It is not being used in the business, and therefore that also you are supposed to deduct it. So tier 1 comprises of equity share capital plus all reserves and surplus excluding revaluation reserve minus P&L debit minus investments in subsidiaries and minus miscellaneous expenditure items. So what is included in tier 2 logically? यहाँ पे you will have capital which is not permanent in nature. Long term है but permanent नहीं है. So can I say my preference share capital will come over here? Because they have to be normally redeemed within maximum period of 20 years, remember. और क्या आएगा यहाँ पे? You will consider revaluation reserve but only to the extent of 45%. पूरा revaluation reserve नहीं लिया जाएगा. अगर आपके बैलेंस शीट में 100 करोड़ का रीवैल्यूएशन रिजर्व है तो टियर 2 कैपिटल फंड कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ 45% लेना है ऑफ 100 करोड़, दैट इज 45 करोड़. एंड यू हैव टू कंसीडर एनी सीक्रेट रिजर्व और यू कॉल इट एज अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व. अगर दिया तो आप कंसीडर करोगे. दिस इज योर टियर 2 कैपिटल फंड. इन दोनों को ऐड करोगे, दिस फिगर इज योर कैपिटल फंड. तो न्यूमरेटर आपको मिल गया, कैपिटल फंड का अमाउंट कितना. नाउ द नेक्स्ट कैलकुलेशन इज फॉर रिस्क वेटेड असेट्स. बैंक के काफी सारे असेट्स है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैलेंस विद आरबीआई, एडवांसेस गिवन. अब ये सारे असेट्स पे कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है और ये रिस्क का परसेंटेज आरबीआई ने स्पेसिफाई किया. आपको परसेंटेजेस पता होना चाहिए, रिमेंबर. So what is the risk to each and every type of asset is expressed in percentage. आपको उस particular asset का value दिया जाएगा, उस पे आप ये percentage apply कीजिए. What you'll get is your risk weighted assets, remember. Asset risk percentage. First, cash balance and balance with RBI. RBI कहता है इसका रिस्क 0%. अगर आप बैंक ने कुछ पैसा आरबीआई में रखा है तो पैसे डूबने के चांसेस 0. आरबीआई कभी बैंकरप्ट नहीं होगा. It will never close down. तो पैसे डूबने के चांसेस तो 0. So cash balance, पैसे डूबने के चांसेस 0. Balance with RBI, पैसे डूबने के चांसेस 0. Next, balances with banks or guarantee by bank. Risk is 20%. Advances guaranteed by government or public sector unit. अगर कोई एडवांसेस लोन्स are guaranteed by government or public sector units. Public sector units means those companies जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक सबसे ज्यादा है. Then the risk is 0%. पैसे डूबने के चांसेस नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ने गारंटी दिया. फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इररेलेवेंट हो जाता है. फोर्थ इज ECGC or DICGC. The risk is 50%.
ECGC and DICGC, remember 100% loan का guarantee नहीं देते हैं. They give only a particular percentage, and that too of the unsecured portion. Secured portion का भी वो guarantee नहीं देते, remember. And therefore the RBI says you have to take a risk of 50% on such advances, remember. Other assets. अदर असेट्स में आपके एडवांसेस आएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, आपके फिक्स्ड असेट्स आएंगे. उन सब का रिस्क हैज टू बी टेकन एज 100%, रिमेंबर. नेक्स्ट इज ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. Off balance sheet items means your contingent liabilities, the one which does not appear in the balance sheet, and the risk will be 100%, remember. And seventh is non-funded exposure to real estate. रियल एस्टेट, बिल्डर्स, डेवलपर्स, अगर इनको बैंक ने कुछ लोन दिया है, नॉन फंडेड. नॉन फंडेड मींस नो सिक्योरिटी वाज टेकन, बट द लोन इज गिवन टू रियल एस्टेट सेक्टर, देन द रिस्क द आरबीआई सेज इज 150% लेना है. ये परसेंटेजेस स्पेसिफाई किए हुए हैं. आपको कौन सी टाइप का असेट है वो आपको दिया जाएगा. परसेंटेजेस आपको याद रखने हैं, रिमेंबर. सिंपली अप्लाई द परसेंटेजेस टू द अमाउंट्स. यू कैन से व्हाट यू विल गेट इज योर रिस्क वेटेड असेट्स एंड देन टेक इट टू योर फॉर्मूला. Capital fund upon risk weighted assets into 100, answer is expressed in percentage. It should be minimum 9%. 9% से ज्यादा है, अच्छी बात है. If it is less than 9%, it's bad. But we don't have to do anything over here in that case, remember. आपको सिर्फ एक note लिखना है, that's the end. So with this, we complete revision of Banking Companies Financial Statements chapter. Now the next chapter that we are going to revise is non-banking financial companies, which are basically called as NBFCs, remember. Now the business of NBFC is quite similar to a bank, remember. Bank is accepting deposits from the general public and they are giving it as loans. NBFCs also do something similar only. They accept fixed deposits and they give it as loans over here. But however, there are some differences between a bank and an NBFC. In case of a bank, you can have a savings account, you can have a current account, जबकि NBFCs में savings और current account नहीं होता है. Yes, fixed deposit हो सकता है, but not savings or current account, remember. NBFCs don't issue a checkbook. आप जब बैंक में अकाउंट ओपन करोगे तो आपको एक चेकबुक मिलता है, एक पासबुक मिलता है. NBFCs चेकबुक इश्यू नहीं करते हैं, remember. And the most important point is, अगर कोई बैंक बंद हो जाता है, if any bank closes down, और अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट उस बैंक में है, it is insured. आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है in case of fixed deposits. In case of banks, remember, this is called as DICGC cover. जबकि एनबीएफसीज में अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट रखा और अगर वो एनबीएफसी बंद हो गया, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा गया, इंश्योरेंस नहीं होता है उसका. These are the major differences between a bank and a NBFC, remember. Over here, what are the provisions relating to an NBFC? Quite similar to a bank, you can say. However, certain provisions are to be understood. Small concepts. The first is calculation of
owned funds. Calculation of owned funds basically means how much amount the owners have invested in the business of NBFC. That is what you mean by calculation of owned funds. So how do we calculate the owned funds over here? First, you will consider equity share capital. First, you will consider equity share capital plus preference share capital. But which preference share capital has to be considered? Only the convertible portion. Non-convertible preference share capital consider नहीं होगा. सिर्फ convertible preference share capital consider करना है because right now what is issued is preference shares, but in future these preference shares will be converted into equity shares. Remember, मतलब वो long term ही हो गया ना. So plus preference share capital but convertible plus reserves and surplus. इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, कैपिटल रिजर्व्स आएंगे, रेवेन्यू रिजर्व्स आएंगे, एक्सेप्ट what you will not consider is revaluation reserve. ये आप कंसिडर नहीं करोगे because it's not a realized profit. It's created merely on account of a book entry. Remember, इसमें से आप माइनस करोगे P&L debit balance, accumulated losses if any, and you will minus other intangible assets. All of you know what are intangible assets and so on. Remember, goodwill, patents, copyrights, अगर कुछ है तो वो minus कर दीजिए. Now, balance that you get is what you call it as gross owned funds. What do you call it as? Gross owned funds. Remember, from this you have to make adjustment. Less investment in subsidiaries. But how much? Total investments in subsidiaries minus नहीं करना है. If you have made any investments in excess of 10% of gross owned funds, सिर्फ वो excess amount आपको minus करना है. Investments in subsidiaries can be investments in shares or debentures of subsidiaries. But remember, total investments minus नहीं करना है. Let's take a very simple example. आपका gross owned funds आ रहा है 1000 crores का. Gross owned funds कितना है? 1000 crores है. आपने investments in subsidiaries किया है 250 crores. Remember, कितना investments किया है? 250 crores. Gross owned funds कितना है? 1000 है. Now what the law says is up to 10% investments किया चलेगा. 10% of gross owned funds. 1000 का 10% is 100. 100 तक investments किया crores तक तो चलेगा. But हमने तो 250 crores का किया ना. So find out the excess investments that has to be deducted. Remember, allowed up to 10% of gross owned funds. 100. So excess amount is 150 crores. ये आप क्या करोगे? माइनस करोगे. रिमेंबर, और फिर जो बैलेंस आएगा, दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज नेट ओन्ड
in this case, it comes to 850 crores, remember. So the first calculation that they may ask you is calculate your owned funds, net owned funds कितना invest हुआ है business में. It is gross owned fund minus excess of 10% over gross owned funds in investments in subsidiaries. Subsidiaries में investment shares में भी हो सकता है, debentures में भी हो सकता है. अप टू 10% तक इन्वेस्टमेंट्स किया, नो प्रॉब्लम. अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किया है, एक्सेस अमाउंट हैज टू बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग योर नेट ओन्ड फंड्स, रिमेंबर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनबीएफसी चैप्टर. सेकंड इज NBFCs are basically divided into two categories. Systematically important and non-systematically important. Systematically important and non-systematically important. In simple words, systematically important NBFCs are big NBFCs, which has a presence almost all over India. In today's time, the biggest NBFC in India is Bajaj Finance. Very, very big NBFC. जबकि non-systematically important मतलब छोटे NBFCs, remember, which will not be having a presence over a large area. Maybe एक particular state तक वो restricted है. It doesn't have a all India level presence, you can say. So systematically important and non-systematically important. Now, how do we bifurcate which one is systematically important and which one is systematically not important? Assets more than 500 crores will be termed as systematically important. जिस NBFCs का assets 500 crores से ज्यादा है, that will be considered as systematically important. तो नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कौन से NBFCs होंगे? जिनके assets are equal to or less than 500 crores. Assets are equal or less than 500 crores. In simple words, these are big NBFCs and these are small NBFCs. Big NBFCs will be operating in urban areas. Small NBFCs will be operating in rural areas, small towns and cities, remember. Why this is important? And that is for calculation of RDD, remember. But before that, classification of assets over here. Classification of assets. NBFC का भी मेजर एसेट क्या होगा? एडवांसेस गिवन. Advances given means loans given which the customer repays back in installment. जैसे बैंक का कॉन्सेप्ट है वैसे यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है. All NBFCs are governed by the RBI. जैसे RBI बैंक्स के लिए रूल्स फ्रेम करती है वैसे ही RBI NBFCs के लिए भी रूल्स फ्रेम करती है. अगर किसी को NBFC स्टार्ट करना है, they require permission, license from the Reserve Bank. So whatever rules and regulations Reserve Bank sets up for an NBFC, every NBFC has to follow the same, remember. तो यहाँ पे classification of assets के लिए, and the major asset of any NBFC will be the advances. Advances means loans given.
इसको क्लासिफाई करना है, ये परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग है तो सबस्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, लॉस असेट है, ये सारे क्लासिफिकेशन करने जैसे बैंक में होता था वैसे ही यहां पे भी आपको करने हैं। बट यस, थोड़ा चेंजेस है हियर एंड देयर, रिमेंबर। So when you're doing this classification of assets, you have to first find out कि जिस NBFC का आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है या नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है। इज इट अ बिग NBFC or is it a small NBFC? Remember, first, standard asset, and standard assets is as good as your performing assets na. When do we call a particular account as a standard asset? In case of systematically important big NBFCs, if the account is outstanding for a period of more than 3 months, 3 महीना हो गया और अगर वो पैसा नहीं दे रहा है, then it will be classified as a non-performing asset. मतलब up to 3 months अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, it will be treated as standard asset. Which means standard assets will include customers जो regularly पैसा दे रहे हैं, no default. It also includes customers जिन्होंने 1 महीने से पैसा नहीं दिया, 2 महीने से पैसा नहीं दिया, up to 3 months जिसने पैसा नहीं दिया है, वो भी standard assets में आएंगे. So outstanding up to 3 months. बैंक में याद करोगे तो इट वाज 90 डेज. बैंक्स के लिए आरबीआई ने 90 डेज का वर्ड यूज किया है, बट एनबीएफसीज के लिए इट इज 3 मंथ्स. रिमेंबर, yes, we all agree that 90 days is equivalent to 3 months, but वहां पे 90 डेज वर्ड यूज करने का, यहां पे 3 मंथ्स यूज करने का. So systematically important big NBFCs के लिए performing assets are those accounts which are outstanding for a period of less than 3 months, up to 3 months you can say. जबकि non systematically important छोटे NBFCs है, where are they operating? In small cities and towns. उनके लिए आरबीआई ने थोड़ा ज्यादा वक्त रखा है. उनके लिए कहा गया if it is outstanding up to 6 months, तो 6 महीने तक अगर पैसा नहीं मिला तो 6 महीने के बाद उस अकाउंट को आप नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर करोगे. So small NBFC is non systematically important. Up to 6 months it is performing, so it is standard assets, and in case of systematically important up to 3 months it will be a performing, that is standard assets. So second is substandard asset. सबस्टैंडर्ड एसेट्स में कौन से टाइप के अकाउंट्स आएंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. Once a particular account is declared as a non-performing assets, it will become a substandard asset. Remember, और वो substandard में कब तक रहेंगे? Up to 12 months NPA. Once it is declared as an NPA for the next 12 months, it will be considered as a substandard assets in case of systematically important NBFCs. But in case of non-systematically important, सबसे पहले तो याद रखिए उसको हम non-performing declare करेंगे 6 महीने के बाद. And then up to next 18 months, it remains a non-performing, it will be classified as substandard asset. Remember, so substandard assets में non-performing assets, systematically important up to 12 months, अगर non-performing है तो substandard में रहेगा. systematically important small NBFCs 18 months तक अगर वो non-performing है तो उसको क्या कहने का? substandard. Third is doubtful.
Doubtful assets are also non-performing assets. But more than 12 months non-performing. 12 महीने से ज्यादा हो गए और वो नॉन परफॉर्मिंग है, तो अब उसको सबस्टैंडर्ड नहीं कहा जाएगा. इट विल ऑटोमेटिकली बिकम डाउटफुल असेट, रिमेंबर. जबकि नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट मोर देन 18 months नॉन परफॉर्मिंग. 18 महीने से ज्यादा अगर वो नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको क्या क्लासिफाई करोगे? एज डाउटफुल. अप टू 18 months इट वाज सबस्टैंडर्ड. 18 months से ज्यादा होगा तो वो डाउटफुल हो गया इन केस ऑफ नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट. एंड द फोर्थ इज लॉस asset. In case of loss asset, there is no time limit. कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट, ऑडिटर्स और आरबीआई themselves will decide whether a particular account should be declared as a loss asset or not. So there is no timing. Same provisions as the bank, remember. यहां पे भी लॉस एसेट के लिए सेम है. Management, auditors and the RBI will take a call whether a particular account is to be classified as a loss asset or not. So this was your classification of asset. Major asset, and major asset is advances loan given. Whether it is standard, whether it is substandard, whether it is doubtful or loss asset. But दो categories है NBFCs का. Systematically important whose assets are more than 500 crores. Non-systematically important whose assets are equal to or less than 500 crores, remember. Next is RDD percentage. Again, दो types के. Systematically important, non-systematically important. First, standard assets. बैंक में याद करोगे तो स्टैंडर्ड एसेट्स में 3 कैटेगरीज थे. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, कमर्शियल रियल एस्टेट एंड अदर्स. यहां पे ऐसा कुछ नहीं है. यहां पे एक ही कैटेगरी है, अदर्स. There is no commercial real estate, there is no small and medium enterprises. NBFCs में सिर्फ एक ही है standard assets के लिए. Others you can say. Systematically important, big NBFCs will have to make a provision of 0.4%. याद कीजिए बैंकिंग में भी स्टैंडर्ड अदर्स वाज 0.4, जबकि नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट छोटा एनबीएफसीज है तो आरबीआई कहता है यू हैव टू मेक अ प्रोविजन ऑफ ओनली 0.25%. बैंक में याद करोगे तो 0.25% स्टैंडर्ड वाज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एंड एग्रीकल्चरल. यहां पे इट इज नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट के लिए. सेकेंड इज सब स्टैंडर्ड. बैंक में याद करोगे तो सब स्टैंडर्ड में 3 थे. सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड में 2 थे. वन वाज एस्क्रो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंड वाज अदर्स. यहां पे ऐसा कुछ नहीं है. सब स्टैंडर्ड मींस सब स्टैंडर्ड. सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बाइफर्केशन नहीं होगा. एंड दोनों कैटेगरीज के लिए इट इज ओनली 10%. दोनों के लिए रेट सेम है, रिमेंबर. थर्ड कैटेगरी इज डाउटफुल. थर्ड कैटेगरी इज डाउटफुल. डाउटफुल में 2 पार्ट्स. फर्स्ट सिक्योर्ड. अंडर सिक्योर्ड देयर विल बी 3 पार्ट्स अप टू 1 year. Systematically important 20%, non-systematically important also 20%.
1 year to 3 years, 30%. Here also it is 30%. More than 3 years, 50%, 50%. This is A secured. और अगर doubtful unsecured है, unsecured, then it will be 100% in both cases. And the last is loss asset ना, दोनों में 100%. अगर आप दोनों के रेट्स देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन. First one is for standard systematically important big NBFCs as per bank 0.4% and non-systematically important it is only 0.25%. Substandard doubtful loss assets का देखोगे तो वहां पे provision percentages same है irrespective वो standard systematically important हो या non-systematically important होगा. Remember percentages you have to remember, there is no choice over here. Remember आपको सिर्फ एडवांस अमाउंट देंगे. yes they will specify whether it is systematically important or non systematically important. Apply the percentages and find out the RDD amount. Remember compulsory, these are minimum rates. अगर किसी एनबीएफसी को ज्यादा प्रोविजन करना है most welcome. Remember जैसे स्टैंडर्ड फॉर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इज 0.4%, बट अगर वो एनबीएफसी कहता नहीं वी वांट टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 1%, 1% is more than 0.4%, yes they can do it. इससे कम प्रोविजन अलाउड नहीं है, ज्यादा प्रोविजन यू आर मोस्ट वेलकम. रिमेंबर दैट वाज योर रेट्स ऑफ आरडीडी. Hire purchase transactions. Now hire purchase transactions, you already done a hire purchase chapter in accounting, remember, where goods are sold and the amount is paid in installments over a period of time. Hire purchase में आपको normal provision तो करना ही है, but over and above normal provisions you have to do some extra provisions over here. So in case of hire purchase transaction, extra provisions is to be made. एक्स्ट्रा प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्स्ट्रा प्रोविजन विल बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट बुक वैल्यू, NBV. Extra provision is to be calculated as a percentage of net book value. Again RBI ने स्पेसिफाई किया हुआ है कितना परसेंटेज अप्लाई करना है. So according to the period, the percentages are specified, and net book value basically means the amount receivable, which will always be given to in the question. आपको कभी calculate नहीं करना है. Remember. So now how do we calculate? What is the amount of percentages of extra provisions? Period percentage of net book value. Period percentage of net book value. If the account is outstanding up to 12 months, बारह महीने से अगर आउटस्टैंडिंग है, पैसा नहीं मिला है, इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिला है फॉर 12 months,
नॉर्मल प्रोविजन करोगे. यू विल क्लासिफाई वेदर इट इज अ परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एंड सो ऑन, बट एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं करना है. You don't have to make any extra provisions, remember. But if it is outstanding for more than 12 months up to 24 months, then you have to make an extra provision at the rate of 10% of net book value. They will specify हमने लोन किसको दिया है. It is outstanding for how many months दिया होगा. 14 months से नहीं मिला पैसा, 16 months से outstanding है. You have to know that yes, this period comes between 12 to 14. तो मुझे extra provision करना है. Net book value आपको दिया होगा. Percentage आपको याद रखना है 10% in this case. Third, more than 24 months up to 36 months. Extra provision is 40% of net book value. More than 36 months up to 48 months. Extra provision is 70% of net book value. And last is more than 48 months. Then you have to make an extra provision of 100% of net book value. Percentages आपको याद रखना है, but remember this is only in case of higher purchase transactions, not for all advances. जो सिर्फ हायर परचेज के ट्रांजैक्शंस है उस पे आपको एक्स्ट्रा प्रोविजंस करना है. यू डोंट हैव टू मेक दिस एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर एवरी एडवांस, रिमेंबर. So these are the provisions. Net book value will be given. Percentage you are supposed to remember over here. So this was your revision about non-banking financial companies chapter. It ends. The next chapter that we are going to revise is consolidated financial statements, CFS. Consolidated financial statements. Now what you have to understand over here? A company is either a holding company or a subsidiary company if it's a group involved over here, remember. So when do we say a particular company is a holding company? When do we say that a particular company is a subsidiary company as such? Holding company is a company which has a control over the subsidiary company. Subsidiary company is a company which is being controlled by the holding company, remember. And this control, the holding company can acquire over the subsidiary company in two ways, remember. So, control is always acquired in any of the two ways. If it has more than 50% of equity carrying voting rights. Preference shares do not have voting rights, but equity shares do have voting rights. So if a company has purchased 60% equity shares, 70% equity shares of another company, then it automatically becomes the holding company of the other company, remember. If it is controlling more than 50% of the equity carrying voting rights,
अगर किसी कंपनी के पास 100% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है दूसरे कंपनी का, नो इक्विटी शेयर्स, ओनली प्रेफरेंस शेयर्स, holding control doesn't come into existence because preference shares do not carry voting rights, remember. And the second possibility is by controlling composition of board of directors. If a company can control the composition, टोटल 7 डायरेक्टर्स है, उसमें से 4 डायरेक्टर्स एक पर्टिकुलर कंपनी अपॉइंट कर सकती है. That means it is controlling the composition of board of directors. Automatically, this holding subsidiary relationship comes into existence. So, what is very important is you have to understand consolidation takes place only in case if there is a holding and subsidiary relationship. अगर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं है, there is no question of consolidating, remember. And for that, we need to find out, is the holding company having a control over the subsidiary company? Control कैसे होगा? If it is having more than 50% of the equity shares carrying voting rights, or if it controls the composition of the board of directors. आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, आपके एग्जाम में सिर्फ ये आएगा, remember. Now, why consolidation is very, very, very important. And remember, it's mandatory. Every holding company के annual reports में आपको consolidated financial statements देखने मिलेंगे, remember. Let's take a very simple example. There is company A and there is company B. I am a shareholder of company A. Where have we invested? We have invested in company A, remember. Company A is holding company B, which means company A has a control over company B and it is holding 100% equity share capital. So this is your holding company. This becomes your subsidiary company. Now think, we are shareholders of A Limited. We have given money to A Limited. A Limited net assets belongs to us, shareholders, remember. अब A Limited ने क्या किया? B Limited के 100% इक्विटी शेयर्स खरीद लिए. बट ए लिमिटेड ने जो 100% शेयर्स खरीदे बी लिमिटेड का, उसका पैसा ए लिमिटेड के पास आया कहां से? दैट मनी वी हैव गिवन टू ए लिमिटेड, वी द शेयर होल्डर्स. हमने जो पैसा ए लिमिटेड को दिया, उसी पैसों में से ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे ना. So we are holding shares of A Limited, shareholders. अपने पास B Limited का एक भी शेयर नहीं है, सारे शेयर्स कंपनी के पास है. Remember, shareholders and company in the eyes of law are separate legal entities. Now understand. A Limited अपना financial statements बनाएगा, B Limited अपना financial statements बनाएगा, जिसको हम कहते हैं stand alone financial statements. A will prepare its own standalone financial statements. Standalone financial statements. ये भी अपना standalone financial statement बनाएगा. दोनों अपने अपने P&L बनाएंगे, दोनों अपने अपने बैलेंस शीट बनाएंगे, दोनों अपने अपने एनुअल रिपोर्ट में अपने अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे. A Limited will inform us shareholders कि A Limited ने कितना प्रॉफिट कमाया, A Limited की कौन कौन से assets and liabilities है. B Limited will inform their shareholders and logically सोचो, B के shareholder में एक ही shareholder है and that is A Limited, दूसरा कोई shareholder ही नहीं होगा because B का 100% shares किसके पास है? A Limited के पास है. But remember, as I am a shareholder of A Limited, as we are holding shares of A Limited, अपने को अब सिर्फ A Limited के फिगर्स पता चलने से सफिशिएंट नहीं होगा.
We will tell the management, tell us the results of B Limited also, because B भी तो अपना ही कंपनी है ना. We are having a control over B Limited. तो B Limited का जो भी प्रॉफिट है वो किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स को. शेयर होल्डर कौन है B Limited का? A Limited. मतलब B का प्रॉफिट किसको बिलोंग करेगा? A को बिलोंग करेगा. A को बिलोंग करेगा, which means we are the shareholders. Now we have a stake in profits of A Limited as well as B Limited. तो अपने को पता होना चाहिए ना कि A plus B का मिला के टोटल कितना प्रॉफिट है. We have a stake not only in the net assets of A Limited, we have a stake in the net assets of B Limited also. अपना अब दो जगह पे हक बनता है, A Limited के assets पे as well as B Limited के assets पे. So what we will tell the management, show us a combined balance sheet. Show us a combined P&L. This combination of balance sheet of holding plus subsidiary company, combination of P&L of holding plus subsidiary company is what we call it as consolidated financial statements. Compulsory है, mandatory है. Every holding company has to report to its shareholders two financial statements. एक standalone financial statements देना है plus एक consolidated financial statements. यहाँ पे no consolidation. Subsidiary नहीं बनाएगा. Subsidiary is not controlling the holding. तो subsidiary के annual report में सिर्फ एक ही financial statements आएगा standalone का. कंपनी बी के एनुअल रिपोर्ट में एक ही फाइनल अकाउंट्स होगा, जबकि कंपनी ए के फाइनल अकाउंट्स में एनुअल रिपोर्ट में दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे. एक उनका खुद का स्टैंड अलोन होगा और एक कंसोलिडेटेड होगा. It is for the analysis of the shareholder, remember. As a shareholder, I would like to know on its own company के A का परफॉर्मेंस कैसा है, सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, सिर्फ कंपनी ए का है. और मुझे ये भी जानना है एज वी आर होल्डिंग कंपनी बी, ए प्लस बी का कंबाइंड प्रॉफिट कितना है, कंबाइंड नेट एसेट्स कितना है. और वो कैसे पता चलेगा? फ्रॉम योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So who has to prepare the consolidated financial statements? Holding. Subsidiary company कभी नहीं बनाती है, remember. Now, in consolidated financial statements, what is included? It includes a consolidated balance sheet. It includes a consolidated P&L. ये दोनों आपके syllabus में है. It also includes a consolidated cash flow statement and consolidated notes to accounts. This is what you have to present annual report में. But examination point of view से सिर्फ ये दो. कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट्स भी नहीं आपको करना है. आपको सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आएगा एंड कंसोलिडेटेड पीएनएल. दोनों साथ में भी नहीं होगा. क्वेश्चन विल बी ओनली ऑन पीएनएल और क्वेश्चन विल बी ओनली ऑन बैलेंस शीट. दोनों कंसोलिडेट करो ऐसा कभी नहीं दिया जाता है. रिमेंबर, वन एट अ टाइम. सो हाउ डू वी डू द कंसोलिडेशन? Very, very simple. Remember, whenever they give you a question on consolidation, let's say they give you consolidation of P and L. तो आपको क्या दिया जाएगा? आपको दो P&Ls दिए जाएंगे. स्टैंड अलोन P&L ऑफ होल्डिंग आपको देंगे एंड स्टैंड अलोन P&L ऑफ सब्सिडियरी आपको दिया जाएगा. दोनों के सेपरेट पीएनएल्स आपको दिए जाएंगे. आपका काम बहुत सिंपल है. दोनों को मर्ज कर दीजिए, फिगर्स को ऐड कर दीजिए और एक कॉमन पीएनएल आपको बनाना है. सो दे विल बी गिविंग यू गिवन सेपरेट
stand alone P&L of holding company and subsidiary company. Stand alone P&L of holding company and subsidiary company will be given to you. What is your solution? Prepare a consolidated P&L. Consolidated P&L. Combined P&L बनाना है. How do we do it? Very simple. Simply add the two figures, that's of holding and subsidiary. आपको होल्डिंग का सेल्स देंगे, सब्सिडरी का सेल्स देंगे, दोनों को ऐड करो, कंसोलिडेटेड सेल्स मिल गया. आपको दोनों का ओपनिंग स्टॉक, दोनों का परचेसेस देंगे, दोनों का वेजेस देंगे, दोनों के इनकम्स देंगे, दोनों के एक्सपेंसेस देंगे. आपको सिर्फ वो फिगर्स ऐड करने हैं and you have to write it in your consolidated P&L. So over here, add figures of both the companies. We call it as line by line. Line by line means one by one. And this is where you have to be very, very careful. If there are any transactions which are intercompany, which is appearing in the P&L of both the companies on the opposite side, then those transactions are to be eliminated. उसको set off करना है, cancel करना है, और आपके P&L में you will be having only the net figures. Remember, you will not be having all the figures over here. So over here combine करना है, but combine करते वक्त you don't have to keep on adding. If there are any common transactions between the two of them, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस जिसको हम कहते हैं, उसको क्या करना है, आपको सेट ऑफ करना है, कैंसिल करना है, एंड यू हैव टू शो द नेट फिगर. फॉर एग्जांपल, कंपनी ए हैड सोल्ड सम गुड्स टू कंपनी बी. ए ने बी को कुछ गुड्स बेचा था. होल्डिंग हैड सोल्ड द गुड्स टू सब्सिडरी. So can I say that transaction will be included in the sales of holding and it will also be included in the purchases of subsidiary? तो जब मैं sales add करूंगा तो holding का sales प्लस सब्सिडरी का सेल्स पहले ऐड करो और फिर उसमें से आप माइनस कर दो whatever was the value of goods sold by holding to subsidiary. सेट ऑफ कर देने का नेट फिगर सेम परचेसेस में अप्लाई होगा. ए का परचेसेस प्लस बी का परचेसेस, टोटल में से माइनस कर दो whatever goods were purchased from the subsidiary company from the holding company. It can be any way around. किसने किसको गुड्स बेचा वो इंपॉर्टेंट नहीं है. यस, गुड्स बेचा तो एक के परचेसेस में होगा, दूसरे के सेल्स में होगा, कंबाइन करते वक्त वो सेट ऑफ करना है. So add figures of both the companies line by line. However, common transactions between the two companies should be set off. कॉमन ट्रांजैक्शंस आप क्या करोगे, सेट ऑफ कर दोगे, सिर्फ नेट फिगर्स आप रिकॉर्ड करोगे. रिमेंबर, सो वेरी वेरी सिंपल P&L consolidation. Very rarely they ask in the exam, remember, because it's really very simple. दो P&L आपको देंगे, दोनों के सेपरेट फिगर्स होंगे, आपको वो फिगर्स को ऐड करना है वन बाय वन और एक कंबाइंड P&L बनाना है. सिर्फ इतना याद रखना है that when you are adding the figures, if there are any transactions which are common between the two companies,
होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा या सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. Any transaction which has taken place between the two companies which are reflecting in your P&L standalone, उसको set off करना है while preparing a consolidated P&L, remember. So that's your P&L consolidation, remember. Now comes the consolidation of balance sheet. Consolidation of balance sheet बनाते वक्त your main solution will comprise of consolidated balance sheet. Main solution क्या होगा? Consolidated balance sheet होगा. But besides that, you will be having working notes. And working notes में दो main होंगे. One is called as cost of control account and second is called as minority interest. ये दो workings आपको सारे questions में होंगे. So what do you mean by minority interest? Very simple. If a company is holding 100% shares of the subsidiary company, अगर holding के पास subsidiary के 100% shares है, which means no outsider is holding any shares of the subsidiary company, और अगर किसी बाहर वाले के पास shares ही नहीं है, then there are no minority shareholders. और अगर minority shareholders नहीं है, which means there is no calculation of minority interest. Minority interest means the amount payable to the minority shareholder. Minority shareholder are the shareholders other than the holding company. अगर किसी holding company के पास 80% shares है subsidiary company के, 80%. So can I say the remaining 20% shares are held by the other general public? इन लोगों को कहा जाता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बिकॉज देयर स्टेक इज ओनली 20%. 80% होल्डिंग कंपनी के पास है. मोर देन 50% होल्डिंग, तो रिमेनिंग हैज टू बी विद द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. तो उनका कैलकुलेशन व्हाट इज देयर स्टेक इन द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म माइनॉरिटी इंटरेस्ट. रिमेंबर, what do you prepare this cost of control account? Cost of control account ये बनाया जाता है to find out कि जब holding company ने stake acquire किया, have they paid a higher price or lower price to acquire a stake in the net assets or in the equity or in the net worth of the subsidiary company? आप जब शेयर्स अक्वायर करते हो तो आपको सिर्फ शेयर कैपिटल में हिस्सा नहीं मिलेगा. यू ऑल्सो हैव अ राइट इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो रिजर्व्स है उसमें शेयर होल्डर का हिस्सा है. सो इफ आई एम परचेसिंग शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, आई विल नॉट हैव अ स्टेक ओनली इन द शेयर कैपिटल, आई विल ऑल्सो हैव अ स्टेक इन द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. प्रपोर्शनेट रिजर्व्स बिलोंग्स टू मी. तो जब होल्डिंग कंपनी ने स्टेक अक्वायर किया, कंट्रोल अक्वायर किया, दे हैव पेड अ प्राइस फॉर अ स्टेक इन द इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी. ज्यादा पैसा दिया, कम पैसा दिया, वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग दिस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट. ये दो वर्किंग्स आपके सारे क्वेश्चंस में आएंगे बिकॉज यू विल नेवर हैव अ क्वेश्चन वेयर holding company has acquired 100% shares. It becomes really very easy. थोड़ा तो कैलकुलेशंस होना चाहिए ना, थोड़ा डिफिकल्टी होना चाहिए, इसलिए 100% सब्सिडरी कभी नहीं दिया जाता है. Let's take a very simple example and understand how do you prepare this cost of control and how do you prepare this minority interest का working. Remember, example 1. They will give you the balance sheet. Let's say the balance sheet is 31st March
22. I'm preparing horizontal balance sheet because it's just an example, remember. ये holding है, ये subsidiary है. Assets over there. Let's take a case where equity share capital, shares 10-10 रुपए के होते हैं ना. Let's assume इनका share capital है 10 CR, इनका share capital है 5 CR. Reserves and surplus. इसमें आपके जनरल रिजर्व होगा, पीएनएल होंगे, कैपिटल रिजर्व होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, एंड सो ऑन. रिमेंबर, लेट्स सी योर रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ एच लिमिटेड वाज 50 CR और इनका था 20 CR. ऑन द अदर साइड आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होंगे. ये एच का है, ये एस का है. और इन्वेस्टमेंट्स में क्या दिया उन्होंने? They give you 40 lakh equity shares of S Limited purchased on 31st March 22. Can I say it was purchased on the last day of the year? ऊपर बैलेंस शीट का डेट देखिए 31 मार्च 22 है. हमने शेयर्स कब खरीदा होल्डिंग कंपनी ने? ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर 31 मार्च 22 को ही खरीदा है. एंड लेट्स से द परचेज डेट फॉर 24 CR. H Limited acquired 40 lakh shares of S Limited on 31st March 22 for rupees 24 CR. सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर्स खरीदा उसमें उन्होंने ज्यादा पैसा दिया एज कंपेयर टू श्रेयास स्टेक इन द इक्विटी, और दे हैव पेड अ लेस amount. Remember, that is what you have to understand. That's the important point over here. How do we do it? First of all, to find out कीजिए what is the stake of the holding company in the subsidiary company. सोचिए, what is the equity share capital of S Limited? 5 CR. एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 50 लाख शेयर्स इश्यू किए ना एस लिमिटेड ने. उसमें से एच ने कितना खरीदा? 40 लाख शेयर्स खरीदा. कैन आई से एच लिमिटेड इज हैविंग अ स्टेक ऑफ 80%. 80% कैसे मिला? 40 lakhs डिवाइड बाय 50 lakhs इनटू 100. और कब खरीदा ये शेयर्स? ऑन 31st मार्च 22, लास्ट डे ऑफ द ईयर खरीदा. सो हाउ डू वी डू द एनालिसिस नाउ? आपके दो वर्किंग्स बनते हैं. वन इज वी कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट, और एक वर्किंग होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कितना परसेंट? 80%. तो बाय डिफॉल्ट माइनॉरिटी में कितना परसेंट आएगा? 20%. ये अकाउंट है. तो अकाउंट नॉर्मली दो साइड का होता है ना, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. Whereas this is a merely statement. Minority interest का working note is not an account, it is only a statement, remember. Now how do I find out over here? ये जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किया है 24 करोड़ का, where will I record this? In my cost of control account. Which side? On the debit side. Investment is appearing on the asset side. Assets have a debit balance, so over here we write it as 2 investments. 24 CR आएगा ना. Look at the share capital of subsidiary company. 5 करोड़ का कैपिटल था. उसमें से होल्डिंग कंपनी का स्टेक कितना होगा?
80% ऑफ 5 crores कैलकुलेट करोगे तो 4 करोड़ आएगा. वेयर विल यू रिकॉर्ड दैट? इन योर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 4 CR. 80% ऑफ 5 CR और बैलेंस 20% कहां जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग में. इक्विटी शेयर कैपिटल 1 CR. नेक्स्ट, सी द रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडरी कंपनी. कितना रिजर्व्स एंड सरप्लस है? 20 crores. किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स को. नाउ कैन आई से सब्सिडरी कंपनी के दो शेयर होल्डर्स है. होल्डिंग कंपनी के पास 80% शेयर्स है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास 20% शेयर्स है. तो ये जो 20 crores का रिजर्व्स है, दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 80% 20%. और जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो कहां पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस. 80% ऑफ 20 crores अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 16 crores. एंड इन माय माइनॉरिटी वर्किंग रिजर्व्स एंड सरप्लस 20% ऑफ 20 crores is 4 crores. रिमेंबर. अब आप क्या करोगे? क्लोज करोगे. चेक कीजिए टैली नहीं हो रहा है. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कभी टैली नहीं होगा. यू विल ऑलवेज हैव अ डिफरेंस. रिमेंबर, आपका स्टेक, होल्डिंग कंपनी का स्टेक इन द सब्सिडरीज इक्विटी वाज ओनली 20 CR, लेकिन आपने पे किया 24 crores. 4 करोड़ एक्स्ट्रा पे किया. दिस 4 crores एक्स्ट्रा विच यू हैव पेड is on account of reputation of the subsidiary company, which we call it as goodwill. By goodwill. अगर कम पैसा दिया होता, मतलब अपने को फायदा हुआ, सस्ते में शेयर्स मिल गया, difference would have gone to capital reserve. Remember. So whenever the holding company acquires a stake in the subsidiary company, जब वो शेयर्स खरीदते हैं तो वो सिर्फ शेयर्स नहीं खरीद रहे, they are acquiring a stake in the equity of the subsidiary company. और इक्विटी में क्या आता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स में सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी होता है, माइनस एनी इफ एनी. अगर ज्यादा पैसा दिया है टू अक्वायर अ स्टेक, जो एक्सेस अमाउंट पे किया उसको हम गुडविल कहते हैं. और अगर कम पैसों में स्टेक मिल गया तो जितना कम पैसा पे किया उसको कहा जाता है कैपिटल रिजर्व. और माइनॉरिटी का कितना अमाउंट आएगा? 5 CR. फर्स्ट वेरी सिंपल एग्जाम्पल. नाउ फर्दर. Profits of subsidiary company. सब्सिडरी कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड post acquisition profits. Pre-acquisition and post-acquisition. Now what do you mean by pre-acquisition profits? The profits earned by the subsidiary company before the holding company acquired control is called as pre-acquisition profits. होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल अक्वायर किया, उसके पहले सब्सिडरी ने जो प्रॉफिट्स कमाया उसको कहा जाता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स. एंड द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी आफ्टर होल्डिंग कंपनी अक्वायर्ड द कंट्रोल इज कॉल्ड एज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स. Pre-acquisition profits are always capital in nature, whereas post-acquisition profit is always revenue in nature. Capital and revenue in nature. This capital profit
share of holding company should go to my cost of control account. COC stands for cost of control account. So the stake of the holding company in the pre-acquisition profits, which are capital in nature, should go to my cost of control account. Whereas ये जो revenue in nature है, you add it to profits of holding company. रेवेन्यू इन नेचर है, शेयर होल्डर होने के बाद सब्सिडरी ने प्रॉफिट्स कमाया था, विच मींस वी वर हैविंग अ कंट्रोल, सो वी वर हैविंग अ स्टेक, अपना हक का पैसा है वो, हेंस इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू इन नेचर. Where what will you do with that? You will add it to the profits of holding company. Remember, this is very 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 important. ये analysis बहुत ही important है. Remember, and this is one analysis which students find it difficult and they make mistakes over here. Remember, so let's take a few examples. How do you analyze the profits of the subsidiary company? होल्डिंग के प्रॉफिट्स का एनालिसिस नहीं करना है आपको, उसका प्री और पोस्ट में डिबाइफिकेशन नहीं करना है. होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स का आपको एनालिसिस करना है ऑफ सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स का, कि होल्डिंग का कितना, प्री का कितना और पोस्ट का कितना होगा. होल्डिंग के प्रॉफिट्स का नहीं करना है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. P&L balance on 31st March 22. S Limited, 5 crores. Okay. General reserve balance. Let's keep the general reserve for the time being. Then they tell you P&L balance on 1/4/21. This is closing, this is opening. And let's say the opening was only 1 CR. H Limited acquired 80% stake on 1st July 21. होल्डिंग कंपनी ने 80% स्टेक कब खरीदा? 1st July 21. Now the figures are very simple. Opening 1 CR, closing 5 CR. कोई भी बताएगा कि करंट ईयर में सब्सिडरी ने प्रॉफिट कितना कमाया. बट हम क्या करते, इन अ वर्किंग वी ऑलवेज प्रिपेयर अ P&L ऑफ S Limited. It's a simple example. ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1 CR. तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 CR. क्लोजिंग इज 5 CR, सो डेबिट में आ जाएगा ना. सो टू बैलेंस कैरिड डाउन 5 CR. क्लोज करोगे तो टैली नहीं हो रहा है, आपको डिफरेंस आएगा कितने का? 4 CR. दिस इज योर CYNP, करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट. कितना है? 4 करोड़ का. करंट ईयर में कमाया 21-22 में 4 करोड़ का प्रॉफिट कमाया. Now how do you do the analysis? Analysis of P&L of S Limited. सब्सिडरी का एनालिसिस करना है. क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 5 CR था. इसके आप दो पार्ट्स करोगे, ओपनिंग CY. ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1 CR. तो करंट ईयर का कितना होगा? 4 CR बैलेंसिंग फिगर हो गया. वो आपको मिला भी है P&L अकाउंट से.
Opening is always considered as pre-acquisition. Opening will never be post-acquisition. ओपनिंग बैलेंस जो पीएनएल में है वो कब कमाया होगा सब्सिडरी कंपनी ने? 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले कमाया था। उस वक्त होल्डिंग कंपनी के पास शेयर्स नहीं थे। होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स करंट ईयर में खरीदा, 1 जुलाई को खरीदा। ओपनिंग इज 1 अप्रैल। उस दिन होल्डिंग कंपनी के पास शेयर्स नहीं थे। और रिमेंबर, ये 1 करोड़ का प्रॉफिट 1 अप्रैल को नहीं कमाया। This profit was earned in the earlier years. So always remember, your opening P&L balance will always be pre-acquisition because shares must have been purchased in the current year only, remember. Pre is always capital in nature, but ये पूरा पैसा होल्डिंग को बिलोंग नहीं करता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। होल्डिंग का स्टेक कितना है? 80%। 1 CR का 80% कितना आएगा? 80 lakhs आएगा। माइनॉरिटी 20%, 20 lakhs आएगा ना। दिस इज 80%, दिस इज 20%। अब 4 करोड़ का प्रॉफिट आपका करंट ईयर का है। करंट ईयर का है मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। 12 मंथ्स का वो प्रॉफिट है। बट आपने करंट ईयर में शेयर्स कब खरीदा? 1 जुलाई को खरीदा, विच मीन्स अप्रैल में जून आपके पास शेयर्स नहीं थे। जुलाई से मार्च 9 मंथ्स आपके पास शेयर्स है। Pre-acquisition profits is the profits earned by the subsidiary before holding company acquired the control. 1 जुलाई के पहले सब्सिडरी ने जो भी प्रॉफिट कमाया, दैट विल बी कैपिटल इन नेचर, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो आपको क्या करना है? ये 4 करोड़ को पहले डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, 3 months and 9 months. 3 months will be pre-acquisition, 9 months will be post-acquisition. Now, कैसे डिवाइड करोगे? In the absence of any information, it has to be divided proportionately. It is assumed that the profits were earned evenly throughout the year. तो ये जो 4 करोड़ का प्रॉफिट है, इसको सिंपली 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में डिवाइड कर दीजिए proportionately. So can I say it will give me 1 CR and 3 CR? अब इसको आप फर्दर डिवाइड कर दीजिए, होल्डिंग माइनॉरिटी। इसको भी आप डिवाइड करोगे, होल्डिंग माइनॉरिटी। होल्डिंग का स्टेक 80%, 1 CR का 80%, 80 lakhs कहां पे जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये कहां पे जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। व्हाई? बिकॉज इट इज प्री। प्री मींस कैपिटल इन नेचर। माइनॉरिटीज का 20 lakhs। अब ये 3 CR का भी 80-20 कीजिए, 80 करोगे तो 240 आएगा, दिस विल बी 60 lakhs। ये कहां पे जाएगा? टू द P&L ऑफ H लिमिटेड। पोस्ट है, कंट्रोल अक्वायर करने के बाद वो प्रॉफिट कमाया सब्सिडरी कंपनी ने। सो इट इज रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू इन नेचर यू विल एड इट टू द P&L of holding company, remember. So this has to be added to that. This is how you're going to analyze the P&L of subsidiary company, remember. ये सबसे important analysis है। Opening balance 1 CR, closing 5 CR. तो मैंने एक नॉर्मल P&L अकाउंट बनाया, उसमें होल्डिंग कंपनी का ओपनिंग P&L लिखा मैंने 1 CR, सब्सिडरी का क्लोजिंग 5 CR। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया? 4 CR। फिर इसका एनालिसिस होता है। टोटल 5 क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें से ओपनिंग कितना? 1। ओपनिंग इज ऑलवेज प्री। प्री इज ऑलवेज कैपिटल इन नेचर। फिर वो 1 CR को हमने होल्डिंग एंड माइनॉरिटीज में डिवाइड कर दिया 80% एंड 20%। होल्डिंग का शेयर 80%, 80 lakhs will go to my cost of control account, remember.
फिर 4 crores जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, इसको मैंने पहले डिवाइड किया दो पार्ट्स में, 3 months एंड 9 months, बिकॉज द शेयर्स वर अक्वायर्ड ऑन 1st of July, रिमेंबर। तो 3 months मेरा प्री हो जाएगा, कैपिटल इन नेचर, 9 months पोस्ट हो जाएगा, रेवेन्यू इन नेचर, और फिर उसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, होल्डिंग एंड माइनॉरिटीज, रिमेंबर। सेम वे हमने 9 months का भी किया। प्री का जो शेयर है होल्डिंग कंपनी का, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा। पोस्ट का जो शेयर है होल्डिंग कंपनी का, दैट यू विल ऐड इट टू द पीएनएल ऑफ होल्डिंग कंपनी। रिमेंबर, आपको दोनों का बैलेंस शीट दिया गया है, आपको दोनों के बैलेंस शीट को मर्ज करना है। दिस इज वेयर दिस एनालिसिस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर पीएनएल। balances of S Limited, P&L balance. Let's say this is on 31st March 22. P&L balance was 10 CR. P&L balance was 10 CR. General Reserve balance 5 CR. कब? 31st March 22. And they give you extra information. H Limited acquired 70% shares in S Limited on, let's say, 1st October 21. S Limited balances on 1st April 21. PNL it was 2 CR. General Reserve it was 4 CR. S Limited का ओपनिंग PNL 2 करोड़ का था और जनरल रिजर्व 4 करोड़ का था। हाउ डू यू डू द एनालिसिस? सबसे पहले आप क्या करोगे? पीएनएल बनाओगे। किसका बनाओगे? एस लिमिटेड का। ओपनिंग बैलेंस कितना था पीएनएल का? 2 करोड़। देखिए दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच? 2 CR। पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 10 CR। सो वी राइट इट ऑन द डेबिट साइड, टू बैलेंस कैरिड डाउन। डोंट जंप टू अ कंक्लूजन, सर 8 करोड़ का करंट ईयर में प्रॉफिट किया, डिफरेंस ऑफ 8 and 2। नो, वेट, सी द जनरल रिजर्व फिगर्स। ओपनिंग 4 करोड़, क्लोजिंग 5 करोड़ है। हाउ डिड दिस 1 crore इंक्रीज? जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4 करोड़ का। क्लोजिंग कितना है? 5 करोड़ का। तो 1 करोड़ से बैलेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? बट नेचुरली पीएनएल से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा ना 1 CR। क्या एंट्री रिकॉर्ड किया होगा आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सो वेयर विल इट अपीयर? इन माय पीएनएल टू जनरल रिजर्व। कितना आएगा? 1 CR। क्लोज कीजिए, नो अदर ट्रांजैक्शंस। क्लोज करोगे तो टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा 9 CR। इसको हम क्या कहते हैं? बाय CYNP, करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने जो 1 करोड़ ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व को, वो कहां से किया आपने? ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2 crores में से किया या करंट ईयर के प्रॉफिट 9 crores में से किया? लिसन केयरफुली, अगर आपका ओपनिंग पीएनएल बैलेंस इज मोर देन द ट्रांसफर, यहां पे कितना है? 2 करोड़, ट्रांसफर कितना किया? 1 करोड़, इट्स मोर देन द ट्रांसफर। नाउ ऑलवेज टेक द ट्रांसफर फ्रॉम योर ओपनिंग बैलेंस।
कहां से लोगे? ओपनिंग बैलेंस में से लोगे। तो आपका जो क्लोजिंग 10 करोड़ है, अब उसमें ओपनिंग 2 करोड़ इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसमें से 1 करोड़ तो आपने ट्रांसफर कर दिया ना टू जनरल रिजर्व। नाउ हाउ यू डू द एनालिसिस ओवर हियर? Analysis of P&L. Closing balance was how much? 10 CR. इसके दो पार्ट्स होंगे, ओपनिंग, करंट ईयर। बट ओपनिंग में 2 CR नहीं लिखोगे, क्योंकि 2 CR में से जनरल रिजर्व को तो 1 CR चला गया ना, so opening will be only 1 CR, तो current year has to be 9 CR by default ना। Opening is always pre in nature, कैपिटल इन नेचर। तो इसको आप डिवाइड कीजिए दो लोगों में, होल्डिंग, माइनॉरिटी। और होल्डिंग का स्टेक कितना है? 70% है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 lakhs। ये कितना होगा? 30 lakhs। और ये कहां पे जाएगा? आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। अब करंट ईयर का 9 करोड़ है, बट शेयर्स कब खरीदा हमने? 1 अक्टूबर 21 को खरीदा। मतलब फर्स्ट डे पे शेयर्स नहीं खरीदा, लास्ट डे पे भी शेयर्स नहीं खरीदा, शेयर्स करंट ईयर में खरीदा, 6 महीनों के बाद खरीदा। तो अप्रैल से सितंबर, फर्स्ट 6 मंथ्स में जो सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाया, दैट इज कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन, बिफोर होल्डिंग कंपनी अक्वायर्ड द कंट्रोल, रिमेंबर। और अक्टूबर टू मार्च जो प्रॉफिट कमाया, दैट इज पोस्ट एक्विजिशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इस 9 CR को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 6 months is pre and 6 months will be post. And in the absence of any information, equally divide करो 6 months, the ratio is 1:1। तो ये कितना होगा? 4.5 CR। ये भी होगा 4.5 CR ना। अब ये 4.5 CR को फर्दर सब डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। और ये 4.5 को भी आप डिवाइड करोगे होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। 4.5 का 70% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इनको मिलेगा 3.15 CR और इनको मिलेगा 1.35 CR। सेम वे दिस इज 3.15 CR, this is 1.35 CR। होल्डिंग कंपनी का शेयर इन द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, कैपिटल इन नेचर, ये कहां पे जाएगा? COC। एंड पोस्ट एक्विजिशन में जो प्रॉफिट है वो उनका रेवेन्यू इन नेचर है, दिस यू विल ऐड टू P&L ऑफ H लिमिटेड। किसके P&L में ऐड कर देंगे? H लिमिटेड के P&L में। दिस इज हाउ यू एनालाइज द P&L ऑफ सब्सिडरी कंपनी। बट यहां पे सिर्फ P&L का एनालिसिस नहीं करना है, जनरल रिजर्व का भी करना है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ योर रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस बिलोंग्स टू द स्टेक होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो होल्डिंग कंपनी का भी उसमें हिस्सा होगा ना। सो नाउ एनालाइज analysis of general reserve of S limited. Closing balance is 5 crores। कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट में से देखिए 5 करोड़ दिया है। ओपनिंग कितना था? 4 करोड़। 1 करोड़ ट्रांसफर किया, बट ट्रांसफर कहां से किया वो देखिए, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। और ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L इज ऑलवेज प्री इन नेचर ना। तो 2 करोड़ प्री का था, उसमें से 1 करोड़ जनरल रिजर्व को दे दिया, तो जनरल रिजर्व पहले का 4 करोड़ ओपनिंग प्री होगा, प्लस जो 1 करोड़ ट्रांसफर किया फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L विच इज प्री इन नेचर, तो वो पूरा 5 करोड़ जनरल रिजर्व का क्या हो जाएगा? प्री इन नेचर हो जाएगा। दिस विल बी प्योरली प्री।
इसके आपको दो पार्ट्स करने हैं, होल्डिंग, माइनॉरिटी। 70-30, 70% will give me 3.5 CR, दिस इज 1.5 CR, और ये कहां पे जाएगा, COC, ये कहां पे जाएगा, MI वर्किंग नोट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट होगा ना, उसमें चला जाएगा। रिमेंबर, दिस इज हाउ यू डू द एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। रिमेंबर, सो पीएनएल का एनालिसिस हमने देखा, जनरल रिजर्व का भी हमने एनालिसिस देख लिया। रिमेंबर, नाउ कम्स द डिविडेंड पार्ट, very 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 important. Remember, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एस लिमिटेड, अब उसका एनालिसिस कैसे करोगे, यू हैव टू रीड डिविडेंड कौन सी ईयर का मिला है आपको, and holding company has acquired the shares in the current year, but they will always receive dividend for the last year, which means holding company के point of view से सोचोगे तो ये pre acquisition profits में से मिला। So dividend received from S Limited, holding company acquired shares in CY, CY stands for current year, होल्डिंग ने शेयर्स कब खरीदा, करंट ईयर में खरीदा। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम subsidiary company for previous year, सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड मिला, लेकिन कौन से साल का डिविडेंड मिला, पिछले साल का डिविडेंड मिला है। उस ईयर आपके पास शेयर्स नहीं थे, आपके पास मींस होल्डिंग कंपनी के पास लास्ट ईयर इक्विटी शेयर्स नहीं था। अगर लास्ट ईयर इक्विटी शेयर्स नहीं था तो डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी कंपनी ने डिविडेंड दिया होल्डिंग कंपनी को, बिकॉज ऑन द डेट व्हेन द डिविडेंड इज पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी वाज हैविंग द शेयर्स। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर्स को, तो वो नहीं पूछते हैं शेयर होल्डर्स को कि आपने ये शेयर्स कब खरीदा था। आप अगर 2 दिन पहले भी खरीदते हो तो भी कंपनी आपको डिविडेंड दे देती, बिकॉज जिस दिन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है उस दिन आपके पास शेयर्स है ना। सो थिंक एज अ चार्टर्ड of the holding company, you have received dividend from the subsidiary company for a year in which you were not holding the shares. पिछले साल का डिविडेंड मिला, लेकिन पिछले साल आपके पास वो शेयर्स नहीं थे, फिर भी आपको डिविडेंड मिला। यस, इनकम है, बट दिस इज नॉट रेवेन्यू इन नेचर, इट्स अ कैपिटल इनकम, वी कॉल इट एज। तो व्हाट शुड हैव बीन योर जॉब, आपको क्या करना चाहिए था जो डिविडेंड मिला वो, विच इज कैपिटल इन नेचर, यू शुड हैव टेकन इट टू योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इट शुड हैव बीन कैपिटलाइज्ड इट। बट अकाउंटेंट हमेशा गलती करता है, he takes it to the P&L of holding company. Dividend received credited to profit and loss account of H Limited. होल्डिंग के अकाउंटेंट ने गलती की, जो भी डिविडेंड मिला पिछले साल का उसने कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, इन द P&L ऑफ H लिमिटेड। गलत है ये, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग इफेक्ट।
बट वी आर चार्टर्ड्स ना, अब इसको रेक्टिफाई करना है. हाउ विल यू रेक्टिफाई दिस? तो इसके दो इफेक्ट्स आएंगे. दो इफेक्ट्स. फर्स्ट, cost of control account on the credit side as by pre-acquisition dividend. कहां पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट. कौन से साइड पे? क्रेडिट साइड पे. क्या लिखोगे? बाय प्री एक्विजिशन डिविडेंड. ये एक इफेक्ट हो गया. सेकेंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम पीएनएल ऑफ एच लिमिटेड. होल्डिंग के पीएनएल से आप माइनस करोगे, यू विल ट्रांसफर इट टू योर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट. सो एक इफेक्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एज बाय प्री एक्विजिशन डिविडेंड. दूसरा इफेक्ट, लेस फ्रॉम द पीएनएल ऑफ होल्डिंग कंपनी. रिमेंबर, so dividend received by the from the subsidiary company by the holding company is always of last year received in the current year. और last year holding company के पास shares नहीं थे. So it's a कैपिटल रिसीट. प्री एक्विजिशन डिविडेंड है. इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया. अकाउंटेंट ने गलती से पीएनएल को क्रेडिट कर दिया. नाउ यू रेक्टिफाई दिस. रिमेंबर, this is what you call it as rectification. Next, stock reserve, or you call it as unrealized profit. और ये स्टॉक रिजर्व में there are two possibilities. Remember, one is called as downstream and one is called as upstream. One is downstream, one is upstream. डाउनस्ट्रीम किसको कहा जाता है? होल्डिंग कंपनी sold goods to subsidiary company and they are included in closing stock of subsidiary company. होल्डिंग ने गुड्स बेचा था. किसको? सब्सिडरी कंपनी को बेचा था. एंड दोज गुड्स आर स्टिल लाइंग अनसोल्ड. दोज गुड्स आर स्टिल इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड, दैट्स द सब्सिडरी कंपनी. तो सबसे पहले क्या करना है आपको? स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करना है. एंड दैट्स वेरी सिंपल. Costing 50,000 sold for rupees 60,000, the goods are lying unsold. 50 का गुड 60 में बेचा तो कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड था? 10,000. So what is the stock reserve? 10,000. And the goods were still lying unsold. Half the goods were lying unsold. Same example. Costing 50,000 sold for 60,000. Half the goods are lying unsold. तो closing stock में 30 included है. तो what is the stock reserve included? 5,000. Unrealized profit we call it as. इसके दो इफेक्ट्स. किसने बेचा था गुड्स? होल्डिंग कंपनी had sold the goods to a subsidiary company. तो किसने प्रॉफिट कमाया होगा? होल्डिंग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होगा. तो वो प्रॉफिट किसके पीएनएल में इंक्लूडेड होगा? होल्डिंग या सब्सिडरी. बट नेचुरल, होल्डिंग ने गुड्स बेचा तो होल्डिंग के पीएनएल में इंक्लूडेड होगा ना. तो जो भी स्टॉक रिजर्व का अमाउंट है, दैट इज लेस फ्रॉम पीएनएल ऑफ होल्डिंग कंपनी.
one effect. And second, less from stock of S Limited. क्योंकि एस के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, तो एस के स्टॉक में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक रिजर्व. रिमेंबर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम मींस होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचा था एंड द गुड्स आर स्टिल लाइंग अनसोल्ड विद द सब्सिडरी कंपनी विच हैड परचेज्ड द गुड्स. रिमेंबर, तो अपस्ट्रीम क्या होगा, अदर वे अराउंड होगा, नीचे से ऊपर. सब्सिडरी हैड सोल्ड द गुड्स टू होल्डिंग कंपनी एंड दे आर स्टिल इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ होल्डिंग कंपनी. रिमेंबर, subsidiary company sold goods to holding company and they are included in closing stock of holding company. तो पहले क्या करोगे, स्टॉक रिजर्व का अमाउंट फाइंड आउट कीजिए. अब इसका दो इफेक्ट्स होंगे. किसने बेचा, सब्सिडरी कंपनी ने, मतलब किसने प्रॉफिट कमाया, सब्सिडरी कंपनी ने. तो किसके पीएनएल में इंक्लूडेड होगा, सब्सिडरी कंपनी के पीएनएल में इंक्लूडेड होगा. सो लेस फ्रॉम पोस्ट प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड. पोस्ट प्रॉफिट, रिमेंबर सब्सिडरी कंपनी का जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री एंड पोस्ट. Profits earned till the date of control is pre-acquisition. Profits earned after the date of control is post-acquisition. तो ये किस में से माइनस करोगे, पोस्ट प्रॉफिट. टोटल पीएनएल में से माइनस नहीं करने का. रिमेंबर, एंड सेकेंड इज लेस फ्रॉम स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड. होल्डिंग कंपनी के स्टॉक में इंक्लूडेड है ना, तो वहां से आप क्या करोगे, माइनस करोगे. रिमेंबर, सो दिस इज रिलेटिंग टू योर स्टॉक रिजर्व अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. नेक्स्ट इज revaluation of assets. Whenever holding company acquires a stake, control in the subsidiary company, on the date of acquisition, on the date of acquiring the control, the assets of subsidiary companies are revalued. Remember, so there will always be a revaluation of assets of subsidiary. होल्डिंग के assets का revaluation नहीं किया जाता है, सब्सिडरी के असेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाएगा. एंड द रीवैल्यूएशन कैन बी एन एप्रिसिएशन और इट कैन बी अ डेप्रिसिएशन, बट सिर्फ सब्सिडरी का होगा. कौन सी डेट पे होगा, ऑन द डेट दे अक्वायर्ड द कंट्रोल स्टेक, उस दिन रीवैल्यूएशन होता है. रीवैल्यूएशन ऑफ assets of subsidiary company on the date of acquiring control. जिस दिन कंट्रोल acquire किया उस दिन उसका revaluation होगा. Whenever there is a revaluation, there will be a revaluation profit or loss होगा ना. There will be a revaluation profit or loss. Now this profit or loss belongs to two parties. होल्डिंग कंपनी को इसका हिस्सा मिलेगा एंड माइनॉरिटीज को भी उसका हिस्सा देने का. होल्डिंग
माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का जो भी स्टेक होगा, वेयर विल इट गो? इट विल गो टू द वर्किंग नोट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ना। हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट वहां पे लिखोगे। अगर प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व पॉजिटिव, और अगर लॉस आया तो रीवैल्यूएशन लॉस नेगेटिव। सिंपल। प्लस माइनस करते वक्त वो एडजस्ट हो जाएगा। What is important is होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी तो हो सकता है ना, जैसे माइनॉरिटीज का होता है। अगर प्रॉफिट है, रिमेंबर दिस इज ऑलवेज कैपिटल, इट इज ऑलवेज प्री एक्विजिशन। तो प्रॉफिट कहां पे जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, विच साइड? क्रेडिट साइड। और अगर लॉस है तो वो भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, बट ऑन विच साइड? ऑन द डेबिट साइड, रिमेंबर। So in case of holding company, the share of holding company in the revaluation profit or loss, revaluation will be done of assets of subsidiary company. It will be revalued on the date the control is acquired. So it's always capital in nature, pre-acquisition, it's never revenue, remember. Find out कीजिए revaluation profit है या loss है. सब minorities का share will go to their working, but होल्डिंग कंपनी का शेयर अगर प्रॉफिट है तो सीओसी क्रेडिट साइड एज बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो सीओसी ऑन द डेबिट साइड एज टू रीवैल्यूएशन लॉस। एंड वंस यू हैव डन दिस, नेक्स्ट विल बी द डेप्रीसिएशन ऑन द रिवाइज्ड वैल्यू। आप वैल्यू चेंज करोगे तो डेप्रीसिएशन भी चेंज होगा ना। That revised depreciation का effect has to be adjusted in the P&L of S Limited. Remember that asset is of S Limited. So जो भी depreciation का effect आएगा, it has to be given in the P&L of subsidiary company, not in the P&L of holding company. Remember. So that is relating to your revaluation of assets. Remember. Bonus issue. Who will give bonus? Subsidiary will give bonus. Holding bonus नहीं देगा. Subsidiary will give bonus. To whom? To their shareholders. Shareholders को मतलब holding company को भी मिलेगा, minorities को भी मिलेगा. Remember. So whenever bonus is there, bonus is always capitalization of reserves. Bonus shares are given free of cost to the shareholders. Shareholders से पैसा नहीं लिया जाता है. Reserves कम हो जाएगा. Equity share capital will increase. Remember. So capitalization of reserves के दो effects. Reduction in reserves and increase in share equity share capital of the subsidiary company. Remember, because of the bonus there is no change in the percentage stake, because bonus दोनों पार्टीज को साइमल्टेनियसली दिया जाएगा. होल्डिंग कंपनी को भी दिया जाता है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी दिया जाता है, प्रपोर्शनेटली दिया जाता है. बिकॉज ऑफ बोनस द स्टेक डजंट चेंज. Percentage stake of both holding and minority always remains the same. Remember. So you have to find out the bonus part, information given in the question. Remember. And what do you do at the end? You close your working notes. Cost of control account. Balancing figure is either goodwill or
capital reserve. Goodwill, balance sheet, intangible. Capital reserve, reserves and surplus. Minority interest. Balance. Where will you record it in your balance sheet? It comes after reserves and surplus. Balance sheet में shareholders funds में first is equity share capital and second is reserves and surplus. फिर second heading will be shown as minority interest. Doesn't come under shareholders funds, remember. Second heading हो जाएगा minority interest. Whatever balance you had will be appearing over there, remember. So consolidated financial statement is prepared by the holding company. Subsidiary nahi banata hai. If there are any set of transactions between the two companies, debtors, creditors, bills payable, bills receivable, वो adjust कर दोगे. It has to be set off. जैसे हम P&L में set off करते common transactions. Similarly, balance sheet में if there are any common transaction, which may be on account of three reasons. Debtors, creditors, bills receivable, bills payable and loan given, loan taken. अगर ये common transactions से set off हो जाएगा, consolidated balance sheet में appear नहीं करेगा, remember. And finally, you close your consolidated balance sheet. It should tally. Balance sheet has to be prepared as per Schedule 3 format. It's a company's balance sheet, vertical. Schedule 3 has to be followed, remember. So that's your revision of Consolidated Financial Statement chapter, CFS.